Hello, check. Hello, mic testing. 1, 2, 3, check. Hello, check. Testing. Hello. Yes, good morning, everyone. Welcome back for the most prestigious LCC Cup 2023 Legends Cricket Cup, and which is proudly organized in this most historical cricket ground, UCG. Meanwhile, I request those who are playing inside the ground, kindly request you to clear the ground. ಎಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಆಡುವವರಂತೂ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಶಿಶಿರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಂತಕಥೆಗಳು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ, ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಉಪ್ಪಳ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜೆಪ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮೈದಾನದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ this tournament, which is organized Legends Cup in a remembrance of Cyprian and Dorothy Albuquerque, uncle and auntie of Rohan Montero, the player of Young Friends Sirva. So in their sweet memory, we are organizing this cricket tournament.
Hello, hello, check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, hello, check. Check, check. Hello, check. Hello, check. Hello, mic check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, check. Check, check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, mic check. Check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Check. Hello. Hello, check. Check. Hello, check. Hello, mic check. Check. Hello, check. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಳ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮೈದಾನದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2023 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಶೌಕತ್ ಆಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ದೂರದಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು.
Hello, hello.
I request the captain of Uppala Legends, Muzammil, to please report. I request the captain of Uppala Legends, Muzammil, please report here. And Reliance Cricketers captain. The tossing ceremony is going on between, captain of Uppala Legends. All the best, Muzammil. And all the best, Bashir of Reliance Cricketers. Best of luck. So Uppala Legends captain won the toss, Muzammil, and he rightly elected to ball post. Hello, check. Hello, check. Mic testing. Mic testing. 1, 2, 3, check.
So all set now for the inaugural match. Hello, check. Mic check. Hello, testing. Testing. Yes, thank you. So all set now for the inaugural match. After that inaugural ceremony and this Legends Cup, which is played in remembrance of late Cyprian and Dorothy Albuquerque, and of course under the sweet memory of Cyprian and Dorothy Albuquerque, we are going to start this LCC Cup 2023, and of course the main sponsor for this cricket tournament as well. And we are all set now for the big moment of this cricket tournament, and waiting is all over. And after that hard work of more than 3 months, and we are all just going to start this LCC Cup 2023. And Yusuf is the one will going to start the proceedings. I request extra player of Uppala Legends, please report into the commentary box. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯೂಸುಫ್ ಟು Quresh, one of the legend player and evergreen player, will go into face first ball. Starts with the delivery, loud appeal for caught behind, but looks like more than the confident, just an excitement from wicket keeper behind the stump. Straight away, umpire Roland Pinto sir just walking towards a bowler, just for telling him that don't come to the dangerous zone, the protected area, and very difficult for umpire to judge to give the decision. And Yusuf again back this bowling mark. Right arm over the wicket delivers. This time slashes that one, but light in the gap. Protection is given for that cricketing stroke, then down at deep backward point. So Quresh is off the mark with a single, one without loss of any wicket. Left and right combination. Damodar, the left-hand batter, will go into face his first delivery. He's a good striker of the ball. Loves to play big shots, especially he's a useful cricketer when the power play overs. So that Reliance cricketer asking Damodar to come and bat in this power play over. So Yusuf is one of the most talented and very good bowler in the side of Uppala Legends. Will go into ball round the wicket past umpire Damodar. This time nothing much to do with the delivery. Ball just shaping away, further away from the left-hand batters, and wide call by umpire, and one more run added to total. It's 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Yusuf again. Right arm over the wicket bounce. This time ball just going down the leg side. They're going for the single chance of run out, but not in the end of striker, but in the non-striker's end. Leg by call by umpire. Damodar is not ready to take the single, but his partner Quresh already made his way to the striker's end, so that they managed to complete the single in the form of leg by. 3 on the board without loss of any wicket. Yusuf, right arm over the wicket bounce. Bowler's back drive, nice looking drive, technically very sound in dedication, because Quresh knows that the Yusuf has got an ability of bringing the ball from outside the line of off stump into the wicket. So he almost covered the stump. Then the full face of the bat is drives that one delightfully down to long off for a single. 4 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Yusuf again.
Right arm over the wicket. This time Damodar drives that one nicely down to long on region. Quresh is a good runner between the wicket. Have a look at the running between the wicket. Now it's going to be a third run, but you can look at the Damodar there. If you compare Quresh and Damodar, Damodar, of course, everybody knows that he's not a good runner between the wicket. But Quresh always is the man who still look like he's an 18-year-old. And as far as the running between the wicket is concerned, so quickly completes the first run and completes first run means you are very much in the second run. And Damodar is really need to aware of that. We are running along with the Quresh, so need to have some quick footwork as far as the running between the wicket is concerned. 6 on the board and Muisuf again. Right arm over the wicket. This time went for the drive. He wants a single there. Oh my goodness, it's gone. This time Damodar thought it might be Quresh will going to come for the single, but ball is not away from the wicket keeper. It's not too much away from the wicket keeper. That's why the ball went straight to the hands of wicket keeper. And probably Damodar's not really happy with that dismissal, but it's not a mistake of Quresh, but himself is misjudging the run, and he just pays the penalty for that. It's 6 on the board for the loss of 1 wicket. So first over completed. Good comeback here by Yusuf in this over. Even the bowled one wide deliveries in that over, but still he managed to restrict the runs for just 6. So it's really good to watch some legends players out here in UCG cricket ground of this LCC Cup 2023. Salim is a new batter in, the famously known as with the nickname of Mama, Salim Mama, and he's a very experienced campaigner, and of course one who got experience of playing for Reliance Cricketers Jaipur, and he's played for Adi Maheshwar Cricketers Jaipur. Such a wonderful cricketer, one who dominated, especially not in the 90s, but in the end of 90s and 2000. He's the one who's really performed very well from the bat, from the ball, and even in the field. So Muzammil, the captain of the side, will go into ball. So again, nicely placed down to short mid-off region for a single. Raghuram down at short extra cover, fields the ball. And one more single added to total, 7 on the board. There is some time limits for completing their 6 overs. Caught a wicket keeper, fumbled, and Quresh always is a good judger of the run. And Satish Mudabidri, umpire, has no hesitation to call that by. And well within the reach of the batsman, but Salim is just misjudging and he's asking why that umpire not given wide, but almost 2-3 inches is inside the line, and total misjudgment. Driven that one very nicely in wide of that long on region, but good piece of fielding there. The fielder at deep, long on. Excellent return as well from the fielder in the deep. Kiran out there in the deep, the left arm. Has got a good arm to return the ball again. Salim picked up a single down to backward point region. Ramesh Bhatt, one more very experienced campaigner, good performer, very good leg spinner out there in the backward point region. Fields the ball. And meanwhile batters completed a single. Next match will be played between MPark Warriors versus MSC Mudabidri. So that I request two teams, captain, please submit your playing squads, playing 11 squad, and complete the signatures as soon as possible. This time he lofted Salim right in the gap, one bounce into the fence for 4 runs. This is a huge gap, I want to say. Of course there is a long on, but there is no long off slight a bit of wider, almost between extra cover and long off, so that Salim quickly realizing that there's a huge gap, and he played that one quite beautifully down to long off boundary for 4 runs.
With that bound, the scoreboard jumps into 15 on the board. And it's definitely going to be a very good start for Reliance cricketers. Even they lost 1 wicket, but they got 15 in 2 overs at the rate of exactly 7.5 runs per hour. And especially in the morning condition, it's going to be a good run, I want to say, UCG cricket ground. If you see the history of UCG cricket ground, it's not so easy to run quickly in the morning session. There is no wind at all in the ground. Slowness in the pitch, ball which is not coming to the bat. Considering all these facts, I think Reliance cricketers, they got a good start here with the 15 for the loss of 1 wicket. Sali, one more experienced campaigner, legend player for the side of Uppala Legends, to bowl the 3rd over of the innings of Reliance cricket for the innings of Reliance cricketers Jaipur. And Quresh is there in the middle, quite watchful in his innings. For him, there is a fielder at deep square, like one at mid wicket, almost in at mid wicket, and long on. Long off is the deep cover point. Oh my goodness! This is what Quresh. What are you talking about? The Quresh is too much clever. It's I think I want to see that in a replay. What really happened there? Because a slow, gentle left arm leg spin delivery. Have a look at that one coming into the batter. Quresh wanted to push the ball to the offside region, but have a look at his bat. His bat is in the air. Ball is along the carpet, so no way he is having a contact with that ball, and missed it completely. Then wicketkeeper really completes that formalities of making run. The huge wicket here for Sali as well as for his team. The danger man Quresh departs. The Bunaya is a new batter in. Brother replacing younger brother replacing Helder brother, because Helder brother Quresh departs, so replacing him is his brother Bunaya. One more fantastic performer from the bat. This time almost drags the ball from outside the line of off stump. Straight away we can see that he is putting his hand to his back leg, which is maybe that slight a bit of lack of match practices. It's not so easy for come and perform straight away. This time he wanted to play the reverse sweep. Salim missed it completely from the bat, and scoreboard remains on 16. So far it's a good over from Sali, tidy over, and he's bowled 4th time in this over. This time lovely delivery, again they missed it completely. Fantastic piece of bowling. This is the kind of bowling, I want to take you, the Yogesh of Hanuman cricketers is a similar kind of that bowling, the left arm, bowling a very slow run, and very, very patience which is required for the batter to bowl, which is not coming to the bat. Slow one coming again. This time a tossed up delivery, short pitch one, and Salim Mama taking a full advantage of the delivery, drives that one down to extra cover for a couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 18 on the board without for the loss of 2 wicket impact. Now, yes, 18 on the board. The overcast condition, cloudy weather. There's no wind. There is no wind. There is no bright sun out here. The good condition for the legends. Meanwhile, they're enjoying the condition of the winter season. And here is again left arm balls, drives that one. Salim down to long on region. Protection is there in the deep long on. So batter have to settle for the single. Sali completes over, successful over. Big wicket in that over of Quresh. 3 gone after completion of over number 3. It's 19 for the loss of 2 wicket. And just have a look at the cricket ground. And of course, it's not came from the normal camera, but the drone camera which is covering this beautiful historical UCG cricket ground. And it's absolutely, have a look at the cricket ground here. This is the one cricket ground we are saying that it is a lots of underarm cricket. And it's always going to be a privilege and honor for each and every players to come and perform in this UCG cricket ground. And of course, especially the legends players, they are performed very well. They will go into remember and memorize their olden days cricket.
by playing cricket again after a long time here in LCC Cup 2023. So Ramesh Bhatt, one more, what we're talking about, one more legend bowler for the side of Uppala Legends, Umesh Bhatt. I saw him performing, especially in the Masters Trophy, which is played earlier. Yes, in our card, the Masters Cup, I am witnessing as a commentator. He is the one performed very well from his gentle leg spin bowling. Ramesh Bhatt is a useful bowler for the side of Uppala Legends. Will go into ball. And the fourth over of the innings of Reliance cricketers. It's 19 for the loss of 2 wickets. From the far end, Sri Rama Bhajana Mandiran. Right arm over the wicket. Salim drives that one down to a short mid-wicket region. Raghuram Dutt, the fielder out there in the short mid-wicket, fields the ball. And ample time for Salim to complete the single. 20 on the board for the loss of 2 wickets. Deep long off, deep extra cover, long on, mid-wicket, deep square leg. The short fire leg, short mid-wicket, short extra cover, backward point, the fielders inside the ring. Again, Ramesh Bhatt. Right arm over the wicket bounce. This time, lovely delivery indeed. Even that ball pitched outside the line of leg stump because of extra turn in that ball. And Bunaya completely missed out delivery. And there is no chance at all for any run. Little bit opportunities created for a big hit for Bunaya. But he missed it completely. Again, what a delivery. This is what I'm talking about. Magnificently bowled. This is a typical Ramesh Bhatt for you. That's what I'm talking about. A lot of patience which is required when you're playing that slow leg spin bowlers. Absolutely perfect one. Bunaya early into the strokes. Ball which is not coming to his bat. Have a look at that one. Slower one. And Bunaya went for the big shot. Misses the line completely. And the ball hits a stump. And fantastic coverage here from Mangalore Media of this LCC Cup 2023. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ MSC Mudabidri. The next match, please get ready. Sheru. One more very good striker of the ball, Sheru. Just like what the name he has got, Sheru is a kind of striker of the ball. And he always justifying the name why he has got Sheru. And wait and see. And the Sheru will go into face Ramesh Bhatt. This time straight away, the perfect technique to play the leg spin ball. Sweeping the ball after covering the stump. And closing the face of the bat very well to get that one down to deep square leg for a single. 21. Ramesh Bhatt so far bowled 4 deliveries and picked 1 wicket by conceding 2 runs. Scoreboard is 21 on the board. Again from the far end, Ramesh Bhatt. This time, top edge. Opportunity for the fielder, and he's just a spectator. This time, don't think it's going to be well controlled cricketing stroke there for Salim, but very lucky that ball has got a sweetest part of the bat. Even the top edge, without the help of the wind, that ball went into the deep mid-wicket boundary for a 6. Have a look at that one, top edge. Absolutely top edge, but ball is traveling there, traveling and going over that deep long on deep mid-wicket fielder. It's just a spectator. 27 on the board. One more across bat cricketing stroke there from Salim. He loves to play the shot. He played plenty of cricketing stroke in a similar passion in his career, and he retained the strike and good finish for the over. 7 in the last 2 deliveries of Ramesh Bhatt. Altogether, plenty of runs came from that over. It's 28 on the board. Have a look at that one in the replay again. It's not controlled, but the way that the bat speed of Salim takes that ball into the fence for a 6. 28 on the board. And now
Looks like a bowler Sali will going to continue. Just watching that Sali is the only one bowler. He is very much controlled. It's first and picked up a wicket for just 4 runs. So Sali, 28, 7 runs per over for Reliance Cricketers Jaipur, defending champion. The left arm Sali. Bounce, lofted. There is a fielder at long off. But just a single there for Salim. There is an orthodox long off for that cricketing stroke. The batter had to settle for a single. 29 on the board. That brings Sheru into strike now. Sheru. Reliance Cricketers Jaipur dominated during the middle of the 90s. They started their journey in underarm cricket, but they dominated till 2000, almost 2010. 10 to 12, that 25 years they are dominated underarm cricket, lifting some prestigious titles. This time driven, Sheru down to deep, long on, and boundary comes up here. There is a long on, but it's a little bit wideish. Nice placement, just like I mentioned. Sheru is a kind of batter who always justifies his name. And have a look at that stroke there, coming into the batter, and almost drags the ball outside the line of off stump. Hit that one right in the gap. And there is a long off, but just a spectator. This time, improvisation, and that will going to be a huge one. And that was the second sixer of the tournament. That gone many miles. The improvising cricketing stroke, which is not meant for the present cricketer, but even our legends players has got a, yes, the technique of hitting the ball. Have a look at the perfect technique, isn't it? Sheru knows that the ball is coming into him. If he go a little bit shuffle across the line of delivery, he can make that ball a little bit short. Just using the deftness of crease very well. Have a look at that one. And using the crease very well. Going towards off stump and getting some room to hit the ball down to deep square leg for a 6. 39 on the board for Reliance Cricketers Jaipur. Again, Sali bowls. Looking for the improvisation, but not quite able to get the placement right, or just a single here. With that single, Skoban moves on to 40 for the loss of 3 wicket. Might be, I think, is Yusuf Musodi, maybe the right bowler to bowl the second over, as far as experience is concerned. Coming down the track, will it going to be opportunity or not? No, yes, it is opportunity for the long off fielder to take the catch. And that's the end of over number 5. One more expensive over which is comes to an end. Reliance Cricketers are going nicely here. 40 for the loss of 3 wicket. They're going exactly 8 runs per over. So Raghuram will go into ball the last over of the innings of Reliance Cricketers Jaipur. And wait and see how he will go into restrict the runs. Raghuram. First ball. Wow, what a delivery. That was absolutely perfect one. Sharp incoming delivery opportunity run out for the direct hit, but ball missed it. Vice call by umpire. The ball is really coming into the batter. Very, very interesting bowling action there from Raghuram. And the last moment ball is taking a turn. And here is now Bashir, captain of the side, using his feet quite nicely. One more fantastic all-rounder. And Bashir, if you take him, if you take some players in Reliance Cricketers Jaipur, he's the one is responsible for the success of Reliance Cricketers, not only in the bowling department, but in a lower in the order. He played some memorable innings for his team. This time top edge, Yusuf is given up. Not Yusuf, the long off fielder.
from deep long off region is run to front to take the catch, but unable to complete the catch. He's just given up, and after one bounce collected, have a look at that one replay. He's almost charging to take the catch, quickly realizing that very difficult to take the catch, and he's just given up, and one run taken. 43 on the board. Raghuram. Right arm over the wicket bounce. This time, have a look at the delivery. Absolutely perfect one this time. All along the carpet. Bashir coming down the track. And no alternative here for the batters because they're dealing with the last over. They need to look for some big shot. And coming back, coming down the track, missing the line completely. The wicketkeeper not missing the opportunity here. 43. One more legend player, Anil KV. So, but not much delivery left here for Anil KV. He's a kind of batter who loves to play in the top of the order. But wait and see how we'll going to perform down in the order. The middle order batsman, Anil KV will going to face. A typical Anil KV loves to save the ball. And he got a success as well. This is right touch strategy from Anil, saying that yes, the perfect batter to tackle with the final delivery is Sheru. So he did a right job to pick the single. Sheru will going to take the strike. Raghu. Ball's coming down the track, using his feet. Oh my goodness, wait for the umpire signal. Well, the ball is hitting the wall directly or on bounce. It's in the off volley. Found the signal by umpire. So what a perfect finish here for the Reliance Cricketers Jaipur innings from the bat of Sheru. Coming down the track, using his feet, magnificently driven, straight over that of the bowler, as straight as an arrow. And ball just landing in front of that wall and hitting the wall, one bounce. And it's 48, which is the total score of Reliance Cricketers Jaipur. And they set a target of 49 to win the match for team Uppala Legends. And wait and see how Legends Uppala will going to get this total 49. I don't think it's going to be a small total in the USG cricket in the morning condition. But I think even Uppala Legends also got some good players in their side. We cannot underestimate the strength of Uppala Legends. They got the captain of the side. Yes, we are talking about talking about some players of Uppala Legends, Muzammil and Sali Yusuf, and some players are their capability of hitting some big shots, like batter like Sali and Kiran. They can be the very effective. And wait and see how well Uppala Legends will go into reply for the total score of Reliance Cricketers Jaipur. The defending champion starts well. A lot of legends are witnessing this cricket tournament. We are just noticing their presence for this LCC Cup. A warm welcome for Mr. Prashant Bulla of UFC Cricketers, as well as Prakash of UFC Cricketers. They are enjoying the game of cricket, and we are yes, welcoming him on behalf of LCC Cup 2023. So we'll take a short break here, and after a short break, before the innings of Uppala Legends will go into comments at the time to change in commentary box. It's over to Gopi for the explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. Hello. Hello.
धन्यवाद सतीश। सो वेलकम बैक सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो धन्यवाद सतीश। तो एक बार फिर से मैं दर्शकों का गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एलसीसी कप 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ द्वितीयार्ध प्रारंभ होता हुआ। रिलायंस ने 48 रन बनाए थे और उपड़ा लेजेंड्स को इस वक्त बनाने 49 रन निर्धारित 6 ओवर में, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई चेतन पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की और गेंद निकलती हुई इस बीच, और गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और चेतन ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए फाइन लेग की दिशा में, और गेंद सीधे डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्पिन गेंद थी, देखिए किस तरीके से गेंद आई थी, लेग कटर गेंद थी, और इस लेग कटर गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप कर दिया इंप्रोवाइजेशन करते हुए। गेंद फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ यहां पर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 रन बिना किसी नुकसान के, और फिर से एक बार चेतन की गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेला गली की दिशा में किरण ने, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। किरण और मुजम्मिल आरंभिक बल्लेबाज, ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो इस बीच रिलायंस क्रिकेटर्स के गेंदबाज चेतन गेंदबाजी करेंगे. दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुजम्मिल इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंचे. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला हो सकता है, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. विकेट यहां पर गिर चुका है. तो पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए यहां पर दौड़ पड़े थे मुजम्मिल, और इससे पहले कि वो स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट झटका दिए. तो दुर्भाग्यवशात मुजम्मिल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और 6 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है उपला लेजेंड्स. और जहां तक सवाल है अगले मैच का, एम्पार्क वॉरियर्स और एमएससी मूडबिद्रे के बीच में अगला मैच खेला जाएगा. तो इसलिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन न दर्ज करने के लिए. तो पहला विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में हारून इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और पहला विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर उपड़ा लेजेंड्स को, अगर उन्हें 49 रनों के लंबे से लक्ष्य की ओर अगर बढ़ना है. और इस बीच चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, और इस बीच चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अरुण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस बीच चेतन की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और चेतन कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग कटर गेंद लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और फिर से एक बार चेतन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड यहां पर होते हुए, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑफ क्षेत्र पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन न प्राप्त करने का. तो एक बेहतर ओवर चेतन का समाप्त हो चुका. पहले ओवर के समाप्ति के बाद इस वक्त
उपला लेजेंड्स 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. चेसिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 49 in 6 overs set by Reliance Jippo. Uppala Legends made a mixed start. After first over they managed to score 7 runs on the board for losing 1 wicket. And let's straight away coming back to the equation. 49 minus 7, that means 42 runs more now they have to score for victory in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 8.40 runs per over. और बशीर इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से यानी उस छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अरुण. तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई. और जहाँ तक बशीर का सवाल है, रिलायंस क्रिकेटर्स एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में वो जाने जाते हैं और अपने गतकाल के वैभव को यहाँ पर अनावरण करने के लिए अपने क्रिकेटिंग डेज में वो एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे. रिलायंस क्रिकेटर्स की ओर से कई मैचेस को उन्होंने जिताया है रिलायंस जप्पू के लिए. और यहाँ पर देखना ये है कि अपने पिछले करिश्मे को वो यहाँ पर इस LCC लेजेंड्स क्रिकेट कप के दौरान दोहरा पाते हैं या नहीं. तो इस बीच दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार अंदर की ओर आते हुए चिप किया, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है. अरुण ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं. और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की. देखिए किस तरीके से हुआ है. वो लुक एट दिस इन द रिप्ले. गेंद को उछाला था और लॉन्ग ऑन पर फील्डर, हालांकि उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी 3-4 कदम, लेकिन आगे की ओर आते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और अरुण की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. दूसरा विकेट खोने के बाद उपला लेजेंड्स इस वक्त कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आते हुए 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट. और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, लेजेंड क्रिकेट कप 2023 ये श्रृंखला सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद शुरू हुई कई घटानुघटी भूतपूर्व खिलाड़ियों के उपस्थिति में. और खासकर जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो हम एक बार फिर से शुक्रगुजार होंगे, शुक्रगुजार करना, अभिवादन करना चाहेंगे 3 त्रिमूर्तियों का, श्रीमान शौकत, श्रीमान रोहन और श्रीमान विजय, जिन्होंने इस श्रृंखला का बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आयोजन किया है. निस्संदेह दर्शकों को भूतकाल के खिलाड़ियों का खेल का पहलू यहाँ पर देखने का मौका जो कि उन्होंने प्रदान किया है. तो इसलिए एक बार फिर से हम उनका अभिवादन करते हैं उन तीनों का. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो प्रसाद का आगमन यहाँ पर हो चुका है. प्रसाद अपना खाता यहाँ पर खोल चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है इस वक्त 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और बशीर एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट. टॉप एज पर गेंद टकराई, कोई फील्डर वहां पर नहीं. स्क्वायर लेग विकेट कीपर दौड़े इस वक्त स्क्वायर लेग पर बनैया जब तक वो गेंद को फील्ड करे. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बशीर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद तक पहुंचना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर. अगली गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं. गली पर संतोष फील्डर मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर. दाहिने हाथ अराउंड द विकेट, ये गेंद इस बीच गेंद को स्वीप कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. एक बार फिर से संतोष गेंद तक पहुंचते हुए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. तो एक बेहतर ओवर अगर रिलायंस जप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 4 रन बने और 2 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा उपला लेजेंड्स अपनी सही राह को तराशता हुआ, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक. तो 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ MSC ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎನ್ಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ 6 ಜನರು ಮಾತ್ರ 6 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
तो इस बीच संतोष और जहां तक रिलायंस जप्पू का सवाल है, रिलायंस और मंगला देवी दोनों टीमों के खिलाड़ी साथ मिलकर रिलायंस जप्पू के नाम पर यहां पर खेल रहे हैं और संतोष जो कि एक वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर जाने जाते थे मंगला देवी क्रिकेटर की ओर से, वो अपनी गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं और पहली गेंद पर एक रन बना, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह जहां तक उपड़ा लेजेंड्स का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की उन्हें सख्त जरूरत और संतोष दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार गेंद को उछाला, गेंद हवा में लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर काफी पीछे, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। काफी तेजी के साथ पहला रन पूर्ण किया और दूसरे रन के लिए काफी तेजी के साथ बढ़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर प्राप्त करने में सफल, पूर्ण करने में सफल। अगली गेंद ऑफ कटर गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। लॉफ्टेड दिस टाइम डाउन टू लॉन्ग ऑफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। मैच नंबर 1 एलसीसी कप 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और संतोष ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रक्षण प्रोटेक्शन जो कि मौजूद है, एक मात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर संतोष, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर इनटू द गैप एज वेल, सलीम गेंद तक पहुंचते हुए काफी लंबा दौड़ उन्हें लगाना पड़ रहा है और जब तक वाइड लंगन और डीप मिड विकेट के दरमियान गेंद को फील्ड करे, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद 2 रन बल्लेबाज इस वक्त दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। यह गेंद इस बीच बेहतर गेंद थी इस वक्त और बेहतर गेंद के साथ डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति यहां पर कर चुके हैं। 3 ओवर के बाद इस ओवर में 8 रन बने, बेहतर ओवर रहा अगर उपड़ा लेजेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। 3 ओवर के बाद 19 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 49 in 6 overs and 30 runs they have to score for victory in remaining 3 overs. That means 18 balls remaining, 30 runs more now they have to score for victory and the required run rate is now gone up to exactly 10 runs per over. तो निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त कम से कम 1 या 2 चौके या छक्कों की सख्त जरूरत है यहाँ पर उपला लेजेंड्स के बल्लेबाजों को कमबैक वापसी करने के लिए और इस वक्त बातचीत चलती हुई है और बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है उनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज बशीर के हाथों में, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। सुबह का वक्त 10:17 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप धीरे धीरे अपना प्रकोप मैदान पर ढाता हुआ, सूरज हालांकि कुछ हद तक बादलों की आड़ में छिप चुका है, लगभग बदली भरा वातावरण जरूर छा चुका है, लेकिन कुछ हद तक सूरज बादलों की आड़ से निकलकर अपने किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप गहरा होता हुआ इस मैदान पर, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो बशीर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, बैकफुट पर जाने के बाद जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द बैट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इनफैक्ट गेंदबाज बशीर दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे, 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 3 रन यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा पूर्ण करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान और 3 रन इस बीच बल्लेबाज बटोरने में सफल। प्रसाद का जहां तक सवाल है, एक बेहतर बल्लेबाज का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार बशीर। इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 16 गेंदें बाकी और 26 रन चाहिए, 26 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 16 डिलीवरीज और संघर्ष अभी भी बरकरार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट बशीर की गेंद, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, सिर्फ 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 80वें 90वें और 2000 दशक
के दिग्गज खिलाड़ियों का समागम इस श्रृंखला के अंतर्गत हो रहा है। एलसीसी कप 2023 के दरमियान इस बार रनआउट का मौका और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। प्रसाद की पारी समाप्त। स्ट्रोक्स को खेला था बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, कोई रेस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा, और आखिरकार आसान सा रनआउट यहां पर करते हुए गेंदबाज बशीर फॉलो थ्रू में, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 23 for 3 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 15 balls, in fact now it's 14 balls left and 25 more runs now they have to score for victory. तो इस बीच नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। साली इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार बशीर की गेंदों का, और बशीर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद स्वीप किया इस बार शॉर्ट फाइन लेग पर, लेकिन फील्डर मौजूद। 1 रन शॉर्ट फाइन लेग पर सलीम जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद, ये गेंद स्टीयर करना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए, फॉलो थ्रू में गेंदबाज बशीर पहुंचे गेंद तक, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed, 26 runs on the board, 3 wickets lost. Still the batsmen of Uppala Legends searching for the right track. 23 they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in 12 deliveries and the required run rate is now gone up to exactly 11.5 runs per over. 23 रनों की जरूरत बचे हुए 12 गेंदों में। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त कम से कम 1 या 2 चौके या छक्के की उन्हें सख्त जरूरत है यहाँ पर इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। और हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए गेंदबाज दामोदर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 74 नंबर की जर्सी पहने हुए रिलायंस जप्पू की ओर से, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण, जो कि आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे। हालांकि उनके सामने 3 विकेटें जरूर गिरे हैं, लेकिन एक छोड़ पर वो क्रीज पर डटे हुए और एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। जहां तक उनका सवाल है तो 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए किरण ने 1 चौके की मदद से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और इस बीच दामोदर फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण के लिए। दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई सुबह के 10:25 यहाँ पर बज चुके हैं, और यहाँ पर इस श्रृंखला का पहला मैच, इस शानदार श्रृंखला का पहला मैच इस वक्त एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दामोदर। दाहिने हाथ बाएं हाथ अराउंड द विकेट कहना पड़ेगा, लेग स्टंप से बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रन पर। रन इस वक्त चाहिए उपला लेजेंड्स को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है, तो अब रन चाहिए। 22 गेंदें बाकी हैं 12। इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ दामोदर, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर, 1 रन का इजाफा, बिल्कुल सही लेंथ और लाइन के साथ इस गेंद को उन्होंने फेंकी थी, और आखिरकार 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका 28 रनों पर। 11 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए। 21 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 बॉल्स। और फिर से एक बार गेंदबाज बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद डीप मिड विकेट पर, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। शाली ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन आखिरकार
प्राप्त करते हुए इस वक्त डीप मिड विकेट फील्डर को सीमा रेखा के अंदर। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। गेंद को इस वक्त उछाला था लेकिन प्लेसमेंट गलत और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ ज्यादा दौड़ लगानी नहीं पड़ी और सीमा रेखा के अंदर बाखूबी इस कैच को लपकते हुए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ Uppala Legends. 21 to get and just 10 balls remaining in their innings. यूसुफ का आगमन होता हुआ इन संदिग्ध हालातों में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार दामोदर की गेंदों का। तो इस बीच दामोदर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त ना डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद जबकि डीप कवर पॉइंट ठीक सीमा रेखा के पास सीमा रेखा से कुछ आगे डीप कवर पॉइंट इस वक्त तैनात और 4 खिलाड़ी कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन वाइडिश मिड ऑफ मिड विकेट और एक खिलाड़ी वाइडिश मिड ऑन पर मौजूद। तो इस बीच दामोदर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फिर से फील्डिंग में जमावट इस वक्त जारी है। हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए खुरेश वो भी इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए बुनैया भी फील्डर्स को इस वक्त सजाते हुए और इस बीच गेंदबाज दामोदर तैयार बाएं हाथ रन विकेट इस बार गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद का पीछा करते हुए फील्डर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी। गेंद को इस वक्त पंच किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट अंतिम क्षण में। देखिए किस तरीके से यहां पर खेला था। ऑफ स्टंप से काफी बाहर विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को स्कूप कर दिया एनफील्ड क्लियर करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त यूसुफ के बल्ले से लगता है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एक्स्ट्रा क्विक डिलीवरी। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। अच्छा कमबैक गेंदबाज कर चुके हैं। चौका प्रदान करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा नॉट क्वाइट मिड विकेट कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 16 runs more now they have to score for victory in remaining 7 deliveries। 7 गेंदे 16 रन चाहिए विजय के लिए और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस पल्स एंड दिस टाइम आई थिंक he's got the distance, it's a huge one और ये छक्का ऐसा कहना पड़ेगा उप्पला लेजेंड्स के उम्मीदों को ये छक्का बरकरार रख चुका है। Absolutely fantastic struck came from the bat of the left-handed batsman. Have a look at this in the replay. हालांकि गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया था काफी ऊंचा उछाला लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि वो गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। देखिए यहां पर किस तरीके से उछाला था फुल टॉस गेंद एंड स्विंग्स इट इन स्टाइल बाय किरण का छक्का इस वक्त स्कोर को ले जा चुका है 39 रनों पर। 6 गेंदे बाकी 10 रन चाहिए विजय के लिए। 10 runs to get from remaining last over. That means in remaining 6 deliveries. The match is now still equally balanced. और अब जिस गेंदबाज को इस अंतिम ओवर में उतरना चाहिए वही गेंदबाज यहां पर उतर रहे हैं। खुरेश इस वक्त अत्यंत अनुभवी गेंदबाज रिलायंस जप्पू की ओर से इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी आमतौर पर करते हैं खुरेश और जहां तक स्ट्राइक का सवाल है इस वक्त यूसुफ सामना करने के लिए तैयार है और किरण दूसरे छोर पर इस वक्त डटे हुए 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए यूसुफ सामना करने के लिए तैयार जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 5। 6 गेंदे 10 रन। तो इस बीच पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार खुरेश दाहिने हाथ ऊपर द विकेट है। ये गेंद ड्राइव किया इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर वहां पर मौजूद थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन बल्लेबाज को रन यहां पर दूसरा नहीं मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज यूसुफ इस वक्त कुछ डांटते हुए किरण को कि उन्होंने दूसरा रन के लिए क्यों कदम आगे नहीं बढ़ाया लेकिन वक्त बीत चुका है और सिर्फ 1 रन के खाते में जुड़ चुका है। 9 रन चाहिए 5 गेंदे बाकी। 5 balls and 9 runs, 8 for tie, 9 for win and 5 balls remaining। तो खुरेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण 17 रनों के
व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस बैटिंग ऑन 17। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का जड़ने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं किरण। और इस बीच कुरेश तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, फील्डर काफी स्क्वायर तैनात, लंगोल पर रोकने में सफल अपने पैर के जरिए 2 रन पूरा कर चुके हैं। तीसरा रन नहीं मिलेगा और सिर्फ 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्टॉप इस वक्त किया था लंगोन के फील्डर बशीर ने, देखिए अंतिम प्रयत्न में गेंद को उन्होंने अपने पैर के जरिए रोका, थोड़ा सा भी ज्यादा कम होता तो गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी। 2 रन अपने टीम को बचाने में सफल। 4 गेंदे 7 रन चाहिए। 7 to get from 4 deliveries। और कुरेश की गेंद, यह गेंद मोड़ा इस वक्त डीप मिड विकेट पर, फिर से 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद को फील्ड किया अनिल केवी जो कि फील्डर थे, और इस बीच 2 रनों का इजाफा। 3 गेंदे 5 रन बन चुके हैं, 3 गेंदे 5 रन और बनाने हैं। तो पहले 3 गेंदों में सही तरीके की बल्लेबाजी अपनाई है, अब बचे हुए 3 गेंदों का सवाल है। देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में 5 रन बल्लेबाज प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। तो इस बीच किरण सामना करने के लिए तैयार, ही इज बैटिंग ऑन 21। What a fantastic match is now progressing here, the inaugural match of LCC 2023 Legend Cricket Cup 2023। और मैच इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 5 of 3 और कुरेश इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, लंगोल पर 4 रनों के लिए। स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड गेंद को इस वक्त खेला था कदमों का इस्तेमाल करते हुए किरण ने, और इस चौके के साथ ही इज मूविंग अप टू 25। Kiran is batting on 25 and the scores are now leveled. 1 required, 2 balls remaining. So 2 ball 1 run, तो डॉट गेंद इस वक्त चाहिए। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। कुरेश गेंदबाजी करते हुए, सारे खिलाड़ियों को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है। कुरेश की गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर, सलीम के हाथों में गेंद, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। तो मैच के दूसरे अंतिम गेंद पर किरण ने अपने टीम को विजय दिलाई। किरण अविजीत रहे 26 रनों पर। ही इज रिमेन्ड अनबीटन on 26 and because of his fantastic batting knock of 26 by Kiran, Legends Uppala Legend defeated the defending champion Reliance Jappu by 6 wickets with just 1 ball to spare। हालांकि मांसपेशियों की खिंचावट, हैमस्ट्रिंग इंजरी इस वक्त महसूस करते हुए यहाँ पर किरण, लेकिन 26 रनों की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। He scored unbeaten 26 runs by Kiran and he put the victory for his team Uppala Legends against Reliance Jappu in the inaugural match of Legend Cricket Cup 2023. So what a fantastic first match has been ended, and now the second match. Empark Warriors will take over MSC Mudabidre in the next match, and I request the remaining player of Empark Warriors ತಂಡದ ವಿಕಾಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ। Empark Warriors ತಂಡದ ವಿಕಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। So first one ended, fantastic finish for Uppala Legends against Reliance Jappu. They registered a thrilling victory, 6 wickets with just 1 ball to spare, and with that victory they bagged the complete points. So next match, Empark Warriors versus MSC Mudabidre. 1 minute time will given. So that's it, and the match number 2 is now going to start. Till then we are taking a short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मैच नंबर 2 की शुरुआत होगी इस लेजेंड क्रिकेट कप 2023 के दरमियान। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So Empire Warriors have won the toss and elected to field first. And now, for the comments, I'd like to invite myself in the commentary box.
So welcome back once again. What a fantastic finish for the first match of this prestigious cricket tournament, Legend Cricket Cup 2023. And Uppala Legends scored a thrilling victory against Reliance Jaipur in the first match of this tournament with just one ball to spare. They reached the target of, huge target of, in fact, of 49 runs in 6 overs. And Reliance Cricket, the defending champions, are now pulled out of the tournament. So the next match, Empark Warriors, the match is now going to begin. Empark Warriors versus MSC Mudabidri. So Empark Warriors, after won the toss, they elected to field first. And the openers for MSC Mudabidri at the crease. And the first ball of the match is now coming up. Right arm over the wicket bowls. This time outside the leg stump, just gone for a mighty heave on the onside, not succeeded. Wide declared by umpire. The ball missing 2 for outside the leg stump and wide declared by umpire. Single run added to the total, and with that single run, the runs account begin for them. Next one outside the off stump. This time wanted to cut that one at the last moment, missing the line completely, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. After being bowled a wide, he bowled a right delivery. Ibrahim the bowler. Meantime, the batsman is now going to face the right-handed batsman is now going to face Ibrahim. Once again, here he comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time, driven that one into the hands of bowler. Can't face the gap cleanly at the last moment. And collected by the bowler himself on his follow-through, and there is no possibility of any run. And now, once again, Ibrahim comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman is now going to face again. This time, swings, and this time, he's got the distance. It's a biggie! So this is an outstanding struck, came from the bat of unidentified batsman, and now he has been identified. Latif the batsman just swings that one. Have a look at this in the replay. This time it just caught that one from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep backward square leg fence for a huge one. Fantastic struck came from the bat of Latif. And now once again Ibrahim bowls. Right arm over the wicket. Oh, good one this time. Just change of pace at the last moment. And bowled a little bit of a slower delivery. The batsman just checked the shot at the last moment, and before it was collected at point area, the batsman have got plenty of time to cross over for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 8 without loss in the over number first in progress. This is the first over in progress in their innings. And now once again Ibrahim bowls. Right arm over the wicket. This time driven that one down to long off by Shashi Kiran, just waiting to the ball to come out his bat at the last moment. Driven that one perfectly down to long off, and gone through for a quick single, and with that single run, the scoreboard moving up to 9 without loss now at the in the over number first in progress. In fact, Ibrahim once again bowls. Right arm over the wicket, driven that one down to long off. Once again he's got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 without loss after first over. So after first over, chasing the first over, after being won the toss and elected to, after being won the toss and put into bat by Empark Warriors, MSC Mudabidri made a pretty good start. In fact, 10 runs they managed to score after completion of first over. And still in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in their innings. So the next match, just talking about the next match, Vijay Lakshmi Cricketers will take over Ocean Pandit House in the next match, and because of that I request both teams players to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Vijay Lakshmi Cricketers ಹಾಗೂ ಓಷಿಯನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So the bowler is now brought into the attack from that side end. Siddiq. The bowler starts the fresh proceedings from that side end, and he'll be bowling to right-handed batsman Latif, who hit a six, a massive six in the first over, is now going to face the first ball of their innings second over. And this time Siddiq comes. Right arm over the wicket. First ball of his fresh over. This time just gone for a mighty heave, this time not succeeded. The ball was missing just outside the off stump at the last moment. And after beating the batsman's bat, it went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 10 without loss at the start of the second over, in fact. And once again, here he bowls. Right arm over the wicket, swings it away this time. I think it's gone over the fence for a boundary.
This time he just hit that one with a gap in between deep back on the square leg and a deep mid wicket. Feeder standing at a deep mid wicket. And he made a desperate attempt to cut off that ball just inside the fence, but won't succeed. The ball went just wide of him and it's crossed over the fence, just hitting to the wall of the boundary line for a boundary. Perfect struck. Again, oh, extra wicket deliver this time. Just wanted to work on the onside at the last moment, but beaten completely by that pace, and the ball went into the hands of wicketkeeper. Good comeback made by the bowler. Again, here he bowls. This time, loser one, but he couldn't get the advantage of that delivery. Just gone for a wide swing, not succeeded. He just wanted to play that one too early. So, minimum 2 bowlers of 50 plus years must have to bowl as far as the rules and regulations of this tournament is concerned in their innings. This time, driven that one down to long on, and has got a single. And now, one more man is now arriving. Today's fantastic cricketer, one of the fantastic cricketer of today. Today's Underarm cricket, Mr. Atif of NM Bangalore. He's at our commentator box. Heartily welcome to you, Mr. Atif. This time, lofted and taken just inside the fence by the fielder at deep extra cover. And this is the first wicket gone. So Shashikiran the man dismissed. Just wanted to hit that one square of the wicket at the last moment. He hit that one, but the ball was went into the hands of the deep extra cover fielder. Actually, not so power in that stroke, and it collected just inside the fence successfully by the fielder, and that is the wicket number 1. Shashikiran departs, and now it's 15 for 1. 2 overs has been completed. So 15 for the loss of 1 wicket. Now 2 overs had been bowled. 2 ओवर के समाप्ति 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर काफ़ी कमेंटेटर बॉक्स पर इस वक्त लगभग एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर छा चुका है. कई घटानुघटी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद, खासकर भूतपूर्व काल के बेहतरीन खिलाड़ी तुलस जो कि दिल्ली से यहाँ पर आए हैं इस मैच में, इस श्रृंखला में हिस्सा लेने के लिए. वो हमारे साथ इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स पर मौजूद है. और उनके साथ एक और लेजेंडरी क्रिकेटर बाबू गोरी यंग बॉयज के, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है. हालांकि दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान इस वक्त दिखाई देते हुए, इसको स्माइल इन देयर फेस. और एक बार फिर से हम उनका ऋतुराग स्वागत करते हैं एलसीसी कप 2023 संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से. और खासकर इकवान जो कि कुदरोली यंग बॉयज के, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एक और बेहतरीन खिलाड़ी अपने जमाने के, उनका भी हम स्वागत करते हैं. और इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है. तो विकेट गिर चुका. पहली गेंद नूरुद्दीन इस वक्त विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए. आउट होने वाले बल्लेबाज लतीफ गेंद को उछालना चाहता, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करने में सफल. टॉप एज पर गेंद टकराई, बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची. आसान सा कैच फॉलो थ्रू में गेंद पास लपकते हुए, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है एमएससी मुडबिद्री का. 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. इनफैक्ट ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಓಷಿಯನ್ ಪಂಡಿತ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Especially for the players of Vijayalakshmi cricketers, please to be reported here to sign in the official chart. So MSC Mudapuri just lost their first wicket in the face of Latif, and the number 4 batsman is now comes out to the middle, Hemachandra. He is now going to face Nuruddin. And Nuruddin bowls right arm over the wicket. Here he bowled, driven that one this time down to long on. Fielder collected the ball inside the fence. In fact, the batsman looking for the second, but won't get it. And in comes a throw from the long on fielder, and the batsmen are finally satisfied with a single, and with a single run, the scoreboard moving up to 16 now for the loss of 1 wicket at the start of the third over. Again, Nuruddin bowling with a perfect length in the line, and now here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time, driven that one, firmly struck, down to wide is long on, collected by the fielder inside the fence, and once again the batsman got a single for that stroke. And he's hit that one pretty hard in this occasion by the right-handed batsman, but he can't got not more than a single. Placement was not so good, and because of that he's got a single for that stroke, and the scoreboard is now moving up to 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Again, here he bowls
driven that one down to extra cover. Just wanted a single, but at the last moment, rightly sent back by the non-striker. The ball went straight into the hands of the extra cover fielder, and finally no run scored in this delivery. See the batsmen of MSC Mudabidri searching for the right track in this occasion. They managed to score 17 runs on the board, 1 wicket lost in the over number 3 in progress in their innings. And Nuruddin bowling with a perfect length in the line. Once again, here he comes, right arm over the wicket. Wicketkeeper Musbah, the very experienced campaigner for their side, just setting a field. And now once again, Nuruddin bowls, right arm over the wicket, swings, and this time he's got the distance. It's a huge one. 6 into the account of batsman. So he just hit that one effortlessly. Have a look at this in the replay. He just smashed it away off the toes with a perfect timings, exquisite timings, and he's got the distance for that. Hemachandra, the batsman who hit a 6 with the exquisite timings, and he is looking more confident after being hitting at that 6 this time. Driven that one down to deep in wicket, into the gap as well. In fact, they completed one, looking for this second. They come back for this second. And get it completed at last. A couple of runs added to their total, and with that couple run, the scoreboard moving up to 25 for the loss of 1 wicket. One more good over. In MSC Mudabidri's point of view came to 10 runs came from this over. First over cost 10 runs, second over cost 5 runs, and third over also cost 10 runs. 25 for 1. MSC Mudabidri after completion of 3 overs, they are looking in a commanding situation. Still 3 to go in their innings. So welcome back once again. 25 for the loss of 1 wicket. They are looking in a commanding situation for MSC Mudabidri against M Park Warriors, and the 4th over starts in their innings. First ball, पहली गेंद ड्राइव के इस वक्त स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड गेंद पहुंची इस वक्त स्ट्राइट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 26 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over. In fact, here the bowler bowls. अगली गेंद लेकर तैयार. Just gone for a wide swing, not succeeded. गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहते थे, वाइड स्विंग करना चाहते थे, छू के गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेके दिशा में गेंद पहुंची. रन से यहां पर मिलेगा. विकेट कीपर मुस्बा गेंद पर तेजी के साथ लपके जरूर, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए, और इन 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ऑफ द टोस, जस्ट वाइड ऑफ मिड ऑन फील्डर एट द सिचुएशन. हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर स्ट्रोक खेला था. वाइड स्पीड ऑन पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनके बाईं ओर से गेंद निकली, और जब तक लॉन्ग ऑन पर वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर. फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. यह गेंद बेहतर गेंद थी, शॉर्ट थर्ड मैन पर रन लेना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से नॉन सेकंड बल्लेबाज ने उन्हें वापस भेजा. और यहां पर हमारे साथ एक और गतकाल के भूतपूर्व खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी अपने ज़माने के श्रीमान गणेश पुजारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और हम एलसीसी संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका स्वागत करते हैं. श्रीमान गणेश पुजारी जी का हार्टली वेलकम टू यू सर इन दिस एलसीसी 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023. इस बार बेहतर गेंद थे, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और जहाँ तक सवाल है ओवर नंबर 4 का, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बन चुके. बेहतर ओवर अगर एम पार्क वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 3 रन बने. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs फॉर एम पार्क वॉरियर्स.
विजय लक्ष्मी का मुकाबला होगा, विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स का मुकाबला होगा ओशियन पंडित हाउस के साथ अगले मैच में। तो एक बार फिर से इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीम के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, त्योहार भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है इस मैदान पर। 80वें 90वें और 2000 दशक के दिग्गज खिलाड़ियों का समागम इस लेजेंड्स क्रिकेट कप 2023 के अंतर्गत यहां पर होता हुआ, और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मंगलूर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इब्राहिम जो कि अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही हैज गॉट अ सिंगल, इन फैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। गुड पीस ऑफ वर्क मेड बाय द वाइडिश लॉन्गॉन फील्डर, बेहतर फील्डिंग वहां पर वाइडिश लॉन्गॉन के फील्डर ने की, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ रहा है, फुल टॉस, पल्स एंड दिस टाइम टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस। ऐसा कहना पड़ेगा, just not quite get that one from the middle of the bat at the last moment, and the placement was too wrong, and because of that he paid the penalty for that. तो दूसरा विकेट गिर चुका है 29 रनों के योग पर, और बल्लेबाज इस वक्त हेमचंद्रा आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। हेमचंद्रा is now backing to pavilion, caught by deep mid wicket feeder of the bowling of Ibrahim, and now they are 3 wickets down for just 29 runs on the board in the over number 5 in progress in their innings. तो यहां पर नंबर 5 बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, नंबर 22 की जर्सी इस वक्त पहने हुए क्रीज पर मौजूद, और इब्राहिम की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। कुल मिलाकर 10 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। प्रकाश इस वक्त नए बल्लेबाज सामना करते हुए, इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस दैट इज एन एब्सोल्युटली गुड वन, लकी एस्केप फॉर द बैट्समैन। बाल इस गेंद पर बचते हुए बल्लेबाज, गेंद लगभग ऑफ स्टंप से 1 या 2 इंच दूरी पर निकलते हुए, और आखिरकार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराए, और इस गेंद पर बचते हुए बेहतर गेंदबाजी। अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, और इस बार कुछ तो जरूर हुआ है वहां पर। मुजबा इस बार अपील करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना वहां पर बेल्स ऑफ नहीं हुए हैं। कुछ हद तक हताश मनोभावना वहां पर सुनाई दी। हालांकि मुजबा जैसे ही गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी, मुजबा जो कि जश्न मनाते हुए आगे की ओर आए, और जैसे ही उन्होंने भापा कि वहां पर गेंद स्टंप्सों पर टकराई है, लेकिन बेल्स वहां पर गिरे नहीं है, तो हकीकत को उन्होंने जाना, और आखिरकार यहां पर बल्लेबाज और टीम के खाते में 1 रन उन्होंने जुड़ चुका है, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, फील्डर पहुंचते हुए डीप मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन मिलेंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। पिछले 11 गेंदों में बेहतरीन कमबैक यहां पर कर चुके हैं एम्पायर वॉरियर्स के गेंदबाज, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 25 रन, लेकिन उसके बाद के 11 गेंदों में सिर्फ 7 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटों को प्राप्त करने में सफल यहां पर एम्पायर वॉरियर्स के गेंदबाज। बेहतरीन कमबैक इन 11 गेंदों में वो कर चुके हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद ड्राइव किया, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, डेंजर एंड पर बल्लेबाज दौड़ कर आते हुए थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपने छोड़ पर वापस लौट चुके। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 5 ओवर की समाप्ति, और स्कोर है इस वक्त 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट
after completion of 5 overs, and now just a last over remaining in their innings. तो इस वक्त अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 50 प्लस के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए मजीद, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रकाश के लिए, और इस बीच मजीद तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ एमएससी मूडबिद्री की पारी में 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 5 ओवर्स कंप्लीटेड, लास्ट ओवर रिमाइनिंग एंड द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, और इस बार प्लम इन फ्रंट घोषित, absolutely plumb in front, just gone for a wide swing, not succeeded. The ball hit to his leg, and his leg shown clean in front of the stumps, middle stump in fact, and umpire no hesitation to rule him absolutely plumb in front. One more wicket fallen, Prakash departs, and now it's 34 for the loss of 4 wicket at the start of the 6th and the last over in their innings. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ से बाहर, वाइड का इशारा. 35 for the loss of 4 wickets now at the start of the 6th over in fact. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार चूके, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में. कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, चूके पूरी तरह. गेंद जैसे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिए, गिल्लियां बेल्स उड़ा दिए, और बल्लेबाज इससे पहले कि अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर वापस रख सके. बेहतरीन स्टंपिंग, एक और विकेट गिर चुका है. सो 5th विकेट डाउन, नाउ इट्स 35 for 5. 4 balls remaining in overall calculation in their innings. 4 गेंदें इस वक्त बाकी उनकी पारी में, और यहाँ पर अंडरआर्म क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन, सबसे द बिगेस्ट फैन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट श्रीमान नंदन कुलशेखर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उनको भी हम लेजेंड क्रिकेट कप 2023 संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से श्रीमान नंदन कुलशेखर जी का हम स्वागत करते हैं. हार्टली वेलकम टू यू सर इन दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट लेजेंड क्रिकेट कप 2023 LCC 2023. और जहाँ तक इस वक्त सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 4 गेंदें इस वक्त बाकी. 4 balls now remaining in overall calculation in the innings. We are just waiting for the number 7 batsman.
So next one, this time improvisation, and he finds the gap as well. He's got a boundary for that. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त विद a twisted bat गेंद को खेला खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मान से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, और 3 गेंदे बाकी, 3 balls left in overall calculation in their innings, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। बेहतरीन स्ट्रोक पिछले गेंद पर इस वक्त खेला था। नए बल्लेबाज जो क्रीज पर आ चुके हैं मैयदी, और चौके के साथ वो अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं, और अगली गेंद लेकर मजीद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार टॉप एज मौका, और गेंद इस वक्त पॉइंट फीडर के सिर के ऊपर से निकल चुकी है, और इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन बल्लेबाज यहां पर बचते हुए। So couple of runs added to their total, और 2 रनों के खाते में जुड़ेंगे। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, और इस बीच इस बार चूके आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइक रन पर होता हुआ। 1 more wicket fallen and wicket number 6 down, and now it's 41 for 6, and I think last delivery now remaining, अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में है। So what a fantastic tournament is now progressing in the name of Legends Cricket Cup 2023. The legend players of 80s, 90s and 2000 decade getting together in this tournament, and we are just watching a fantastic cricket from the legendary cricketer of 80s, 90s and 2000 decades, and the match number 2 of this tournament is now progressing here between Empak Warriors versus MSC Mudabidri. अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, अंतिम गेंद लेकर माजिद, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर मौजूद, और स्ट्राइक लेते हुए अशरफ। इस बीच द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, अंतिम गेंद लेकर तैयार, यह गेंद चूके स्टंप्ड, दैट्स इट, 7th wicket fallen in the final delivery of their innings. And they finished with 41 for the loss of 7 wickets for MSC Mudabidri, and now the target for Empak Warriors is 42. And in the last second session of their innings, in fact in the last 3 overs, the bowlers of Empak Warriors come back strongly. They conceded 16 runs. They conceded 25 in the first 3, and they conceded, after that they conceded only 16 in the next 3. So next 3 overs, in the last 3 overs they conceded 16 runs, and because of that they restricted the batsmen of MSC Mudabidri for just 41 runs. 42 the target for Empak Warriors, and now let's see can they read the target or not. Ali Vijay Lakshmi Cricketers ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಓಷಿಯನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
So welcome back once again. 42 the target for Empower Warriors set by MSC Modabidre. At batted first, they managed to score 41 runs in the stipulated 6 overs. And now the target for Empower Warriors is 42. Their innings now going to start. Their openers are the crease. And the bowler starts the fresh proceedings from that side. And the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार सलीम और आरिफ आरंभिक बल्लेबाज एम्पायर का वॉरियर्स की ओर से और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और 42 रन बनाने ठीक 7 रन प्रति ओवर के औसत से उनके निर्धारित 6 ओवर में पहली गेंद द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी गेंद को उछाला इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद पहुंची मिड ऑफ पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ द स्कोर बोर्ड्स नाउ स्टार्ट्स एंड 1 विदाउट लॉस रन से काउंट बिगिन फॉर देम रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है इस वक्त एम्पायर का वॉरियर्स के लिए 1 रन 90 बिना किसी नुकसान के और इस बीच अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट शशि किरण न गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जबकि सामना करने के लिए तैयार आरिफ तो आरिफ जो कट्टे इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज की गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त आरिफ ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर रहा जब तक गेंद फील्ड और स्वीपर रहा जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास समय था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शशि किरण दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इंप्रोवाइजेशन करते हुए गली पर यहां पर गेंद पहुंची लेकिन यहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर सामना इस वक्त करने के लिए तैयार आरिफ जो कि एक बेहतरीन अंपायर के रूप में भी जाने जाते हैं आजकल वो अंपायरिंग का कार्यभार निभाते हैं और यहाँ पर लेजेंड्स क्रिकेट कप पे वो इस वक्त एम्पायर वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हुए ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेला गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के निस्संदेह एम्पायर वॉरियर्स का जहां तक सवाल है एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत अगर उन्हें 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंच रहा है तो और गेंदबाज शशि किरण एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला 6 रनों के लिए ऐसा कहना पड़ेगा he just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one dispatched it in a style over wide slog on have a look at this in the replay middle of the bat connected exquisite पोजीशन और गेंद को इस वक्त उछाला वाइड स्लॉग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर सलीम के बल्ले से छक्का लग चुका है और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद अंदर की ओर आती विकेट को कट किया स्टंप्स एक्सपोज करते हुए अंतिम क्षण में पॉइंट पर गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन पर तो एक बेहतर शुरुआत गुड स्टार्ट for Empak Warriors chasing the victory target of 42 in 6 overs. They managed to score 11 runs on the board after completion of first over, yet to lose any wicket, and this is absolutely a perfect start for them. And let's straight away coming back to the equation, 42 minus 11, that means 31 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required rate of exactly 6.20 runs per over. 30 गेंदें बाकी है, माफ कीजिए 31 रन चाहिए 6.20 रन प्रति ओवर के औसत से और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुरेश और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सलीम जो कि पिछले ओवर में एक छक्का झड़ चुके हैं और इस वक्त तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सुरेश और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई 30 गेंदें बाकी हैं 31 रन चाहिए मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और वार्म अप जो कि यहाँ पर करते हुए गेंदबाज और इस वक्त तो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथों पर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सलीम जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम के लिए और
पहली गेंद, फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप. सुरेश टू सलीम. ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को बोर्डना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर मिस फील्ड, और इस मिस फील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने एक रन यहां पर पूर्ण कर लिए. अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें उन्होंने हटा ली थी और आखिरकार इस गलती का फायदा उठाकर लेग बाई के रूप में एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. सुरेश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द गेंद, फ्लाइटेड ऑफ द टोज, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, लगभग कुछ हद तक गेंद ऑफ स्टंप से नहीं, पैर पर गेंद नहीं टकराई थी, सिर्फ बाई का इशारा. बल्लेबाज के साथ साथ स्वयं विकेट कीपर भी गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और आखिरकार बाई के रूप में यहां पर एक रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ. कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. बेहतर 2 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. ये गेंद इस बार बाउल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ मार्टी हीव, नॉट सक्सीडेड, द बॉल स्टक टू हिज लेग स्टंप, बेल्स आर डिस्टर्ब्ड एंड दैट इज द विकेट नंबर 1. 13 रन एक विकेट के नुकसान पर एम्पायर का वॉरियर्स इस वक्त बना चुका है. 2.3 ओवर का खेल उनकी पारी का यहाँ पर 1.3 ओवर का खेल उनकी पारी का यहाँ पर समाप्त हो चुका है. तो इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का. एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, विजय लक्ष्मी क्रिकेट टेक्स ओवर ओशियन पंडित. वन मोर गुड मैच इज नॉट कमिंग अप राइट आफ्टर दिस मैच, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ दीज 2 टीम्स टू प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. और इस वक्त इंतजार है नए बल्लेबाज का. सुबह का वक्त 11:25 यहाँ पर बच चुके हैं. धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला LCC 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और दूसरा मैच का द्वितीयार्ध इस वक्त प्रगति पर. संघर्ष इस वक्त जारी है MSC मूडबिद्रे और एम्पायर वॉरियर्स के बीच में विजय के लिए. और इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ मुस्बा, अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी एम्पायर वॉरियर्स की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और वो इस वक्त सामना करेंगे सुरेश की गेंदों का. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई और 4 खिलाड़ी अभी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. इसी श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के नियमानुसार गली, एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश मिड ऑन और शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल. अगली गेंद मुस्बा के लिए, स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और सही तरीके से अंपायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. बेहतर ओवर अब तक सुरेश का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 3 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा था लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress in fact. Still a ball left in this over. सुरेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुस्बा के लिए स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर. दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर सुरेश ने फेंकी थी और 1 रन अतिरिक्त के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है वाइड के रूप में. और सुरेश अपनी ओर के अंतिम गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक मुस्बा द्वारा, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. और गेंद को जब तक लॉन्ग ऑफ पर फीड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 7 runs came from the last over and 2 overs completed, and after 2 overs they are 17 for 1 and 25 more runs now they have to score for victory. 25 runs more now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. In fact, it's a 6 run scored from the last over, and now it's
तो इस बीच नया ओवर प्रारंभ होता हुआ ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉट फाइनल की दिशा में, एक रन मिलेगा वहां पर 20 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 19 से एक कम यानी 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज मैयती गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। पहले ओवर में 11 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर वापसी कमबैक यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज एमएससी मूडबिद्री के, और यहां पर रन इस वक्त सिर्फ सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और मैयती मुशबा के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद मुशबा ने आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, नहीं लगा पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। जब तक फॉलो थ्रू में गेंदबाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है मैंगलोर मीडिया द्वारा और यूट्यूब पर, और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार। स्वीप करना चाहा, इम्प्रोवाइजेशन स्टंप्स एक्सपोज करते हुए चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। तो धीरे धीरे गेंदबाज यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बल्लेबाजों के ऊपर, और इस बीच मैयती फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट बट वी गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप बिटवीन आरिफ एंड मुशबा, और इस बीच मैयती अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछाला, मुशबा ने गेंद पहुंची, माफ कीजिए इस वक्त उछाला था आरिफ ने 4 रनों के लिए into the vacant gap between long on and long off, गेंद को उछाला था, फील्डर मौजूद थे लेकिन स्क्वायरर, और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, जस्ट वेंट वाइड ऑफ द बॉलर एंड ही जस्ट हिट दैट वन into the gap as well and he's got a boundary for that stroke, और चौका इस वक्त जुड़ चुका है, जरूरतमंद चौका इस वक्त जुड़ चुका है एम्पायर वॉरियर्स की पारी में आरिफ द्वारा। अगली गेंद के लिए तैयार, बेहतर गेंद थी इस वक्त, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता, लेकिन गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ उनके बल्ले पर आई, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया, ठीक तरह से स्ट्रोक खेल नहीं पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि गेंद को थर्ड मैन पर फीड किया जाता। 25 रन 3 ओवर की समाप्ति, एंड लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द कंपैरिजन। तो 3 ओवर के बाद एमएससी मूडबिद्री ने भी 25 रन बनाए थे, जबकि एम्पायर वॉरियर्स ने भी बनाए हैं 25 रन। तो कंपैरिजन स्टैंड्स ऑन द सेम 25, बोथ टीम्स आर स्कोर्ड 25 आफ्टर फर्स्ट ओवर, लेकिन द्वितीयार्ध में वहां पर एम्पायर वॉरियर्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन कमबैक किया था, सिर्फ 16 रन प्रदान किए थे, और देखना यह है कि एमएससी मूडबिद्री के गेंदबाज यहां पर उस सफलता के सिलसिले को यहां पर दोहरा पाते जो एम्पायर वॉरियर्स के गेंदबाजों ने किया था उनके पारी के पहले, उनके मैच के पहले सत्र में। तो 17 रन चाहिए विजय के लिए, 17 टू गेट इन रिमाइनिंग 18 डिलीवरीज, इन फैक्ट 3 ओवर्स रिमाइनिंग। 5.66 द रिक्वायर्ड रन रेट, 5.66 द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन, और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए। फिलहाल दोनों अंपायर मोहन और अंपायर सतीश मूडबिद्री इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। निस्संदेह यहाँ पर कमबैक करना है तो एमएससी मूडबिद्री के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त एम्पायर का वॉरियर्स, और कुछ बातचीत करने के बाद अंपायर सतीश इस वक्त पेविलियन की ओर बढ़ते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
So everything seems to be perfect, and the match once again restarts. 17 required of 18 deliveries. First ball of the fresh over from Suresh comes. पहली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को इस वक्त चिप किया है और एक रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए सोच रहे हैं लेकिन नहीं मिलेगा. फ्लैट वर्जन थ्रो स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स इस वक्त पहुंच चुका है और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं. 26 रन एक विकेट के नुकसान पर और स्ट्राइक इस वक्त मुशबा के पास. 17 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए. 16 रिक्वायर्ड ऑफ 17 बॉल्स. Still the match is now evenly balanced. और ये गेंद उछालना चाहा मुशबा ने. 2 के इस बीच डॉट गेंद. 16-16 now. The equation stands. तो 16 गेंदें 16 रन. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद इस वक्त फेंकी थी लगभग जमीन के सहारे. अंतिम क्षण में गेंद बल्लेबाज को वंचित करने के बाद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतरीन गेंदबाजी. अगली गेंद. ये गेंद swings at this time. I think it could be gone all the way for a huge one. Fantastic struck. Have a look at this in the replay. देखिए ऐसा कहना पड़ेगा. He just got that one right from the middle of the bat after being goes on to his front foot and lofted that one over the widest long on fence for a 6. Perfect struck came from the bat of मुशबा. और ये छक्का इस वक्त समीकरण को काफी हद तक आसान कर चुका है. इस बीच कट किया बैकफुट पर जाने के बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट. कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची. एक रन मिलेगा और एक रन के साथ मुशबा ऑफ द स्ट्राइक यहां पर हो चुके हैं. 33 नाउ. 9 runs to get, 14 balls remaining. समीकरण आसान इस वक्त होता हुआ और इस बीच सुरेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आरिफ के लिए यह गेंद. इस बार आरिफ ने गेंद को उछाला लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद हैं और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. उछाला था जरूर आरिफ ने लेकिन प्लेसमेंट गलत था और आखिरकार लगॉन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की. देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था. आसानी के साथ गेंद को लपक ले गया सीमा रेखा के अंदर. तो विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर second and a second wicket partnership has been broken. 20 run second wicket partnership has been broken in the face of Arif and Empark Warriors lose their second wicket in fact. It's 33 for 2. Match number 2 of this prestigious cricket tournament, Legend Cricket Cup 2023 is now progressing here. LCC 2023, which proudly organized by under the great leadership of Mr. Shaukat Ali, Mr. Vijay and Mr. Rohan Montero. And this tournament is now progressing along nicely. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. बैकफुट पर गए. गेंद को बल्ले तक आने का इंतजार किया. इत्मीनान के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर. जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. तो एक बेहतर ओवर अगर एम्पार्क वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है जिसमें कुल मिलाकर 9 रन बने. एक छक्का भी लगा इस ओवर में और 4 ओवर के बाद इस वक्त कुछ हद तक तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ एम्पार्क वॉरियर्स का 34 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. It's 34 for the loss of 2 wicket in the over number after the completion of 4 overs in fact. 8 required in remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. So back to this game, it's 8 required of 12 deliveries and Mr. Nandan, one of the biggest fan of underarm cricket, we are just witnessing here right in the commentator box. He's just watching at me और हमारी ओर देखते हैं जरूर लेकिन एक प्रसन्न चेहरा उनका इस वक्त नजर आता हुआ. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, सलाम जे इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 8 रन चाहिए 12 गेंदों पर. पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर गेंद इस बार रोकी गई है शॉर्ट फाइल लेग पर और रन्स मिलेंगे सिर्फ एक बाई के रूप में. अंपायर का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 7 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए. 11 गेंदें बाकी और अगली गेंद इस वक्त यह गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके का पुश सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं मुशबा. 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. सलाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इब्राहिम जिनका आगमन हो चुका है एज अ नंबर 4 बैट्समैन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार.
हल्के से गेंद को मोड़ दिया ऑफ द टॉस, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े पुकारते हुए इस वक्त इब्राहिम, और इस बार दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। सिर्फ 4 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 9। समीकरण बिल्कुल आसान इस वक्त होता हुआ एम्पायर का वॉरियर्स के लिए, और ये गेंद ड्राइव किया गेंदबाज की दाईं ओर से ऑफ द टोज मिड ऑन पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 8 बॉल्स। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया, पैडल स्वीप मुस्बा द्वारा, शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन मिलेगा। मुस्बा अपने रन को वृद्धि कर चुके, अपने दौड़ को तेज कर चुके हैं, लेकिन यहां पर मिलेगा सिर्फ 1 ही रन उनके लिए। 40-40, 7 balls and 2 runs required। इस बीच सलाम तैयार, ये गेंद इब्राहिम के लिए ऑन साइड पर मोड़ा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, और यहां पर 2 रन जिसकी जरूरत थी बल्लेबाज बट हो चुका है। इन 2 रनों के साथ एम्पायर वॉरियर्स रजिस्टर्ड 8 wickets victory with 5 balls to spare against MSC Mudabidri, and with that victory Empire Warriors they are through to the next round of this competition. So match number 2 has been ended. Captain Vijay Lakshmi Cricketers ಹಾಗೂ ಓಷನ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So the match number 3 Vijay Lakshmi Cricketers will take over ओशन पंडित, और वो मैच शुरू होगा यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद मेरे साथ गोपी के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी इस श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए अब मैच यहाँ पर जारी होता हुआ विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स और ओशन पंडित के बीच। उसी तरह विजय लक्ष्मी टॉस जीतकर पहला क्षेत्र रक्षण निर्णय लिया। I request Mr. Raghuram of Uppala Legends, please to be reported here. Mr. Raghuram of Uppala Legends, please report to the commentator box immediately, please, sir. We need you at this situation. Please report to be here.
तो यहाँ पर मैच नंबर 3 की शुरुआत होती है और इससे पहले की मैच की शुरुआत हो हमारे एक और बेहतरीन आंखों देखा हाल सुनाने वाले केरला में सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कमेंटेटर श्री राम रघुराम जी का मैं यहाँ पर आमंत्रण उनको देना चाहूँगा। आपका हार्दिक स्वागत है रघुराम सर। एलसीसी 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमी की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं। हार्टली वेलकम टू यू सर। आइए माइक्रोफोन पर श्रीमान रघुराम सर, प्लीज कम। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Mr. Gopi. We are in the third match of this LCC 2023 Legends Cricket Cup here in Urwa. Vijay Lakshmi cricketers will play against of Ocean Pandit House in this match. We have got Mohan Yadi and Mr. Roland Pinto, the officials for this match. We are requesting the players to resume the game very immediately because we have got very less timings. We have to complete lot of matches. We are requesting even the officials to make the batsmen to hurry up and complete the matches as early as possible. Vijay Lakshmi, after winning the toss and straight away electing to field first. So Ocean Pandit House, the two openers are at the crease. Yes, we are ready. Santosh and Rizwan, the two openers for Ocean Pandit House. And Dheeraj, the man in action for the first over from the pavilion end. He's bowling for 50 plus category. So it's driven to the offside. Lovely shot, but doesn't get hold of that neatly enough. Straight to the man at point. Meanwhile, the batsman now up the mark straight away. Santosh is on one, and that makes Rizwan to take strike for the first time. We watch Dheeraj with a very short run up. Oh, his ball playing across the line and paying the penalty there. Wanted to lift it over mid wicket. Didn't get the ball in the bat. And of course, you miss a hit. That's what the
status, what we are watching now. So Dheeraj strikes for the first time. The very second ball which he has bowled is considered a single of his first over so far. He has bowled 2 deliveries, 0.2 hours, 1 run he has given and has captured the opening batsman Rizwan back to the pavilion without troubling the scorers with the golden duck. That makes the number 3 Ashraf slowly walks up to the crease and getting ready to face Dheeraj. Where in the first over, after Vijay Lakshmi cricketers are winning the toss and electing to field first, Dheeraj for the 3rd time. The Ashraf faces and beaten outside the up stump. Wanted to play it in the offside, but wicketkeeper doing the rest of the job behind the stump. Not for runs, so that's dot delivery. So Andrew to the onside. Ball was in the air for a while, but no problem. The batsmen are coming back for the second, and the last moment they decided in against of that. So 1 more to the tally. 2 on the board for the loss of 1 wicket. The man out, Rizwan, being bowled of the second ball of this match. And this one is driven straight to long on between the fielder at mid-on and the bowler. And 1 more run has been added meanwhile. With that single, the score is on to 3. This one is a lofted shot. We have to wait and see. Ball is ballooned up and it's taken very nicely by the fielder from deep mid wicket. Takes a simple straightforward catch but very well judged. So the second wicket fall for Ocean Pandit House of the very first over. Vijay Lakshmi cricketers have got a very good start, winning the toss and electing to field first, and they'd given just 3 runs of the very first over and captured 2 of their main straight line batsmen already back to the pavilion. It's not a good start for Ocean Pandit House. Meanwhile, the next batsman in is Wilfred the man in, jersey number 10, walks up to the crease. It's number 4. Nag is the man in charge of bowling for the second over, and he is bowling right arm over the wicket to ball to Santosh. This one, oh, lovely shot, but it is in the air. It was in the air. It was a hard chance for the fielder at mid-on. 1 more run has been added meanwhile. Score is on to 4 now. We are in the second over. We have got 3 fielders inside the 30-yard circle and 5 outside the circle. A man at deep covers, and 1 at long off, 1 at long on, 1 at deep mid wicket, and a man at deep square leg. Here we watch Nagesh. Into ball to the newcomer Wilfred. Nagesh bowls. This one who's wanted to play to the offside in a reverse sweep manner, but couldn't get the ball in the bat. That's a dot ball. Score remains at 4. We are still in the second over, which is in progress. This one drives this lovely shot to the outside. Straight along on. The man comes quickly, but he can't prevent the single. 5 on the board. We watch Nagesh with a very short run up. RTA balls. Balls to Santosh. Santosh drives this time straight to long off. A man comes. Meanwhile, batsmen have crossed 1 more. 6 on the board.
This one going down the leg side and very close to a white mark, but it was a positive delivery. So one more dot ball, score still at 6. Still we are in the second over. This one again getting the leading edge of his pad and the ball. They're going for a run, should be a leg by, and one more to the extra, the first extras hopefully. And the score is on to 7. So that ends the over number 2. So after the completion of 2 hours, the total tally is on 7. 7 for the loss of 2 wickets. The run rate for Ocean Pandit House after putting to bat first, exactly 3.5 runs per hour. It's a match of 6 overs aside. And some discussion between the fielders and even the batsmen too in the middle of the wicket. Seven for 2 after putting to bat first, Ocean Pandit House. Nasir, the man, has been introduced from the pavilion end, and he will be bowling to Wilfred. He's bowling left arm. Oh, this one, lovely shot, but this time finding the gap in the onside, sweeping it in a reverse manner. First boundary of the match. A lovely, lovely shot. Beautiful shot. Sweeping it in a reverse manner and picking 4 very, very valuable runs for his teams. Ocean Pandit House are moving on to the double figure mark. It's 11 for the loss of 2 wickets. We are in the third over. We watch Nasir for the second time. Into ball to Wilfred. This time plays it, the ball is ballooned up, and here the fielder comes, getting the first bounce. Getting the ball in the first bounce. One more to the addition, score is on to 12. 1-2 for 2, we are in the third over. So a lovely shot to the offside, beautiful shot. Straight to the man at long off. Batsman picking up a single in the middle. 13 on the board. 1-3 for the loss of 2 wickets. And we watched Nasir. This one is driven again to in the reverse manner. Reverse whip. One more to the addition. Ball has been deviated to the point. One more run has been added meanwhile. Score is on to 14. We are in the third over. Nasir balls to Santosh. This one drives but doesn't get hold of that neatly enough. The wicketkeeper doing the rest of the job behind the stump. The ball deviated towards the left of the batsman to the leg slip area. And Nasir. This one driven hard behind and back to the bowler, and bowler makes no mistake. Fielding is of his own bowling, and the ball has been given back to the officials. So that ends over number 3. After the completion of 3 hours, Ocean Pandit House, after putting to bat first, scoring 14 runs on the board, 14 for 2. Man out Rizwan and Ashraf. Rizwan not troubling the scorers. Back to the pavilion with the golden duck, and Ashraf scored just a single to his credit. And Santosh is playing with his individual score of 5, whereas Wilfred is playing his individual score of 7. And we have got Swastik as a scorer. Our respected scorer, Swastik, helping us a lot in the commentary box.
Zubay, the man, is bowling from the road end. 50 plus. Bowler has been introduced for the 4th over, and he will be bowling to Santosh. Sorry, Wilfred. This one has been driven to the long off, long on, make a pattern, and they may come back for the second, and they decided against stop that in the last moment. So just a single bow to the tally. Score is on to 15, 1-5. We are in the 4th over. 3.1 overs has been bowled so far. 19 deliveries have been bowled. This one is going down the leg side. Appeal for LBW has been negotiated. Should be a leg by, and of course, umpire Mohan Yayadi signaling is the leg by, and we watch Zubai. This one, the ball is driven hard. We have to wait and see. Ooh, ball rolls over. Hopefully, we have to wait and see the decision. The batsmen have completed couple of runs meanwhile. 2 more to that total. And couple more to the tally, hopefully. No signal from the umpire, as of course. 2 more to the tally. Score is on to 18. We are in the 4th over. Wilfred, the man in strike. One more dot ball meanwhile. Watch Zubair. Into ball to Wilfred. Wilfred drives this time. The ball is in the air, but fielder from long on picks it up in the second attempt. Meanwhile, one more to the tally. 1 shot of the 20th mark. 1-9 for the loss of 2 wickets. Wilfred and Santosh doing your damaging work in the middle. Oh, that's we have to wait and see. So that ends over number 4. So after the completion of 4 overs with the last ball, which was a dot ball, score still remains at 19. 1-9 for the loss of 2 wickets after 4 overs. Abu Bakar, the man, has been introduced from the pavilion end, and he will be bowling to Wilfred, one who batted sensibly so far for his team. Abu Bakar to Wilfred. Sun's driven hard to the offside in between the fielder, and that will be a 4 and a lovely cover drive. Beautiful timings, a lovely shot. The fielder was on the square and the offside, but he has having no chance to cut it off. Bowling outside the off stump. And Wilfred using the full use of it, and
playing a lovely cover drive through the cover fence for 4. Score is jumping on to 23. Abubakar balls this time, sweeping it now, lovely, but the man from short third, fine leg, comes and picks it up behind the wicket keeper. One more to the addition, score is on to 22. We are in the 5th over. Oh, a lovely shot, look at that shot. They may come back for this. Oh no, it's ball rolls over in the last second. Slip from the hands of the fielder from deep mid-wicket. 4 more to the tally. Score is quickly jumping on to 28. Santosh finding the rhythm. This one is a lovely shot. Look at that. We have to wait and see. That's a 4. We cannot see from this angle. 1 bounce 4 over the long on fence in between the long on deep mid wicket. .32 is on the board now. Abubakar seems to be very expansive so far. Has conceded 13 runs so far in his 4 deliveries which he has bowled. And Abubakar bowls for the 5th time. This one beaten outside. The stump wanted to sweep it in the reverse manner, but couldn't get the ball in the bat. First dot ball of this hour. Given away 13 runs in 4 deliveries. This one we have to wait and see. Ball is deviating. And we have to wait and see. 1 overthrows. With that overthrow, it's a leg bye signal. 2 leg byes. .34 after 5. So exactly 7 runs per hour after the completion of and the final over of the innings is coming up. Nasir to bowl, the final over of the innings of Ocean Pandit House. From the road end. And he will be bowling to Wilfred. Nasir with a very short run up. So no lovely reverse sweep, but the man from mid-off has covered a little bit of ground towards the left, fielded nicely in point. 1 more to the addition. Meanwhile, 35 is the score. 36 is the score. Make a pattern, it's 35. This one driven hard to the long on. Picks up a single. That makes Wilfred to take strike. Where Nasir should be wide outside the off stump, and wicketkeeper doing the rest of the job behind the stump. 1 more to the addition, 1 more to the extras. This one is a ball, is ballooned up, but straight to the fielder there. Meanwhile, the batsmen have ample time to cross across for 1 more run. With a cheeky run, the score is on to 38. We are in the final over. Nasir to ball. This one, a lovely shot. Ball is in the air. We have to wait and see. Bounced. Even the fielder was not able to get it. In the initial level, the batsman now completed couple more. So with that couple, score is on to 40. Exactly 40 on the board.
Last two deliveries left in the innings of Ocean Pandit House. This one has driven hard, but this time straight to the fielder. They may come back for the second. Oh, they missed the stump. So two more to the tally. 42 is the score now. 42, and the final ball of the innings is coming up. And we watch Nashdir into ball to Santosh, the man in strike. We can expect a huge stroke from his bat because he has to go for the big shots. To open his shoulders, we have to wait and see. This one driven, but a lovely piece of bowling at the black hole, not giving any room to the batsman. So that ends the innings of Ocean Pandit House after putting to bat first against Vijay Lakshmi Cricketers, scoring 43 in the stipulated 6 overs. 44 is the target they have set to score for Vijay Lakshmi Cricketers. And soon after this match, we have got another match. We'll announce it in a very short while. We are requesting all the players to come and do the signing process immediately here in the commentary box. We are requesting the players of Young Friends Urwa and Hoysala Babukate. All the team members are requested here to be. They are requested to be here in the mic point for the signing process. I'll request again all the players of Young Friends Urwa and Hoysala Babukate are requested here to the commentary box for the signing process. Young Friends Urwa ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಬಾಬುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the inaugural match, today's inaugural match, we had a very good match between Upala Legends and Reliance Mangalore. Upala Reliance won that game convincingly in the very last moment. Yusuf Musodi and Kiran have played an excellent job while chasing. Kiran stayed at the crease till the last moment and gave the victory for Upala Legends. And now we are having the third match, which is in progress. Vijay Lakshmi Cricketers and Ocean Pandit House. Vijay Lakshmi Cricketers, after winning the toss and putting Ocean Pandit House to field first. Ocean Pandit House scoring 43 in the stipulated 6 overs. So they have set a target of 44 to get for Vijay Lakshmi Cricketers.
Everything is set for the second half of this match. Vijay Lakshmi cricketers are. Oh, this one has been, the first ball has been deviated towards the leg stump. And the batsman Sudhir beaten all ends up, and wicketkeeper doing the rest of the job behind the stump. They're ready to open their account after the first ball. This one has swept and beaten again. Wicketkeeper doing the job again behind the stump. 2 consecutive dot balls. They are chasing a victory target of 44 to get in the stipulated 6 hours. And we watch Ashraf for the third time in this over. This one driven to the offside. Not getting the ball cleanly enough in the bat. The first run on the board. They're chasing a victory target of 44 to get. Now they're 1 without loss after 3 deliveries. We're watching Ashraf. Into ball 2. Naresh drives to the offside, but the man just inside the circle fielded it quite neatly enough. Batsmen, they wanted to go for a run and they decided against of that in the last moment. Ashraf. This one should be we have to wait and see. So that's the dot ball. We watch Ashraf. The run drives this time straight to the fielder. But the first run came by the bat of Mr. Naresh. Is off the mark. So that ends the over number 1. So after the completion of the first over, Vijay Lakshmi cricketers are willing to score 44 in the stipulated 6. They have scored just 2 without losing wickets. So 42 required of 5 hours. "30 balls and 42 runs, that is the equation. Wilfred should be a wide outside the leg stump. The first wide of the innings. Score is on to 3. Watch Wilfred. So driven back to the ball. A lovely piece of fielding of his own bowling, Wilfred. And during the time of batting, he has batted very nicely. This one driven hard. A lovely shot. Oh, that's 4 more. Beautiful shot. But uneven bounce for the fielder's point of view is concerned. He couldn't stop it at the very last moment. The ball rolls over the square leg fence for 4. 4 more to the tallies. Score is quickly on to 7. We are in the second over. We watch Wilfred. It should be a wide outside the up stump, and of course the umpires is doing some exercise there in the middle. 1 more to the addition, 8 on the board. Should be a wide outside the leg stump. So 2 more has to be added. 2 more runs has to be added for the tally. Score
Score is quickly onto the double figure mark. 10 on the board now. Wilfred seems to be very expansive and is not getting the line properly. And batsman Sudhir is taking the strike for the first time in this over. This one has been lofted over the square leg for a six. A huge six. Lovely, lovely shot. Beautiful shot. The ball was pitched outside the leg stump, but that's been lofted very neatly with the immense timings. 6 more to the tally. Sudhir is on quickly to 7. Score is quickly on to 16. We are in the second over, and Wilfred seems to be very, very expansive. And has already conceded 14 already. This one has driven to the offside. And they may come back for the second, and they made it quite comfortably in the end. 18 on the board. 16 runs have come so far. Wilfred bowls again. This one again a lovely shot, but this time the fielder not made any mistakes, covered his body behind the ball. One more run has been added meanwhile. Score is on to 19. Still, we are in the second over. Chasing a victory target of 44 to get. 19 on the board, we are in the second over. This one has been driven to the leg side, but getting the deviation from the pad, and umpire says a leg by. One more to the extras, one more to the tally. Score is exactly on 20. 20 for the loss of no wickets. Both the batsmen are at the crease, very much safe, and a very expansive over comes to an end. The second over bowled by Mr. Alfred has considered total 18 runs, and with few extras in that, 18 runs totally. 18 runs have come in that over. 20 on the board. Now the 24 to get in 24 deliveries. Run a ball, that is the equation. 6 runs per over, the required run rate for Vijay Lakshmi cricketers. To win this match. Ashraf will be bowling the third over from the road end. This one has been deviated to the short third wide leg. The batsman completed one. They are coming back for the second run. A little piece of misfielding by the fielder, taking the full advantage of that, and batsman now enough time to come back for the second run. 2 more to the tally. Score is on to 22. And watch Naresh facing the bowling of Ashraf. He is bowling his second over. Considered just 2 runs of first over. He has to restrict the field, and this one has been played straight to the field at mid-wicket. Lovely piece of fielding. The bowler is bowling to his fielders. That makes a difference there. It's a dot ball. Ashraf balls. This one a lovely shot, but this time we have to wait and see. A good piece of fielding in the deep mid-wicket. One more run has been added, and that makes Sudhir to take strike for the first time in this over. And we watch Ashraf. Should be a wide outside the off stump. We have to wait and see. Umpire signal, and of course, I said off the bat. Okay. Watch Ashraf. So again beaten outside the off stump, and that ends over number 3. Captain of Young Friends, Urwa,
requested to be here for in the mic point for the toss proceeding for the very next match. "24 is on the board, so 20 required of the last three. That is the equation. Four runs have come in the last over. So Ashraf has bowled splendidly well. He has bowled 2 overs and conceded just 6 runs. And we have got a next match between Young Friends Uwa and Hoysala Babukating. And Young Friends Uwa have already won the toss and they elected to field first. We are requesting Mr. Gopi to be here at the mic point. Organizers are waiting for you. Please come, Mr. Gopi. Naveen bowls and this time straight to the fielder. Meanwhile, a batsman across for one more. One more to the addition. Score is on to 25. Naresh to take strike. The bowling of Naveen. So a lovely shot, beautiful shot. Look at that timings. Ball rolls over the fine leg fence for 4. In between the fine leg and long on. No chance for the fielder at the backward square leg. He just had a look as a spectator. He couldn't stop it. Couldn't move even to his left. It's a lovely shot, beautiful shot. And that's a lovely piece of bowling. So that's the first wicket fall, a lovely piece of bowling, and wicketkeeper doing the rest of the job. Wilfred Souza stumping Naresh back to the pavilion. The first batsman back to the pavilion there. "29 is on the board. Nasir, the man in, walks up to the crease for Vijay Lakshmi cricketers. That's number 3. Looks like a left-hander. Yes, he is. He's taking guard from umpire Mohan Ayadi. Getting ready to face Naveen for the first time. "29 on the board now. Another 15 more runs to get. We are in the 4th over. Some swept ball was ballooned up and a man from shot behind the square leg fielded it nicely. One more to the addition, that makes Sudhir to take strike. Naveen to bowl. Oh, beaten outside the off stump. Lovely piece of bowling. Beautiful piece of bowling. Playing with the cross-batted shot, not getting the ball in the bat, and that is a dot ball. Watch Naveen. It's a lovely reverse sweep. Look at that timing, superbly struck to the third man fence for 4. A lovely, lovely shot. Beautiful shot. Score is quickly on to 34. 10 needed of the last 2. That is the equation now. 10 runs required of the last 2 hours for Vijay Lakshmi cricketers to enter into the next rounds.
Cyril, the man in charge of bowling from the third end. And he will be bowling to the left-hander. Nasir, the man in strike. Cyril bowls. Beaten outside the up stump there. A lovely piece of bowling. Wanted to lift the bowler over the long on, but didn't get the ball in the bench. We watch Cyril. So the ball deviated to the fine leg. White ball signal. So 2 more to the tally. 36 on the board. So just 8 runs needed for the victory. 8 to get. And we're watching Cyril. We're watching Cyril. Passes umpire and bowl. This one has been, the ball has been deviated. The batsmen are coming back for the second run. 1 shot, the umpire says, should be a bye. We have to wait and see. Yes, it is. There's 7 runs needed. And we're watching Cyril to bowl. .37 on the board now, 7 to get. That should be a wide outside the leg stump. 2 more to the tally. 1 they ran actually in the middle. So 5 needed. Still a lot of deliveries left in the innings of Vijay Lakshmi cricketers. This one has been driven, but straight to the field. I made no mistake in claiming that catch. Superb, straightforward catch. But very well judged in the deep mid-wicket. That made Nasir has to walk back to the pavilion. A lovely, lovely shot, but couldn't clear the fielder there in the deep mid-wicket. So that's the wicket fall for Vijay Lakshmi. They lost their second wicket in the score of 39. So 5 needed. And Nasir wanted to finish in style but couldn't do it. Man at mid-wicket, deep mid-wicket, made no mistake in claiming that superlative straightforward catch. Very, very well judged catch it was. Dawood the man in, replacing Nasir. We have Sudhir as the opener still there at the wicket. This one has driven, but this time the same person took a catch, but this time the ball bouncing second attempts twice. Batsmen have completed couple more runs. Meanwhile, he has to cover a lot of grounds. Meanwhile, Dawood scored, is off the mark with that lovely. That's a look at that shot. It should be a 6, so that ends the match. Dawood lifting it beautifully, inside out shot over the covers, a lovely shot. So with that, Vijay Lakshmi cricketers winning the match very convincingly. With the change in commentary, please come in, sir. Thank you. I'll hand over the mic to the committee. Thank you so much. And welcome Mr. Gopi, sir. Please come. Thank you so much. Thank you, Mr. Raghuram, sir, our senior commentator. So fantastic cricket commentary came from him. Once again, we'll thankful to you, sir, from the organizers of LCC 2023 and all the spectators. Thanks a lot, sir.
Mr. Raghuram sir. Thank you. So back to this game, and match number 4 is now going to begin. Hoysala Babukatte versus Young Friends Urva, and now the match is now going to start within just a short while. And we'll be back right after a short break with myself, Gopi, with the match will going to commence. Thank you. Dhanyavad. Right, the match starts. Young Friends Urva will take over Hoysala Babukatte, and so Young Friends Urva, after won the toss, they elected to field first, and because of that, their fielders are now spread out on the field, and the openers of Hoysala Babukatte are the crease. Ratish and Ashraf, the opener for Hoysala Babukatte. Meantime, the bowler is Samir, and we are just waiting for the first ball of the match. पहले गेंद का इंतजार है इस वक्त, और गेंदबाज समीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। मैच नंबर 4 LCC 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू होता हुआ, और इस बीच पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। ना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को खेल नहीं पाए। रनों के लिए 2 कदम जरूर आगे बढ़ा, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपक चुके हैं। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए Samir दाहिने हाथ over the wicket. Again bowled out, just gone for a big one, and he just got the lead of the batsman.
गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई ऑन साइड पर गेंद पर करारा प्रहार करना चाहा, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। Have a look at this. It's got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap and stuck to his leg stump. Bells are disturbed, and that is the wicket number 1. शून्य पर पहला विकेट खो चुका है रतीश, आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और गेंदबाज इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं। शून्य पर पहला विकेट खो चुका है होयसला बब्बुगट्टे। इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर। तो मैच नंबर 4 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट लेजेंड क्रिकेट कप 2023 2023 की शानदार प्रगति होती हुई आज, जो कि शाम को 6 बजे तक मैचेस खेले जाएंगे। कल डे नाइट मैच यहाँ पर खेले जाएंगे, देर रात तक यह श्रृंखला चलेगी, और निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि 80वें 90वें और 2000 दशक के भूतपूर्व खिलाड़ी जो है अंडरआर्म क्रिकेट के, उनका क्रिकेट का जलवा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हर तरीके से। तो इस बीच नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, रिवर्स शॉट गेंद को खेलने का प्रयास किया था, ठीक से मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और गेंद सीधे पहुंची। इस वक्त चिली पॉइंट पर रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है यहाँ पर 0 पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है होयसला बब्बुगट्टे के लिए। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में मौका, रनआउट का खतरा इस वक्त, निशाना नहीं, निशाना चूका, विकेट कीपर विकेट चटका चुके हैं, लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर इन दिस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर काफी नजदीकी मामला हो सकता है, और देखते हैं यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा थ्रो को रिसीव करने के बाद, जब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर, बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था, या फिर बैट वॉज इन द एयर, जस्ट वी हैव टू चेक इट, और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार तृतीय अंपायर तीसरे अंपायर देते हैं। ही इज गॉन, द सिग्नल केम फ्रॉम द थर्ड अंपायर। The batsman got just fell short out of his crease when the stumps are disturbed, और बल्लेबाज का बल्ला यानी बैट हवा में था, तो इस वजह से रन आउट घोषित किया गया, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। मुस्तफा अशरफ की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, दूसरा विकेट गिर चुका है। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर होयसला बब्बुगट्टे यहां पर संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। They are looking in trouble. 1 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. Two balls left in this over. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। प्रकाश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाज की गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को साइड पर फ्लिक करना चाहा, मोड़ना चाहा था चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए समीर, और यह गेंद इस बार फेल जस्ट शॉट ऑफ अ फील्डर एट द लास्ट मोमेंट। पहले सोचा कि गेंद को लपका जाए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद का उन्होंने इंतजार किया, फलस्वरूप गेंद आफ्टर फर्स्ट बाउंस उनके हाथों को चीरती हुई सीधे पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा। इससे पहले कि डीप एक्स्ट्रा कवर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति, और एक बेहतरीन ओवर समीर का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। And just talking about the next match, Challenge Bolur will takes over Uppala Legends in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Challenge Bolur ಹಾಗೂ Uppala Legends ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Meantime, back to this game. The battle is now continuing here. संघर्ष इस वक्त जारी है, और गेंदबाज प्रशांत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, और
फील्डिंग में जमावट इस वक्त वो करते हुए सामना करने के लिए तैयार प्रकाश और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रशांत दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन मिला और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट फील्डिंग में जमावट इस वक्त प्रशांत करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर रन तैनात किया गया है ठीक सीमा रेखा के पास और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। द बैट्समैन ऑफ होयसला बबुकट्टे स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता चूंकि और भाग्यशाली रहे कि गेंद सबसे कुछ दूरी पर निकलते हुए और आखिरकार रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑफ पर, एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और इस वक्त प्रगति पर। रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। डीप कवर पॉइंट से फील्डर दौड़ कर रहा है डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर और जब तक इनको वो फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। प्रशांत दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए थोड़े से स्टंप्स को कवर करने के बाद शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था इस वक्त, इसको कॉन्टैक्ट विद द बैट एट द लास्ट मोमेंट और एक रन मिल चुके हैं। 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा होयसला बबुकट्टे के बल्लेबाज अपनी सही राह को तलाशते हुए स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो गतकाल के घटानुघटी खिलाड़ियों का समागम इस श्रृंखला के अंतर्गत हो रहा है एलसीसी 2023 के अंतर्गत। प्रदीप कोठारी जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते एक वक्त के यंग फ्रेंड्स रुआ के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हो जाने जाते थे, यहाँ पर अपने गतकाल के वैभव का अनावरण करने के लिए गेंदबाजी पर इस वक्त उतर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। लेग स्पिन गेंदबाजी दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया, गेंद पहुंच एक्स्ट्रा कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, 1 रन प्राप्त कर चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाजी में फील्डिंग में माफ कीजिए इस वक्त जमावट करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, बल्ले का भीतर किनारा टकराने के बाद गेंद स्टंप्स पर टकराए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मिनट। गेंद बल्ले का भीतर किनारा टकराने के बाद पैर पर टकराई, उसके बाद सीधे स्टंप्स पर टकराई थी और स्टंप्स पर गेंद को खींच लिया था इस वक्त और इसी के साथ विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। हालत तक काफी हद तक नाजुक इस वक्त लगते हुए होयसला बबुकट्टे के 9 रनों पर 3 बहुमूल्य चोटी के बल्लेबाजों को खो चुका है। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। पर्सी जो कि एक वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और
सैयद माफ कीजिए, नए बल्लेबाज इस बार उछालना चाहा, बल्ले का टॉप पे टकराने के बाद चंद टिप्पों के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। प्रदीप एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए बाउल्ड आउट, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, लाइन पर टिप्पा गई, थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई और ऑफ स्टंप पर जा टकराई, लेग स्टंप उसके उनके ऑफ स्टंप की गिल्ली इस वक्त डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ चौथा विकेट गिर चुका है। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल, इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। Subhash, the number 6 batsman, is now comes out to the middle. Still the batsmen of Hoysala Babukatte searching for the right track. और इस बीच प्रदीप कोठारी अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज होइसड़ा बब्बुकट्टे के और प्रदीप फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे थोड़ा सा वाइड थ्रो और गेंद को विकेट कीपर फील्ड करे, बल्लेबाज 2 रन के साथ अपने अपने छोर पर वापिस लौट चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुका है, 3 overs completed, 12 runs on the board, still a struggling time continuing here for the batsmen of Hoysala Babukatte. So after halfway they are struggling now, still half have to go और देखते हैं इस बचे हुए आधे सफर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा, the first 3 overs completely belongs to the bowlers of young Fred Surwa. They conceded just 12 runs and captured 4 vital wickets of होइसला बब्बुकट्टे और द्वितीयार्ध में देखते हैं होइसला बब्बुकट्टे के बल्लेबाज किस तरह यहाँ पर वापसी करते हैं। प्रशांत अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 12:55 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ और बढ़ता हुआ इस मैदान पर भीषण गर्मी की तीव्रता, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज दाखिल हो चुका है और निश्चित रूप से यहाँ पर गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई एलसीसी 2023 के अंतर्गत। प्रशांत ऑफ कटर, इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पर संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार प्रशांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बॉल्ड आउट, परफेक्ट ऑफ कटर एंड ही जस्ट कॉल्ड द रीड ऑफ द बैट्समैन। गेंद टिप्पा खाने के बाद डिविएट होकर अंदर की ओर रहती है, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले और पैर के बीच में लंबा अंतर और उस अंतर को चीरती हुई गेंद स्टंप्सों पर टकराई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रिवॉर्ड और 1 विकेट और गिर चुका, 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। तो गेंदबाज यंग फ्रेंड शुरू के इस वक्त हावी होते हुए होइसड़ा बब्बुकट्टे के बल्लेबाजों के ऊपर जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा होइसड़ा बब्बुकट्टे के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो इस वक्त
सब कुछ यंग फ्रेंड्स रुआ के गेंदबाजों के पक्ष में चलता हुआ और इस वक्त परिस्थिति को अपने अनुगुण इस वक्त करना है, तो बल्लेबाजों को इस वक्त कुछ हद तक तेज तरीके की बल्लेबाजी की सख्त जरूरत है। और प्रशांत इस वक्त नए बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद लाइन पर टिप्पा खाई थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहता, उनके पैर पर गेंद टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर सतीश मुड़बिद्री को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ ये एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो ये कितना विकेट गिरा है यहां पर? 6 विकेटों का पतन हो चुका, 13 रन बन चुके, 13 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। द विकेट्स आर फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों की तरह विकेट यहां पर गिरते हुए, और हर विकेट के पतन के साथ इस वक्त परेशानियां और बढ़ती हुई होइसला बब्बू कट्टे के लिए। और इन संदिग्ध हालात में नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आगमन होता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि प्रेम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और ये जानते हुए कि बल्लेबाज प्रेम बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इस वक्त प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, उनको दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार रहा, ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द प्लेस ऑफ द बैट जिसे कहते हैं, स्टीयर कर दिया गेंद को और बल्ले के मुंह को खोलते हुए गली की दिशा में, और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, रनों के लिए संघर्ष इस वक्त करते हुए बल्लेबाज हुई चला बब्बू कट्टे के। और प्रशांत फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट फाइन, और गेंद इस वक्त शायद वहां पर सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो फील्डर तैनात थे, थोड़ा सा स्क्वायर अंतिम क्षण में, और आखिरकार गेंद निकली फाइन, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ 19 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 19 रन्स ऑन द बोर्ड, 6 विकेट्स डाउन, स्टिल द बैट्समैन ऑफ होइसला बब्बू कट्टे जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 2 ओवर का खेल इस वक्त बाकी, 2 ओवर्स रिमेनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स, और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर यानी 12 गेंदों में उनके बल्लेबाज होइसला के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एलसीसी 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए, और 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ शरीफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुभाष। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक इस वक्त करते हुए कप्तान यंग फ्रेंड्स उर्वा के, और इस बीच शरीफ गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद, यह गेंद ड्राइव किया, हाफ स्टॉप, शॉर्ट मिड विकेट पर, गेंद पहुंचे इस वक्त डीप मिड विकेट पर और मिस फील्ड, और इस मिस फील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुका। जब तक तीसरे खिलाड़ी उस गेंद का बैकअप करे, सलीम बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। रन इस वक्त चाहिए होइसला बब्बू कट्टे को, किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद फ्लाइटेड टॉप एज, और मोहम्मद अली गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
हालांकि उतना कुछ आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीमा रेखा को पार करने में सफल। छक्का इस वक्त जुड़ता हुआ बल्लेबाज सुभाष के खाते में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और इस बीच शरीफ अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, ऑप्शन से बाहर, गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पर सीधे गेंद पहुंची और इसी के साथ 7वां विकेट गिर चुका है। एनफील्ड क्लियर करना चाहा था, अंतिम क्षण में क्लियर नहीं कर पाया। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े हुए थे, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को उन्होंने लपका और 27 रनों पर 7वां विकेट गिर चुका है। तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा साझेदारी 14 रनों की टूट चुकी है 7वें विकेट के लिए। इट्स 27 for 7। अब पर्सी का आगमन होता हुआ यहाँ पर एक वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में वो जाने जाते थे जब वो कंकनाडी 11 का प्रतिनिधित्व किया करते थे। उसके बाद कई मशहूर टीमों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और यहाँ पर अपने गतकाल के बल्लेबाजी का वैभव को अनावरण करने के लिए वो इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन पर्सी इस वक्त यहाँ पर पुकारते हुए कि दूसरा रन लिया जाए, लेकिन कुछ खास दिलचस्पी नहीं बताई प्रेम ने। और प्रेम जो कि इस वक्त जो कि टोपी पहने हुए ब्लू कलर के, आमतौर पर ऐसी टोपी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर 80वें 90वें दशक में पहना करते थे, खासकर रिची रिचर्डसन, कार्ल हूपर जैसे खिलाड़ी इस टोपी, हालांकि वो लाल रंग के टोपी को पहना करते थे इस तरीके की, लेकिन यहाँ पर ब्लू टोपी इस वक्त पहने हुए। और जहां तक सवाल है, इस वक्त गेंद को उछाल दिया, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची, 1 रन बल्लेबाज को मिला इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों के ऊपर। 29 for 7। एक गेंद अभी भी बाकी और अंतिम बार इस ओवर में शरीफ गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए बल्लेबाज सुभाष पर्सी माफ कीजिए इस वक्त और सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज शरीफ दाहिने हाथों पर विकेट, जमीन के सहारे गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंदबाज की दाईं ओर से लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, 30 रन बन चुके हैं। बेहतर ओवर, पहला बेहतर ओवर अगर होइसला बब्बू कट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 11 रन बने, 11 रन केम फ्रॉम दिस ओवर। और इस ओवर की बदौलत कुछ हद तक रन की औसत में बढ़ोतरी आती हुई यहाँ पर होइसला बब्बू कट्टे के 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 30 for the loss of 7 wicket after completion of 5 overs. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. तो अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और गेंदबाज तुलस इस वक्त गेंदबाज यहां पर तुलस इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त पर्सी, जो कि इस वक्त सिर पर पट्टी बांधे हुए सामना करने के लिए तैयार और अपने पुराने स्टाइल के अनुसार अपने क्रिकेटिंग डेज में वो इसी तरीके की पट्टी पहना करते थे सिर पर, और यहाँ भी उसी तरीके की पट्टी वो पहने हुए हैं। पहली गेंद चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ, वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 32 रनों पर। 32 for the loss of 7 wickets at the start of the 6th and final over. तुलस
परसी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड। और गेंद उनके लगभग घुटने पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी इस वक्त तुलस की। एक बार फिर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ढीली गेंद, इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल, गिर गए और इसी के साथ प्लम्ब इन फ्रंट, यानी पक्षपात घोषित। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा परसी ने, और चूंकि अंतिम क्षण में वहां पर गिर गए और उनके बैक लेग पर गेंद टकराती हुई, घुटनों के बल बैठ गए थे, बैक लेग पर गेंद टकराती हुई, और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 8वां विकेट गिर चुका है 32 रनों के ऊपर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट विद 3 balls टू गो इन देयर इनिंग्स नाउ जस्ट। तो तुलस पिछले गेंद पर विकेट जो कि यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार तुलस की गेंदों का। और तुलस दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर के भी पहुंच से बाहर। शॉर्ट दरम्यान पर पैर के जरिए गेंद को रोका गया। इस बीच नो बॉल का इशारा, और कुल मिलाकर 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और देखना यह है कि इस फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज प्रेम इस वक्त क्या करते हैं। तुलस कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद फ्री हिट गेंद लेकर तैयार। स्विंग्स और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन पिकअप इनसाइड डिफेंस, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अब बाकी उनके बारे में, जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। तुलस इस बीच गेंदबाजी करेंगे रंजीत के लिए। फुल टॉस, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। सीमा रेखा के अंदर सलीम द्वारा गेंद को जब तक रोका जाता, और सलीम का थ्रो जब तक स्ट्राइक रेंज पर पहुंचता, 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर वापस लौट चुके। 37 द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर तैयार तुलस रंजीत के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार चूंकि मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, गेंद का पीछा करते हुए थ्रो पहुंचा स्ट्राइक रेंज पर, आसान सा रन आउट होता हुआ, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप and the stipulated overs of Hoysala Babukatte are now completed. They managed to score 38 runs on the board for losing 9 wickets in the stipulated 6 overs. And now the target for Young Friends Urua is 39 in 6 overs. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 39 they have to score in 6 overs. 39 रन बनाने निर्धारित 6 ओवर में, exactly 6.5 runs per over the required run rate for them at this situation. That means they have to score 39 in their stipulated 36 levels with the help of 10 wickets, and their innings now going to start with a just short while. Till then we're taking short break. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद खुद मेरे साथ गोपी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा मैं जब यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उरुआ की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक का, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So 39 the target and the innings of young friends Surwa is now going to start. पहली गेंद वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए 1 रन 90 इलाके से नुकसान के और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार मजीद ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 रन दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर प्राप्त करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट शौकत और मोहम्मद अली आरंभिक बल्लेबाज दोनों अनुभवी बल्लेबाज इस वक्त यंग फ्रेंड्स शुरुआत के लिए पारी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्टीयर करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा पैरों पर गेंद टकराई अपील जरूर है लेकिन अपील को नकार दिया क्योंकि गेंद कुछ हद तक लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और आखिरकार 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रन बिना किसी नुकसान के 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत यंग फ्रेंड्स शुरुआत के सलामी बल्लेबाजों को अगर उन्हें 39 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज शौकत जो कि इस श्रृंखला के मुख्य संयोजकों में से एक है इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया बैक टू द बॉलर की दिशा में और रन इस बीच नहीं मिलेगा और बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज की और फिर से एक बार गेंदबाजी के भाग पर जाते हुए माजिद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अब तक उनका ये बेहतर ओवर साबित हो चुका है अगली गेंद अपनी लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज शौकत के लिए ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेला स्क्वायर की दिशा में फील्डर काफी पीछे तैनात 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे जरूर और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस तो इस वक्त दोनों अली क्रीज पर मौजूद शौकत अली और मोहम्मद अली और इस बीच शौकत अली सामना करते हुए गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट जैसे ही गेंद मिड विकेट फील्डर के हाथों से छूटी और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर प्राप्त कर लिया बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट तो 8 रन तो एक यहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है 8 रन बिना किसी नुकसान के तो यहां पर शौकत के लिए इनाम घोषित किया गया अगर शौकत एक छक्का लगाते हैं तो एक फुल प्लेट टिक्का उन्हें यहां पर दिया जाएगा श्रीमान संदीप चैलेंज बोलूर इनकी ओर से और देखते हैं यहां पर शौकत जो कि खुद बेहतरीन टिक्का बनाते हैं वो यहां पर टिक्का को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं तो इस बीच सामना करने के लिए तैयार मोहम्मद अली और सामना गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रोहित पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद swings and this time he's got the distance it's a huge one and now it's time for मोहम्मद अली लेकिन टिक्का उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि टिक्का सिर्फ शौकत के लिए घोषित किया गया है और तो इस वक्त छक्का मिल चुका है लेकिन छक्का के लिए टिक्का यहां पर नहीं मिलेगा तो 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन बेहतरीन स्ट्रोक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ मोहम्मद अली और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया डिफ्लेक्ट करते हैं खूबसूरती के साथ शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची मिसफील्ड वहां पर और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं शौकत चलकर रन इस वक्त पूर्ण करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर तो 16 विदाउट तो
तो 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और इस बीच एक बेहतर प्रगति करता हुआ यंग फ्रेशर हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज, दोनों अली, दोनों शौकत अली और मोहम्मद अली एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए। अगली गेंद, ये गेंद स्विंग्स, इस बार मौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के लिए। और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है मोहम्मद अली का। हाफ माइंडेड स्ट्रोक, और दुविधा में पड़ गए थे कि गेंद को जोर से पीटा जाए या फिर हल्के से मोड़ा जाए। अंतिम क्षण में इस दुविधा में पड़ते हुए हाफ माइंडेड स्ट्रोक उन्होंने खेला और गेंद हवा में गई। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती यहां पर नहीं की। पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 16 for 1। तो 16 रन एक विकेट के नुकसान पर, 16 for the loss of 1 wicket, and first wicket, they lost their first wicket in the face of मोहम्मद अली। और नंबर 3 बल्लेबाज का आगमन है यहाँ पर होता हुआ। नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडिल, प्रशांत। और इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त रोहित तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रशांत के लिए। ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ दिया कलाइयों के सहारे डीप मिड विकेट पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 17 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, 17 for the loss of 1 wicket। एक एक्सक्विजिट बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा एक टेलीकास्ट बेहतरीन और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद पर शौकत तक किस तरीके का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हैं। तो इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ दूसरे अली की भी पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। शौकत अली इस वक्त बिना टिक्का प्राप्त किए हुए पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट गिर चुका। हालांकि करारा प्रहार जरूर था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद प्लेसमेंट गलत और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। तो 1 रन के अंतराल में दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट यहां पर गिर चुका है। 16 बिना किसी नुकसान के एक वक्त स्कोर था, अब स्कोर है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 for 2। तो शौकत अली का विकेट गिर जाने के बाद एक और अपने ज़माने के बेहतर बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। नज़ीर इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रोहित की गेंदों का। रोहित दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में नजीर का विकेट यहां पर गिर चुका है। स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ, गलत लाइन के साथ खेल गए और आखिरकार अपना विकेट बोल्ड आउट के रूप में गंवाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए। पहली गेंद पर नजीर का विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में और 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 3 wicket। ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। Two overs completed, 17 runs on the board, 3 wickets lost, and except they lost their 3 wickets in the first 2 overs, they managed to score 17 runs on the board। तो 22 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 24 यानी 4 ओवर। So Ratish, the bowler is now brought into the attack और प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 24 गेंदों में 22 रनों की दरकार और यहाँ पर कमबैक करना है
होइसड़ा बब्बू कट्टे के गेंदबाजों को, तो निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्हें यहाँ पर देना होगा। और दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ द टोस, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ प्रशांत ने, लॉन्ग ऑन पर एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एक वक्त स्कोर था 16 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि अब स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 बहुमूल्य विकेटों को सिर्फ 1 रन के अंतराल में यहाँ पर खो चुका है। और ये गेंद सलीम के लिए, गेंद को खेलने के प्रयास में चूके गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, फिर से 1 रन मिला, ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। काफी ऊंचा थ्रो था, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, और गेंद उनके हाथों से टकरा कर जब तक मिड ऑन पर बैकअप हो, बल्लेबाज ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज रतीश, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ड्राइव किया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, गेंद को बल्ले तक आने का इंतजार किया और इत्मीनान के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त सलीम ने लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। ये गेंद ऑफ द टॉस, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। प्रशांत इस वक्त जानते हैं इस वक्त एक सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है, क्योंकि गेंदें ज़्यादा हैं और बनाने वाले रन्स बचे हुए गेंदों से कम है, तो यहाँ पर एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी उनको अपने टीम अपने विजय तक पहुँचा सकती है। यह गेंद ड्राइव किया सलीम, और खासकर काफ़ी चतुर खिलाड़ी के रूप में सलीम जाने जाते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए हर गेंद पर ये दोनों बल्लेबाज और चतुरता का क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ द टॉस, जस्ट वाइड ऑफ मिड ऑन फील्डर, डाउन टू वाइड इज लॉन्ग ऑन, एंड इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड 3 overs had been bowled, so 7 runs came from this over, and now 15 runs they have to score for victory, more runs in fact they have to score for victory in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 5 runs per over. तो यहां पर absolutely 15 required of 18 deliveries, and after being long discussion, the ball is now taken by the bowler, who will be starts the fresh proceedings from the commentator box, and commentator box and की ओर से गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए गेंदबाज प्रकाश। Still some fielding adjustments is going on there. 15 required of 18 balls for young friends Urwa for victory. And as far as the victory of Hoysala Babukate is concerned, their bowlers desperately have to bounce back if they have to get back into this match. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो ओवर की पहली गेंद लेकर प्रकाश, गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए प्रशांत के लिए ऑफ द टॉस, गेंद को खेला, सीलिंग बिट ऑफ पर रन नहीं मिलेंगे। 17 गेंद 15 रन चाहिए विजय के लिए, 15 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स, और अगली गेंद लेकर तैयार। स्वीप करना चाहा, शॉट फाइन लेग पर सन्नी इस बार सलीम की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। जोखिम भरा रन लेना चाहा, भुगतान उन्हें करना पड़ा, और सलीम इससे पहले कि स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ शॉट फाइन लेग फील्डर का, विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट यहां पर चटका दिए। सलीम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, तो डॉट गेंद एक जुड़ चुका है, अब 16 गेंदें बाकी है, रन चाहिए 15।
तो इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया था, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और 15 गेंदें इस वक्त बाकी, 13 रन चाहिए। खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप, लेकिन फील्डर वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद को जब तक वो सीमा रेखा के अंदर दोबारा फील्ड करे पीछे की ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था इस वक्त प्रशांत ने, 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। और इस बीच प्रकाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन पर, वाइडिश मिड ऑन पर, एक रन मिलेगा। 29 नाउ, 10 मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। 13 गेंदें 10 रन चाहिए। प्रकाश इस ओवर में अंतिम बार, इस बार लेग स्टंप पर आते हुए डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। 12 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए। 10 रिक्वायर्ड ऑफ 12 balls, that means in remaining 2 overs for young friends Urva. So the bowler brought into the attack from that side and 10 required of 12 deliveries. Prashant is now going to face, और प्रशांत का जहां तक सवाल है, एक सेंसिबल पारी वो यहां पर खेलते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैनात ओवर द विकेट। पहली गेंद प्रशांत के लिए खूब चोटी के साथ गेंद को खेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंचे स्वीपर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 9 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी और उदय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज के तौर पर। दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंची और वाइड का इशारा अंपायर का। हालांकि उदय ने 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन एन मौके पर सही तरीके से वापस भेजा उन्हें नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज प्रशांत ने। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है, बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 रनों की दरकार, बचे 11 गेंदों पर। अगली गेंद ये गेंद नेक्स्ट टाइम से बाहर, टॉप एज गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद टॉप एज इस बार ऑफ साइड पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन का इजाफा। 33 रन्स हर गेंद पर बनते हुए और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा। और सिर्फ 6 मात्र रन और चाहिए विजय के लिए और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया मिड ऑन पर, रन नहीं मिलेंगे। डाइविंग एफर्ट इस वक्त करते हुए उदय अपना विकेट को बचाते हुए अंतिम क्षण में, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। गेंद सीधे पहुंची थी सीली मिड ऑन फील्डर के हाथों में और वहां पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। ऐसे ही चंद डॉट गेंदों की और जरूरत इस वक्त होइसड़ा बब्बू कट्टे को इस मैच में वापस आने के लिए। और 8 गेंदें बाकी है, रन चाहिए 6 और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस बार सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा। 34 नाउ, 5 रिक्वायर्ड, 7 बॉल्स रिमेनिंग। और एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए lofted into the gap as well, and this time he finds the gap. Boundary for Prashant, and that boundary brings the equality. Scores are leveled. तो खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था इस वक्त प्रशांत ने, खाली क्षेत्र चुनते हुए लंगोन और मिड विकेट के बीच में, और खाली क्षेत्र चुनते हुए इस वक्त और इस चौके के साथ रनों की बराबरी हो चुकी है। अब अंतिम ओवर में चाहिए अंतिम रन विजय के लिए। इन द नेक्स्ट मैच चैलेंज बॉलर आफ्टर वन द टॉस दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट उप्पड़ा लेजेंड्स। और अंतिम ओवर का खेल बाकी, सिर्फ एकमात्र रन विजय के लिए चाहिए।
और बातचीत कुछ हद तक चलती हुई से अंतिम ओवर में, और देखते हैं अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर रफ फेंकने के लिए उतरते हैं। प्रेम गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए सिर्फ 1 रन की जरूरत बचे हुए 6 गेंदों पर, यानी अंतिम ओवर में, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार उदय। पहली गेंद प्रेम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट उदय के लिए, cracks and take no, he dropped. And with that single, young Prince Urua registered a victory of 6 wickets against Hoysala Babugatte in the last over with just 5 balls to spare. And with that 6 wickets victory, they are through to the next round of this competition. So the match number 4 has been came to an end, which won by young Prince Urua by 6 wickets with 5 balls to spare against Hoysala Babugatte. And they are through to the next round of this competition with this victory. Next match number 5 is now coming up. Challenge bowler will take over. Uppala Legends, one more good match is now coming up. So news is here from the center that the captain of a challenge bowler, after won the toss, he elected to field first. And that match starts with Ritesh Chopal. Till then, we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself, Gopi, with the next match. We're going to begin with Ritesh Chopal. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
It's a match between Challenge Bowler and Uppala Legends. Challenge Legends versus Uppala Legends. Challenge Bowler won the toss and elected to field first. And umpires for this match is Mohan Ayadi, the experienced umpire, and also one more experienced umpire from Mudubidre, Mr. Satish. I request 12th man of Uppala Legends, please come to the dais. Here is the first good news that Mr. Babu is wearing his footwear first time in the tournament. First time he's wearing the shoes, so the match is delayed. Challenge Bowler won the toss and elected to field first, and opening strike over Sandeep, jersey number 44. Sandeep from Challenge Legends is going to bowl. So left-hander batsman from Uppala, Kiran, and in the first match he was a hero against Reliance Legends, Jappu. And here is the first ball coming from Challenge Bowler. Sandeep to Kiran. Oh, there's a wide down the pitch, wide called by umpire. The first run in the board in form of wide. Sandeep to Kiran. Oh, that is very close, but the ball was pitched outside the leg stump, so that it was neglected by the umpire and leg by one batter. Okay, bat, sorry, from the bat. So one of the good all-rounder from Challenge Bowler side, Mr. Sandeep. Sandeep to the second time. Oh, good delivery. That the keeper fumbled, and that was a very good ball. It's a bye call by umpire. And total jumps to 3. Sandeep. Again, far down the pitch, wide. This is not good bowling by Sandeep because it's a short form of cricket, just 6 overs match. And oh, again the good delivery, incoming delivery. Batsman fully not able to play that delivery because they are not in the line, so that he was beaten. Again, far down the pitch, wide call. So not good bowling. 3 wides in the first over
and the 4 extras giving. Again, good delivery, just glancing the ball to the third man, short third man, and getting a single. Score jumps to 6 on the board. Two more deliveries to go in this over. It's a long over. Oh, beautiful shot. The 6 runs by the bat of Mozambique. And the ball was also very bad ball on down to the leg stump, and it was very utilized by the batsman for a big hit for a 6. So last time in this over, Sandeep once again, good ball, but just tapping to the short mid-on and getting a single, and after completion of one over, score is 13. The very good start for Uppala Legends. First over 13 without loss. After completion of over number 1, score is 13, and the senior player, Mr. Babana, is ready to ball to Mozambique. So left arm round the wicket to Mozambique. Here comes Babana. Wow, very good ball. There a chance of run out, but misfilled by the third man. And batsman across for a single. Score jumps to 14. Once again, Babana, again, good ball. So fully beaten by the batsman, but keeper unable to collect the ball by in a form of by single. Score jumps to 15. Oh, good ball once again. There's in-cutter ball. And well kept by the wicket keeper, the SK Charan. Once again, Babana to Mozambique. That's a good shot. There is a fielder, but no chance. That's a four. That's a boundary. Beautiful. Beautiful shot. I think fielder was little bit inside the ground. He was not in the line of the boundary lines. He was not in the boundary line, so that the ball traveled upon him and just caused for the boundary. Yes, score jumps to 21. Again, the beautiful after shot overs the covers, and they completed 2 runs. Again, beautiful batting by Mr. Mozambique. He is a all-rounder for Uppala Legends. Even he can bowl.
Again, once again, Babana to Musambil. Very good ball. Again, driven to straight long on, but there is a protection and just a single. And the completion of 2 overs, score is 24 without loss. Albert 24 were there. Sorry, there is a little correction in the board. There is after completion of 2 overs, 22 without loss. It's a third over from the side of challenge bowler, Charan SK and Muzambil and Kiran. Both are in very good form. We have seen Kiran batting against Reliance and scored 26 not out. It's a match winning performance. And now challenge bowler in the third over. SK to Muzambil. Very good ball. There's chance of. There's out. Caught behind. Yes. Well kept by keeper Vivek. Well collected. This is the first wicket down for Uppala Legends. 22 for 1. Here is a new batsman for Uppala Legends. Harun. Right-hander batsman. Very good ball, very good leg cutter. Completely beaten. And a very good line also. So tempting to batsman to come forward. Ball just drifting outside the leg stump. Again, just a single. Ball just steering down for the third man for a single. Score jumps to 23. Here is the first call for next match. M Park Warriors versus Young Star Kalpane. Please, both the team players come for the registration sign. SK Charan from around the wicket to left-hander batsman Kiran. Here just steering down for the third man for a single. So he is little struggling. I think they are having a light cramps in the legs. So Kiran just is not forcing the ball, just tapping it and getting a single. And again, good shot. Good shot by Harun. A chance for a second, and there is a chance for run out also, but a wide throw, and both the batsmen completed a couple of runs, and the score jumps to 26 for 1. Last time in this over. Slightly change in the fielding, just bringing a fine leg
Oh, good ball and very good delivery, faster delivery. Uh, it just looks like a Yorker, but it was a very faster arm ball. We can say it is an arm ball. Very good delivery. Second wicket down for Uppala Legends. After completion of 3 overs, score is 26 for loss of 3 wickets. 2 wickets. Here is one more left-hander, most famous left-hander. We have seen him lot of time. He was playing for Gori Young Boys Pandeshwar. Now he is playing for his own local team, Uppala Legends, and he is a very good all-rounder also. He is very good batsman, left-handed batsman. Still he is having capable of getting a big scores for this team. Let us look. It's a 4th over. The experienced bowler, Latish. Latish to Kiran. Very good ball, full toss. Just tapping for a straight long on for a single. Latish, second time, very good ball. Again, a very good line also. Shali just tapping to the short mid-off and getting a single. So Latish here once again to Kira. Very good ball. Very good ball again. The keeper is fumbled, beaten, and in the form of Bice, a single. Very good ball by Latish till now. Oh, again far outside the off stump and just Shali getting to manage to get a single to long on, and so 5th time Latish to very good ball again. Just flicking the ball for a fine leg and getting a single. Last time in this over, Latish, still now it is a very good over. Again, good bowling. Shali just managed to get a single, just tapping the ball to the gully and getting a single, and that's a completion of 4 overs. Score is 32 for loss of 2 wickets. I request for the next match, Young Star Kalpane. Your players are not yet come to our dais. Please. Please come as soon as possible to the dais for your signatures. Here is a very good ball by Vivek. Outside the off stump. Just a very good line also. Batsman completely beaten, Shali. Again, it's a good ball, and ball is just missing the stumps. So, a leg by called by umpire. Again, it is a leg cutter for, sorry, it is off cutter. It's off cutter from Vivek, black cutter to the batsman.
Again it is off cutter, but far outside the off stamp, wide called by umpire. No wide. Again back. It's far outside the off stamp, wide called by umpire. Once again Vivek to Kiran. Again good shot. Good shot and misfield by the fielder. There's a boundary. Boundary. That's a good shot by Kiran. I think ball was just dripping to the leg stump and utilizing the delivery and just swinging for the leg stump, and he was able to get the boundary. And score jumps to 38 on the board. Fifth over in progress. Here comes Vivek to Kiran. Again, good shot. That's a six. Straight six to the pavilion. And it was a off-pitch delivery by Vivek, and batsman coming correctly to the line and delivering the beautiful shot straight to the pavilion for a six. And the score jumps to 45. 44. 44. For 2. After completion of 5 overs, 44 for 2. Yeah, we are requesting for Mr. Youngster Kalpana Legends. Please do your sign in the. Here is the last over from challenge ball SK Charan coming. So down the leg stump. Let's wait for umpire signal. It's a bye call by umpire. So bye single. The score jumps to 45. And good shot from Kiran. Wanted to pull the ball. There is a chance of run out there. Yes, it's out in the form of run out. Shali has to go back to the pavilion. Just a single. Score jumps to 46 for 3.
So new batsman Yusuf, the non-striker, and here is a Charan to Kiran. So wide delivery. I think is a far outside the off stick. In the form of wide. Again, keeper fumble, keeper not able to collect the ball. It's a very good bowling by Charan. So single coming by Bice. Again, again, good shot by Yusuf. Well fielded. Very good stop. Very good stop by the fielder. Batsman just able to get 2 runs, and that's a 50 coming for Uppala Legends. 50 runs. 2 more deliveries to go. Sorry. So wide again, far outside the off stump. Again wide, and again keeper is not able to collect the ball. Again wide +1, 2 runs, 52. So 2 more deliveries to go. This is the last over of the first innings. So very good shot by Kiran. Again they are trying for a second chance of run out. Again misfield by the keeper. Fumble, and they are completing 2 runs. Score jumps to 54. So last delivery from SK to Kiran. Very good shot. Good shot, but not able to connect it correctly, and just getting a single, and over completed after 6 overs completed. Score is 55 for a loss of 3 wickets, and 56 is a target for Challenge Bolur Legends.
धन्यवाद श्रीमान प्रदीप कोठारी। तो यहाँ पर 56 रन बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। जो रिक्वायर्ड रन रेट है exactly 9.33 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them for challenge bowler and the innings now going to start. पहली गेंद लेकर तैयार चरण इस वक्त सामना करते हुए और उछाला टॉप एज पहली गेंद पर चरण का और लंगोन पर फील्डर जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर टॉप एज पर गेंद टकराया, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ चरण अपने और अपने टीम की शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं और फिर से एक बार गेंदबाज यूसुफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाईं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई अपने पैर के जरिए जब तक गेंद को रोका जाता, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और ऐसे ही बल्लेबाजी आक्रामक बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए। 1 शॉट का इशारा, यानी सिर्फ 2 रन यहां पर घोषित किए जाएंगे। 8 रन बिना किसी नुकसान के बन चुके हैं और ऐसे ही शुरुआत की इस वक्त जरूरत आक्रामक शुरुआत की। अगर उन्हें 56 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंच रहा है तो निर्धारित 6 ओवर में। और रफीक सामना इस वक्त करते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी का सामना करते हुए और यूसुफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 2 गेंदों में 8 रन अब तक बन चुके हैं। तो गेंदबाज यूसुफ तैयार रफीक के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर के अगले गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और फील्डिंग में इस वक्त फिर से जमावट चलती हुई। स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा ठीक तरह से तो गेंद को नहीं खेल पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले कि पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को ड्राइव करना चाहा चरण ने। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज यूसुफ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए यह गेंद बाउल्ड आउट। ही जस्ट कॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन और इसी के साथ ये विकेट यहां पर चरण का समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद, देखिए किस तरीके से गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे आई थी, उछाल के खेलने के प्रयास में चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराए। गिल्लिया डिस्टर्ब होते हुए और चरण की पारी पर पर्दा गिर चुका है। यहां पर 9 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। 9 for 1। किशोर इस वक्त
सामना करने के लिए तैयार और रफीक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया। इस वक्त गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर एक रन मिलेगा और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 10 runs on the board, 1 wicket lost, 56 the target in 6 overs, 46 now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 9.20 runs per over। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगले ओवर का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज अब अगला ओवर फेंकने को आते हैं। Sali, the bowler, is now brought into the attack and the second over starts in challenge bowler से देखिए और पहली गेंद लेकर साली इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन के दिशा में। एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 11 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर निस्संदेह एक बेहतर साझेदारी की जरूरत है इस वक्त चैलेंज बॉलर को, अगर उन्हें 56 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी, स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। रफीक घुमाव लेती हुई गेंद पर, गेंद को उन्होंने खेलना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद काफी ज्यादा टर्न लेते हुए देखिए किस तरीके से अंदर की ओर आई और आखिरकार सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई और इसी के साथ रफीक की पारी समाप्त। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा चैलेंज बॉलर आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। शिवा प्रसाद, द नंबर 4 बैट्समैन, इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। स्कोर है इस वक्त 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद बिग वन, मैसिव वन, गॉन मेनी माइल्स, ह्यूज वन फ्रॉम द बैट्समैन और लंबा छक्का इस वक्त लग चुका है। अगर वृक्ष मैदान के बाहर स्थिर वृक्ष के डाल ना होते तो निस्संदेह सीमा रेखा के बाहर रास्ते को पार कर सकती थी गेंद और लंबा छक्का इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से। अगली गेंद के लिए तैयार, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा क्योंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में अपील जारी है इस वक्त लेकिन पर कोई प्रभाव नहीं। द बॉल केम आफ्टर फर्स्ट बाउंस इन फैक्ट एट द लास्ट मोमेंट और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद उछाला लंगों पर, मौका जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। छक्का नंबर 2 इस वक्त लग चुका है इस ओवर में और यहाँ पर शिव प्रसाद काफी हावी होते हुए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 2 विकेटों को जरूर चैलेंज बॉलर खो चुका है लेकिन रन के औसत काफी बेहतर। पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे ओवर में 13 रन बने, 2 ओवर के बाद 23 रन बच चुके। 33 रन चाहिए विजय के लिए, 24 गेंदें बाकी।
33 runs more now required, and 24 balls remaining in their innings. That means 4 overs left. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಎಂಪೈರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ और यूसुफ अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बॉल्ड आउट, मच स्ट्रेटर लाइन एंड विकेट नंबर सेकंड फॉर यूसुफ नाउ. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा था. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, बीट हो गए, गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर टकराती हुई. तो विकेट यहाँ पर गिर चुका है, विकेट नंबर 3. नाउ इट्स 23 for 3. Sandeep, a very experienced campaigner for their side. For challenge bowler, he is now coming out to the middle. अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज और एक परिपूर्ण क्रिकेटर के रूप में वो जाने जाते हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज यूसुफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट स्वीप करना चाहा, गेंद विकेट कीपर के पहुंच से बाहर. 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 24 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. So 20 balls now, in fact it's 22 balls left now and 32 more runs now they have to score for victory. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ड्राइव किया ऑफ द टोस, गेंद को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 25 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still have a long way to go. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी चैलेंज बुलूर के लिए. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें ज़रूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 26 for the loss of 3 wicket. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और गेंदबाज इस भी तैयार. दिस टाइम गॉन फॉर अ बिग वन, लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाते हुए अंतिम अक्षर में. और इस बीच अंपायर ने इसे नकार दिया और इस बीच 1 रन का इजाफा. तो यहाँ पर गेंदबाज कुछ हद तक नाखुश दिखाई देते हुए. इट पिच्ड आउटसाइड द लाइन एट द लास्ट मोमेंट इन फैक्ट. तो शायद इसी वजह से अंपायर ने उन्हें नॉट आउट इस वक्त घोषित किया. 1 रन का इजाफा 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 27 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. और गेंदबाज यूसुफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन, गेटिंग इज इनसाइड एज. गेंद जब तक फील्ड हो, शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा. 28 for 3, 3 overs completed. 3 overs completed, 3 overs left, 28 runs they scored and 28 runs they needed in remaining 3 overs. That means they are going exactly on the right way.
They scored 28 runs in the first 3 overs and they need 28 runs in the next 3 overs. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. सो फोर्थ ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए मुजामिल और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए संदीप. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए उछाला हवे में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर और इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. संदीप इस वक्त वाइड स्विंग खेलना चाहते थे लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में उनके टॉप एज पर टकराए, हवे में उछली और लॉन्ग ऑफ के फील्डर आगे की ओर आकर एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका. तो इसी के साथ संदीप आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 28 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है. चैलेंज क्रिकेटर्स बॉलर. इट्स 28 for 4. ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಎಂಪಾರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್. So the new man is now comes out to the middle. अब्दुल रहमान नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद. दाहिने हाथ ऊपर था विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. मिड विकेट पर एक रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. इस बीच रन दूसरा यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर. शिव प्रसाद जो कि इस वक्त सामना करते हुए Embark Warriors after won the toss they elected to field first against New Boys कल्पने यंग बॉयज कल्पने इस बार गेंद को खेल दिया. मिड विकेट पर एक रन के लिए दौड़ पड़े. 32 now for the loss of 4 wickets in the over number 4 in progress. और अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए. गेंद को हल्के से पुश कर दिया. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके. ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन भी बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करने में सफल. तो रन से इस वक्त चाहिए वो किस तरह से बनते हैं ये इस वक्त चैलेंज बॉलर के लिए जरूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हैं. 34 now for the loss of 4 wicket. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार सही गेंद. Not so missing 2 for Saadi of stump. Wrong selection, wrong calculation from the batsman. और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 4 overs gone and after 4 overs it's 34 for the loss of 4 wicket with just 2 overs to go in the innings and 22 more runs now they have to score for victory in remaining 12 balls. 12 गेंदे 22 रन चाहिए विजय के लिए.
रघुराम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार शिवा प्रसाद 10 सामना करते हुए निस्संदेह कम से कम 1 या 2 चौके और छक्कों की सख्त जरूरत यहाँ पर चैलेंज बॉलर को इस मैच में वापसी करने के लिए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लेजेंड्स ऊपर लेजेंड्स का, तो इस वक्त उन्हें बेहतर गेंदबाजी की जरूरत इन बचे हुए 2 ओवर में। रघुराम फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। 12 balls and 22 runs required. रघुराम कम्स फर्स्ट बॉल, पहली गेंद लेकर तैयार। ऑफ कटर गेंद उछाला मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ यहां पर शिव प्रसाद चैलेंज बॉलर की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं। Absolutely fantastic strike. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 11 गेंदे 16 रन चाहिए, 16 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 11 balls नाउ। और यहाँ पर कुछ हद तक दबाव इस वक्त गेंदबाज रघुराम के ऊपर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट शिवा प्रसाद के लिए अगली गेंद ऑप्शन से बाहर और इस बीच सही गेंद घोषित और डॉट गेंद। 10 गेंदे बाकी, 16 रन चाहिए और रघुराम इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार ऑफ कटर बैकफुट मिल गए, कैच छूट चुका है, कैच छूट चुका है। डाइविंग एफर्ट इस वक्त किया था फील्डर ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में असफल और बल्लेबाज जीवदान और 1 रन प्राप्त करते हुए। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था, लेकिन यहां पर इस कैच को गवाते हुए। और इस बीच गेंदबाज तैयार रघुराम अब्दुल रहमान सामना करते हुए इस वक्त उछाला लंगॉन पर, लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। 42 नाउ, 14 runs to get in remaining 8 balls. 42 the score now. और शिव प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। रघुराम दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। लेग स्पिन गेंदबाजी, स्विंग्स एंड गॉन many a miles। और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा चैलेंज बॉलर आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच। परिवर्तन के तौर पर लेग स्पिन गेंदबाजी इस वक्त रघुराम ने की थी और इस लेग स्पिन को पहले ही भांप लिया था, पढ़ लिया था। बल्लेबाज शिव प्रसाद ने गेंद को उछाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। तो 2 छक्के इस ओवर में रघुराम प्रदान कर चुके हैं और 7 गेंदों में 8 रन अब चाहिए विजय के लिए। और समीकरण बिल्कुल आसान इस वक्त होता हुआ चैलेंज बॉलर के लिए इस छक्के के साथ। शिव प्रसाद एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए सामना करने के लिए तैयार। रघुराम इस ओवर में अंतिम बार, इस बार चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी, 6 balls 8 runs, fantastic over in challenge bowlers point of view came to an end. 14 runs came from this over including 2 sixes। और इस ओवर के बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा चैलेंज बॉलर काफी हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। अब अंतिम ओवर बाकी और रन्स चाहिए 8। 6 balls and 8 runs required।
So Ramesh B, the bowler, is now brought into the attack. 6 balls, 8 runs required. और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अब्दुल रहमान. तो प्रदीप जिनका आगमन यहाँ पर हो चुका है गल्फ से, पाश्चात्य देश से, आज वो यहाँ पर भारत पधारे और उन्हें यहाँ पर एलसीसी संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हम हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं. हार्दिक स्वागत है आपका प्रदीप जी. तो इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट, पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. क्लीन कलेक्शन लॉन्ग ऑन पर 7 of 5, 7 रन 5 गेंदे. शिव प्रसाद स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं और गेंदबाज रमेश भट्ट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए शिव प्रसाद सामना करने के लिए तैयार. इस बार चूंकि रन आउट इस वक्त होता 1 ऑन स्ट्राइक रन पर और यहां पर डॉट गेंद गिर चुका है. अब 4 गेंदे बाकी, 7 रन चाहिए. 7 runs to get from 4 deliveries. और दबाव इस वक्त कुछ हद तक बल्लेबाज के ऊपर डॉट गेंद खेलने के बाद और इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का. तो नवीन का आगमन यहाँ पर होता हुआ. स्ट्राइक इस वक्त शिव प्रसाद के पास और रमेश भट्ट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. हालांकि पिछले गेंद डॉट खेलने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर दिखाई देता हुआ और देखते हैं अगली गेंद पर वो क्या करते हैं. तो अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रमेश भट्ट शिव प्रसाद के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. 4 गेंदे 6 रन. 6 to get from 4 deliveries. The match is now still in balance. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रमेश भट्ट शिव प्रसाद के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑन फील्डर और थोड़ी सी मिसफील्ड हो सकती थी वहां पर, लेकिन अंतिम क्षण में क्लीन कलेक्शन करने में सफल. 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ द 51 द स्कोर नाउ. That means 5 runs now they have to score for victory. 3 balls remaining. अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा. तो इस बीच गेंदबाज रमेश भट्ट नवीन के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद चिप किया स्ट्रेट ओवर द बॉलर साइड, डाउन टू लॉन्ग ऑन. इन फैक्ट कम बैक फॉर द सेकंड, स्लाइड बिट ऑफ मिसफील्ड देयर और गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला था स्ट्रेट ओवर द बॉलर साइड, स्ट्रेट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान 2 रन प्राप्त करने में सफल. अब 2 गेंदे बाकी, 3 रन चाहिए. 2 for tie, 3 for win, 2 balls left. What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. Ramesh Bhatt, the bowler, Naveen, the striker. अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. फील्डिंग में जमावट यहां पर कुछ हद तक चलते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट, यह गेंद स्वीप किया, इस वक्त इंप्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 रन मिलेगा. 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा. अब आखिरी गेंद 2 रन चाहिए. 1 for tie, 2 for win. पंडे और अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा. तो देखते हैं अंतिम गेंद पर रन बनते हैं या फिर रन रोकते हैं. तो मैच निर्धारित गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. रमेश भट्ट सामना करते हुए इस वक्त शिव प्रसाद जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए.
Last ball, 2 runs. Here we go. दाहिने हाथ over the wicket. Again, इस बार ऑन साइड पर सीधे विकेट कीपर के हाथों में, सीधे फील्डर के हाथों में कहना पड़ेगा, डीप मिड विकेट पर, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार था लेकिन प्लेसमेंट गलत, और जो फील्डर डीप मिड विकेट पर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को लपका, और इस कैच की बदौलत रोमांचक तरीके से 1 रन से विजय इस वक्त दर्ज कर चुका है उप्पड़ा लेजेंड्स चैलेंज बोलर के खिलाफ, और इस विजय के साथ, इस रोमांचक 1 रन के जीत के साथ इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। सो व्हाट अ फैंटास्टिक मैच एंड जस्ट short while ago which won by Uppala Legends by a single run, by a 1 run, defeating Challenger Cricketers Bowler, and with that victory they are through to the next round of this competition. So fantastic match has been came soon, and now the match number 6 of this prestigious cricket tournament, Legends Cricket Cup 2023, is now going to start between यंगस्टर कल्पना वर्सेस एम पार्क वॉरियर्स, और वो मैच शुरू होगा यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद एक लंबे अंतराल के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi. Good afternoon, cricket lovers. The match now will be played between Youngstar Kalpane versus Impact Warriors. The news here is that the captain of Impact Warriors won the toss and they elected to field first. So that opening batters of Youngstar Kalpane, they are in the middle of the pitch. And looks like Suresh Mudabidri is in striker's end. And jersey number 10. Praveen is in non-striker's end. And umpire Mohan Iyadi signal towards our scorer. And jersey number 10, Ibrahim, will go into ball the first delivery. So short fine leg. There is a deep square leg, mid wicket, long on, long off, and one fielder which is stationed at deep extra cover. Backward point, short fine leg, short mid wicket, short extra cover. Ibrahim. Right up over the wicket bounce. So lovely delivery, slight a bit of extra bounce from bowler Ibrahim outside the line of off stump, and straight away Suresh wanted to play a cover drive, but not quite able to make a contact with the bat. Wicketkeeper behind the stump, Musba, did the rest. Oh, beautifully bowled, perfect one. A quicker one bowled there by Ibrahim. This is a typical leg spinner, and this is a very good line in the irrigation because Suresh Mudabidri is not expecting that much of quick delivery from Ibrahim. Again, what a bad delivery that was. Absolutely perfect one. Three fantastic delivery from Ibrahim. So still we can see that the leg spinner is just quite effective here. And from the 80s and 90s, the leg spinners are such a dominator as far as wicket taking is concerned. Most of the teams has got one or two leg spinners. Those who got the ability of bowling good line and the ability of picking some wickets. This time bowler's back drive. What a stop. What a stop there from Ibrahim. Powerfully driven back by Praveen. And quick reaction coming from Ibrahim. And good stop on his follow through from his foot. And stops the runs for his team. Right arm over the wicket. Again, lovely line. Again, the line is so good in irrigation. Very impressive. Just a single. Praveen wanted to hit the ball towards the mid wicket, didn't got that much of a proper connection because of that line is so good here from Ibrahim. So last time in this over, Ibrahim bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Suresh. Suresh flicks it off his legs. Going to pick the single for that. With that single, good over there from Ibrahim. Tidy over. Just three came from that over. And after completion of first over, it's a good start here from Ibrahim for Impact Warriors against Youngstar Kalpane. And after this match will be played between Gori Young Boys versus Vijay Lakshmi Cricketers. Vijay Lakshmi Cricketers, they won the match against Ocean Pandit House in their first round match. So many legend players are witnessing this cricket tournament as a spectators, and one more fantastic performer of Mangala Monkey stand, Suresh Bhatt, came here in our commentary box to enjoy the game of cricket. One more fantastic all-rounder. So on behalf of organizer and behalf of all cricket lovers, warm welcome for Suresh Bhatt of Mangala Monkey stand. So meanwhile from the far end, bowler, one more leg spinner is in action, lofted but straight to the hands of long off. So this time Suresh Mudabidri, of course he's wanted to go for the big shot. He got the elevation but fails to get the distance.
And the long off fielder making no mistake at all in the negation, and is finding himself short of his crease. A little bit finding himself short of his stroke. And Suresh Mudabidri back into pavilion. The first wicket back into pavilion. So Nuruddin strikes with the first delivery of his first over, and Suresh Mudabidri, after making 2 runs, is back into pavilion. So new batter in is 05, jersey number 05, Deepak, the batter. Maybe Deepak asking squad umpire. This time, what a shot! Absolutely perfect placement and very good stop. Lovely stop there from Arif, I think so. Arif Jokate down at deep long on. Done a fantastic job and almost covering the ground from long on to wideish long on to stop the couple of runs for his team. And 2 runs for Deepak and Skobar Namuzan to 5 on the board. Again, this time opportunity. Oh, very good attempt by the fielder. And they're coming back for the second as well. And lovely attempt by the fielder in that extra cover region. Even they dropped the catch, but I think it's their valiant effort. And he's not really given up. He's tried his level best to take the catch ball, just slipping out of his hands. Scoreboard is now moves on to 7 for the loss of 1 wicket. Yes. This time opportunity for the catch. Wicket number 2, which is back into pavilion of team Youngster Kalpane. And wicket 2 means 7 for 2. Youngster Kalpane. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ ಸೌಕತ್ ಆಲಿ ಅವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ prestigious LCC Cup 2023. Meanwhile, new batter walking towards the middle is Samir, one more good player as far as underarm cricket is concerned, known to be a fantastic all-rounder, and a lot of responsibility now on the shoulder of Samir that they lost 2 wickets for just 7 runs. Nuruddin strikes with the delivery, tossed up delivery, lovely, beautifully balled, and the wicket keeper behind the Musba fails to collect the ball, but good backup by the fielder at short fine leg. One more good delivery, so 1 ball left in this over after 1.5 delivery score remains on 7. Tidy bowling performance from Mpark Warriors so far. Driven down to deep long on. Will it going to be a single? Yes, it is a certain single there. With the single, Skobar moves on to 8 on the board. 2 gone after completion of over number 2. It's 8 on the board. And they're going exactly 4 runs per over. The very good toss to win for team Mpark Warriors, elected to field first, and 2 opening bowlers did a great job to restrict the runs of their opposition. No change in bowling, and certainly one who bowled a very good over, first over, Ibrahim, will go into ball 3rd over of the innings of team Youngster Kalpane. Right arm over the wicket and slide a bit of outside the leg stump.
Meanwhile, one more single has been taken in the middle, and with that single, Skobarna moves on to 9 on the board. Samir is in non-strikers and he is batting on 2. Now Deepak, little correction. Praveen this time drives that one powerfully straight down the ground, but protection is given for that stroke down at deep long on, orthodox deep long on, so that batsman have to settle for the single. And with that single, Skobarna moves on to 10. What a good match. The previous match we witnessed. Again, Uppala Legends upsetting two very good teams. This time, reverse stroke comes into play and played that one in the right in the gap. And before the fielder from deep extra cover to run across his left to field the ball. Ample time for Samir to complete that couple of runs. So with that couple of runs, Skobarna moves on to 12 for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. Ibrahim, 5th time in this over. Bowles drives that one into the mid wicket. It's a chance of run out throw, which is slide a bit up high for bowler Ibrahim to gather. And so that Salim completes a quick single, and with that single, Skobarna moves on to 13 for the loss of 2 wicket. Again, Ibrahim, right arm over the wicket. Bowles driven that one down to mid wicket region. Fumble from the fielder. They come back for the second, and they made it quite easily in the end. 3 overs completed after completion of over number 3. It's 15 for the loss of 2 wicket. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾವಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಮೀನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ LCC Cup 2023. Over number 4 will going to start from the far end. Majid the bowler. Majid. This time top edge and opportunity, but no one there in that square leg region, so that Samir survived from that delivery where it is landed very safely. 16 on the board for the loss of 2 wicket. Majid, the legend player, the very good left arm leg spin bowler. Lovely delivery indeed. A perfect one, just coming into the batter slowly, and almost that ball is curving back into the batter, and bowler's back drive not for run. This time looks like one more catching opportunity, but ball falling short of that fielder. But here is Samir coming back for the second, going back for the second, and they completed quite easily. Once it looks like the opportunity for the long off fielder, but ball just falling short of the fielder, and so that Deepak completes a couple of runs. With that couple of runs, Skobarna moves on to 18 on the board, 18 for the loss of 2 wicket. Majid again far away outside the line of off stump, so that the bowler umpire no agitation. Roland Pinto to signal the wide. With that extra, Skobarna moves on to 19 on the board. Again, nicely turns that one down to mid wicket region. They're running hard, looking for the second, and at last Samir is going against that, rightly so. A good return coming from the fielder at deep. Just a single. 20 in the over number 4 is in progress. Samir back on strike now. Majid. Balls. This time improvisation quite nicely right in the gap. Deep fine leg boundary. I don't think any fielder can get there. There is a square leg fielder, but I think it's gone very fine.
That ball gone very fine. Improvising cricketing stroke here from Samir. He's just waiting for the turn of the delivery. Just moving to his off stamp and getting a perfect position to play that delivery into fine leg region boundary for 4 runs. Scoreboard now moves on to 24 for the loss of 2 wickets. Majid. Bows. This is a line. Absolutely perfect line there for Majid. That line always going to be a useful line for right-hander batter. And Majid learning from the mistake and bowled a dotted delivery. So 4 gone. After completion of 4 overs, it's 24 on the board. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ ಸೌಕತ್ ಆಲಿ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ Mohan, one of the fantastic and tremendous all-rounder, and especially the match finisher is known as a match finisher for Vijayalakshmi cricketers in late 90s and till 2000 is a good finisher, coming in the number 6-7 position, and when it looks like match is all over for the team, he is the one so many times he got a victory for Vijayalakshmi cricketers for his outstanding performance from the bat and ball. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ ರೋಹನ್ ಇವರಿಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರು ಹೋಗೊಟ್ಟಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ, ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ UFC cricketers. So warm welcome for Rohan Monteiro for this prestigious cricket tournament. This time he lofted and it looks like, and it's 6. What a magnificent struck there from Praveen. What a glorious shot that is from Praveen. He is a mighty striker of the ball. Arif, the bowler, has bowled almost around the legs of Ashok, and what a great shot that is from Ashok, from Deepak in fact. Absolutely perfect stuff. Arif again. Right, Amawar. This time he lofted it, but I don't think the fielder will going to get there. But after 1 or 2 bounds collected by the fielder, and couple of runs has been taken. So what a good innings Deepak is playing. Correction, Praveen, not a Deepak, it's a Praveen. He came as an opener for the side. Scoreboard now moves on to 32. Arif to Praveen. Praveen this time inside out cricketing stroke, right in the gap. And again the Samir turning out for the second. And one shot called by umpire Mohan Ayadi. So that just a single there. That might be Praveen is the batter who couldn't manage to fails to cross that line in the non-striker's end, so that umpire Mohan Ayadi called it. This time straight down the ground. It's going to be a one more 6. Yes, it does. Second sixer of that Arif's over, and Praveen is looking so dangerous. Absolutely straight it. Magnificent 2 struck came from the bat of Praveen and takes team score of youngster Kalpana into 39. An expensive over indeed already. 15 runs came from that over. This time again you going for the lofted drive and catch has been taken. At last Arif got a success. But I think Praveen did a job here. And now it's the time to welcome one more fantastic all-rounder. Donald and Donny is famously known as Donny of Young Friends Urva, who represents for Young Friends Urva, as well as
And one more legend player, Tulas, one more fantastic and technically very sound player as the left-hand batter, and Muhammad Ali, welcoming him for this LCC Cup 2023. Now it's a time to welcome Pradeep, one more fantastic performer and a classical right-hand batsman of Mangaladevi Cricketers, a legend player, and Rohan Montero welcoming him with rose for this prestigious cricket tournament. So new batter in. Just walking towards the middle. Arif to continue. Far outside the line of leg stump. One more wide 40. After this match, the match will be played between Vijayalakshmi Cricketers versus Gori Young Boys. So that I request all the players of two teams to please be reported here immediately to sign the official chart. Lovely delivery, pitched in a line, slight a bit of deviation, and Arif completes the over. Number 5, it's 40 on the board, youngster Kalpane. 1 over remaining. Ashraf, the bowler, will go into ball the last over of the innings of youngster Kalpane. Right arm over the wicket balls. Samir looking for the improvisation, and wicket keeper Musba, and just a presence of mind. Seeing that Samir is out of the crease, he complete the formalities by making a stump out here. And wicket is gone here, and it's 40 for the loss of 3 wickets. Good innings there from Samir. One is responsible for the partnership with Praveen. One stage they were really struggling to get runs on the board. One stage they're 8 for the loss of 2 wickets in 2 overs. Then 16 for 2. Afterwards they are really anchored the innings. Both the batters are played very good innings for the team. So Sandeep is a new batter in. Ashraf to continue. Lovely delivery. Again, faster one, quicker one, outside the line of off stump. Sandeep wanted to drive the ball, and no chance at all for any run. Ashraf again with a short run up from the far end. Right arm over the wicket. This time bowler's back dry. Chance of cotton ball, and might be little bit tougher one for the bowler Ashraf to take the cotton ball. But anyhow, the batter picked up a single here. With that single, Skubber Namuzan to 41 on the board. Ashraf bowling from the far end. Right arm over the wicket. Lovely shot. Driven that one firmly. Fumble from the fielder, and just inside the boundary they managed to collect the ball, and they completed 2 valuable runs. With that couple of runs, Skubber Namuzan to 43 on the board. In the last over is in progress. Rashid is the batter. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಗಲ್ ದೇರ್.
And with that single, scoreboard now moves on to 44-4. The last delivery remaining of the innings of youngster Kalpane. They got a good score on the board, 44. Asha Boss. This time again looking for a big drive. Off stop by the fielder. They're coming back for the second opportunity of run out. Musba will going to complete that formalities of making run out. Just a single run out taken place in the last delivery of the over. After completion of over number 6, it's a 45 and 46 is going to be a target for team MPark Challengers. Now it's a time to welcome, yes, Rupesh of Hanuman Cricketers. Ganesh will go and welcome him with the flower for this LCC Cup 2023. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ UFC ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬುಲಾ ಇವರಿಗೆ ಸೌಕತ್ ಅವರು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬುಲ್ಲಾ ಫಾರ್ LCC ಕಪ್ 2023. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Welcome back, and yes, 46, which is a target for team MFAC Warriors. The first ball tried to push the ball between cow point and second ball led correction, and bowler bowls it outside and off and himself on his follow through fields the ball, and there is no chance at all for any run. Rashid again. Balls Tata Mendes over, nicely place it down to deep cow point region for a single. Score now moves on to 4 on the board for the loss of without loss of any wicket. The 4 on the board. Rashid back to his bowling mark. Long on, long off, mid wicket, deep square leg, deep cover point. The fielders in the deep. Rashid again. Right up over the wicket, drives at one, straight to the hands of long off. So even Arif changed his bat, but unfortunately, the very next delivery what he faced, he couldn't manage to get the placement right as he played officially down to deep extra cover. Deeper long off in fact, wideish, and he's back into pavilion. And the scoreboard are now stationed at 4 for the loss of 1 wicket. So new batter in, just in number 10. Ibrahim, one who bowled very well for his team, and he will go into bat now. Rashid again, successful bowler, got a wicket. This time nicely plays it down to deep cow point region for a single. And Ibrahim is off the mark after completion of over number, let me correction, last ball remaining. Rashid again. Again, a lovely delivery. Wanted to tap that ball on the offside region. So first over completed. Completion of first over. It's 5 for the loss of 1 wicket. And straight away umpire Roland Pinto asking Ibrahim to change the batch. The 41, which is a run required now. 41 required in 5 overs. 30 ball, 41 required for the victory. Suresh Mudabidri is in action. Suresh Mudabidri, one of the best all-rounder, I want to say, during 90s, 80s even. First ball outside line after beautifully ball, perfect line. That is a line which is really good one for the right-hand batter.
pitching in a line which is outside the line of off stump and just going away from the right-hander batsman. And there is no chance at all for Indian. This time Suresh balls lofted at one in the gap, one bounce into the it's the fielder is done a great job to stop the boundary here. Just a couple of runs. Good work. Very good work there from the fielder. Never looks like the above 40 players are playing here, above 45 playing here. Perfect example sometime we can see from the legends, even in this age. They are absolutely 100%. Again, one for the reverse sweep, missed it completely. One more dotted delivery. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಕೇಟ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. Does damage given him a flam in front of wicket. Suresh Muda with the strikes. Leg spinner bowls, perfect leg spin for another leg spin bowler. And Ibrahim is a leg spinner and he couldn't manage to judge. Now it's a time to welcome one more legend player, none other than, of course, one who got a first century, Sridharanna of Vijayalakshmi Cricketers, the first century of this Urva cricket ground. Sridhar of Vijayalakshmi Cricketers. And always this name will come first when you are getting names like a legend player. He is a one legend player. Not only he performed well, but I think he taken his team Vijayalakshmi Cricket into highest level during 90s and 2000. Till now, his Vijayalakshmi Cricketers are performing, representing. Now, Karunakar is one more legend player of Gori Young Boys, and one more legend player, and of course. Suraj, Dheeraj and Neeraj, three brothers out of that. Dheeraj, the one more very good all-rounder who is welcoming him, welcoming Karunakar for this cricket tournament. One more single has been taken here, 8 on the board without loss, with 8 for the loss of 2 wicket. Salim nicely plays it down to deep long on for an easy single. With that single score, now moves on to 9 on the board for the loss of 2 wicket. 2 overs gone. 9 for the loss of 2 wicket, and now 4 overs remaining. 24 deliveries remaining. They need to get another 38 runs required. 37 out. 37 required. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೂರಜ್ ಇವರಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡರ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸೂರಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. So Praveen, one more classical bowler will go into bowl the first delivery of his first over and third over of the innings of Empower. First ball and bowler's back line, no chance of any run. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನರೇಶ್ ಇವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So this time it's going to be magnificent. Looks like the fielder will go to take the catch, but ball just defeating that fielder. The Suresh down at a deep, the wideish long on, tried for the catch but fails to collect the catch. And yes, Salim just breaking the shackle in the right time. So 15 for the loss of 2 wicket. Excellent cricketing stroke there from Salim.
Praveen again. This time it's going to be one more. Looks like yes, it does, and dropped by the fielder. Now umpire Roland Pinto raising his two hands to signal the 6 here. Looks like the long on and long off fielder. Slight a bit of confusion between that two fielder. But ball just missing the trying hands of that fielder. Back to back 2 sixes. And scoreboard now jumps into 21 now. The match is now widely open. And Salim absolutely is taking his team into right track now to win this match. Praveen bows. Again coming down the track, using his feet. But not more than a single this time. With that single, scoreboard now moves on to 22. Lead correction, 22. Another 24 more runs required for the victory. 20 balls remaining. One more lovely shooting drive. Beautiful placement here from the batter, Abdul Hayaz. He's joining the party. Praveen is becoming a very expensive. Praveen is getting some punishment, bowled some short pitch deliveries. It's 26 now on the board for the loss of 2 wickets. Oh, lovely delivery. Wicketkeeper this time fails to collect the ball. Fumble and no signal means it's inside edge of the bat. One more over completed. Expensive over completed after completion of over number 3. This is a comeback over for team Empower. Absolutely, they're powering some powerful cricketing stroke in the previous over, and they got some runs. Now 18 balls remaining, 19 runs required for Empower to win this match. Empark led the correction. It's not Empower. Empark. Empark Warriors. So meanwhile, so many dignitaries out here in Urva cricket ground and watching cricket tournament, but outside the India, and I think the live telecast is on from Mangalore Media, and Shrikant of Vijay Lakshmi Cricketers, one more legend player and one of the supporter of this LCC Cup, is enjoying watching this live telecast of LCC Cup 2023. Of course, we might be missing the opportunity here to come and perform. Oh, lovely delivery, beautiful leg cutter, and absolutely right one there from Vasant to ball that very good leg cutter, defeating Abdul Ayaz's bat. Vasant balls this time straight to the hands of fielder and mix up. That's the one player we're talking about. The fielder at short mid by Kusafa is more than 60 years. You need to appreciate him. Oh, lovely leg cutter. What a lovely delivery. So this is turning out to be a great over so far. 3 dotted delivery. Pressure is on. Still 19 to get from 15 balls. So this time cuts that one very nicely. Down to backward point region. They're coming back for the second. In comes a throw, but it's not good enough. Couple of runs has been taken then, and the scoreboard now moves on to 29. 29 on the board. Vasant. Beautifully driven off the back foot. Abdul Ayaz. They're coming back for the second now. Now slowly Abdul Ayaz getting some runs in this over, even though he played some dotted deliveries, 3 dotted deliveries, and back-to-back couple of runs. 31. 15 required. 13 ball remaining. It's going to be a wide. Absolutely right. Umpire Mohane Yadi. No hesitation to call that little margin for error. Ali Nana Chimiga, ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So Vijay Lakshmi Cricketers and Goryang boys, Karna and Dheeraj. This time he lofted and he got placement is magnificent from Ayaz. What a great shot. The boundary comes up and will going to release the pressure straight away from the batter.
And with that boundary, scoreboard numbers on to 36. That means 10 runs required from last 2 overs for Team MPark Warriors. The next match, the toss which is on by captain of Gori Young Boys and elected to field first against Vijay Lakshmi Cricketers. So 10 required from 2 overs. So right arm. Oh, outside edge of the bat. Opportunity of catch there, but the ball shooting off, falling short of the fielder. 9 required from 12 balls. This is going to be very crucial over. Youngster Kalpana have to restrict the runs, and some ball. Oh my goodness! I thought ball hit the stump. No, ball misses the stumps. The wicket keeper again fails to collect the ball. By call by umpire. The wicket keeper not really able to collect the ball. Might be that'll be there. That some disturbance for the wicket keeper might be the extra bounce, and after ball hitting Reaper. Improvisation, good fielding there by the fielder, just a single. So with that single, score moves on to 39. That means 7 required for the victory. The hero Abdul Ayaz absolutely played a good innings for his team. Nicely driven right in the gap. Good collection from the fielder at the deep. And just a single there. With that single, score moves on to 40 on the board. 40 means 6 required for the victory from 8 deliveries. Sandeep. This time. And given him absolutely flum. He tried to play across the line. And Sandeep strikes here for youngster Kalpana. Can it going to be an opportunity for them to back in the game? Because what a great innings played there by Salim. He's the one really takes the match away from the opposition by hitting 2 sixes from his bat. Scored 17 valuable runs for his team. And is back into pavilion. Nuruddin is a new batter in. Sandeep to ball. Beautiful shot. And delicately played there by the batter Nuruddin straight away without any pressure. And he just plays it quite nicely down to long off. So that's the end of over number 5. Last over remaining. 5 runs required from last 6 balls for team team MPark to win this match. It's going to be very interesting.
Vasant has got a responsibility of restricting 5 runs in the last over. Nuruddin is on strike. Abdul Ayaz is in non-striker zone. It's going to be very interesting because in the 80s and 90s, even most of the matches we can see the bowlers got the ability of restricting the runs. If it is a 5 to get, 4 to get, 3 to get, you will get a lot of examples that the bowlers restrict the runs. And wait and see how well Vasant will go into restrict here. Empire, in fact, doesn't want to lose this match. First ball, ball just going down. That's why umpire no hesitation to call that leg by, rightly so. And 4 required from 5 balls. Now Abdul Ayaz, one more the batter who is really played a good innings for his team so far, but job which is not yet over. 4 to get from 5 balls. Right arm over the wicket delivers. Oh, magnificently bowled. Just like I mentioned, he played a good innings, but job which is not yet over. Job which is not yet over. That ball really doing a fantastic line, which is a line which is really missing him, isn't it? Have a look at that one. He thought it might be an off cutter, but I don't think it's going to be any off cutter in that ball. It's a slight leg cutter, a different one there from Vasant. Beautifully bowled. 4 required from 4 balls. So in this situation, I think you won't get better player than Musbah, who is just walking towards the middle, a lot of experience behind him. And he's a good cricketer, clever cricketer, and busy customer. And wait and see how Musbah will going to handle the pressure. 4 balls and 4 runs required for the victory. Takes the press guard from umpire. The 4 balls which is going to be very crucial here for both the teams. And here is Vasant. Balls. Oh, that was a good thinking. Absolutely good thinking in the bowler's point of view. Musbah changing his position before the bowler going to deliver the ball. And becomes a left-hander. And the bowler balls outside the line of leg stump. Good thinking. Now pressure is on. 4 to get. 3 balls remaining. Now slight a bit of change in the field. Not a change in the field, but change in the fielder in fact. Kusafa, the senior most player, coming into the mid-on. And at the fielder, Praveen going into the mid-wicket region. What a match. Absolutely fantastic match is gone. 4 to get. 3 balls remaining. One more dotted delivery. Wicketkeeper fumbled. Chance of run out. And is gone. 2 balls, 4 runs required for the victory. This is what I'm talking about. The cricket all about the 90s and 2080s. I've already mentioned you will get a lot of examples. The bowlers never looks like they lost the confidence at any stage. The Vasant, I'd already mentioned that he's got a potential ability, can restrict the runs. And now all up to this man, Nuruddin. And how well you're going to handle the pressure of getting 4 runs in 2 deliveries. The Musbah making this target a little bit tougher after playing 2 dotted deliveries. But a good news here for M Park is that Nuruddin back on strike. So what I'm saying, what a match we are witnessing. The previous match also absolutely fantastic match. Now this is going to be nail batting finish. 4 to get from 2. Vasant still is on fire. Deep square leg. There is a fielder at deep mid wicket. There is a long on, long off. The cow point, which is not in a deep, but almost in the middle of that unorthodox field set. Short third man, the cow point, and silly mid off. Here is the next one. Balls. It's going to be a wide. 1+1. Looks to be chance of run out, but umpire says not out. Third umpire. No. Yes, umpire Mohan Ayadi asking for third umpire to give the decision here.
So once umpire called for the third umpire, then umpire, yes, for the run out. If it is run completed, then 2 runs will be considered. And if 2 runs considered, then of course 2 runs required from 2 balls. The things little bit becomes favorable for chasing team. Now all up to the third umpire to see. So not out, which is a call from umpire. So 2 to get from 2 balls. Hello, hello. So 2 to get from 2 balls. Here you go. What chance of catch there? And Praveen takes the catch. Now, tie is slowly turning out. It's going to be anybody's game. 2 required from 1 ball. What a match you are witnessing. 2 required from 1 ball. And most interesting to see that the new batter will going to take the strike. Now, if the match will going to end it in a tie, then winner will going to decided by toss. Absolutely good match, isn't it? So last ball, 2 runs required for the victory. The new batter, all the responsibility. Will it going to be Vasant? Can he become the hero here? Can Ashraf become the hero for Mpak? Wait and see. 1 for tie, 2 for win. Absolutely fantastic match. Now, decider delivery. Right arm over the wicket, bounce. Misses it, wicket keeper. Where he turns the ball, and Vasant, what a fantastic performance from him. It's a dramatical victory for youngster Kalpane. Nowhere near the victory at one stage, but Vasant is really doing a magic in the last over. Absolutely unbelievable victory of our team. Youngster Kalpane, congratulations and hard luck team. Mpak are really, they are in the game. Last moment, they are just throwing a match for their opposition. Excellent performance there from Vasant.
Right, the first ball of the match. The match, one more match is now going to start between two top-seeded teams. Vijay Lakshmi and Gori Young Boys. Gori Young Boys, after won the toss, they elected to field first, and first ball bowled by Suraj. Once again, second ball of his first over is now coming up. दूसरी गेंद लेकर तैयार. बेहतर गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर रन्स इस बीच नहीं मिलेगा. तो इस बार रिवर्स शॉट, मौका सतीश के लिए अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद उनसे कोसों दूर और बल्लेबाज के पास मौका था एक रन न प्राप्त करने का. और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और सुधीर अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. ऐसा कहना पड़ेगा कुछ खास हद तक नियंत्रण नहीं रख पाए तो स्ट्रोक पर, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई. और सूरज एक बार फिर से तैयार, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर नरेश सामना करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, वाइड इस लॉन्ग ऑन पर फील्डर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. सूरज दाहिने हाथ ओवर द विकेट ड्राइव किया, फुल रन गेंद थी और गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर जब तक फीड किया जाता 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और इस बीच सूरज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार क्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफसाइड, स्क्वायर ऑफ द विकेट. एक रन मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज स्ट्राइक करने पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी धीमा. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. थोड़ी सी मिसफील्ड डीप कवर पॉइंट फील्डर द्वारा होते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर. 6 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर फॉर विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स. बिना किसी नुकसान के विजय लक्ष्मी और गोरी यंग बॉयज एक वक्त के काफ़ी प्रसिद्ध टीम है, खासकर 80वें 90वें दशक में उन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट पर अपना हक चलाया था. 2 टॉप सीडेड टीम गतकाल के वैभव को अनावरण करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं लेजेंड्स क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत. और उनके उस दौर के खिलाड़ी इस वक्त अपना हुनर दिखाने के लिए इस मैदान पर भिड़ते हुए इस मैच में. और जहाँ तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुधीर. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ. 6 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे. ये जो कि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर खत्म हो चुका है, दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ. तो धनराज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए सुधीर. तो ओवर की पहली गेंद लेकर धनराज सुधीर के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को हल्के से टैप कर दिया. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर के हाथों से गेंद चूकी. इस वक्त बल्लेबाज के लिए दूसरा रन लेने का मौका जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में जैसे देखे कि विकेट कीपर बहुत ही तेजी तरीके से गेंद को रिकवर होते हुए गेंद को फील्ड कर चुके हैं. अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया. 1 रन के साथ संतुष्ट. और धनराज एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. सुधीर और नरेश एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स को. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा अपील, लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो 8 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. धनराज फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट. इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट. इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड. बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त.
पहले भाप लिया था गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो है काफी पीछे तैनात था, शायद करना के लिए मौका था, वो गेंद तक पहुंच सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इंतजार किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो मेलविन फील्डर थे उनका, और आखिरकार जब तक वो दौड़ कर आकर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और तो 2 रन इस बीच मिल चुका है, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, शायद सीमा रेखा के अंदर गेंद को जब तक रोका जाता, और बल्लेबाज के पास मौका 3 रन प्राप्त करने का। He just played that one with a reverse shot at the last moment, finds the gap as well. सो यहाँ पर गली पर फील्डर मौजूद थे सतीश, जिन्होंने डाइविंग एफर्ट लगाया, और खासकर गली और कवर पॉइंट के दरमियान अपने दिनों में सतीश एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षक के रूप में जाने जाते थे, और यहाँ पर 3 रन बटोरने में सफल बल्लेबाज। और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद जमीन के सारे ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed, 14 on the board, yet to lose any wicket. And Vijay Lakshmi Cricket has made a pretty good start after being losing the toss and put it to bat by Gori Young Boys in the match number 6 of this prestigious cricket tournament, Legend Cricket League 2023. The day number 1 is now progressing. Yes, still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल बाकी, और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा इस श्रृंखला का। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई। गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए गेंदबाज करना इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, और तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स की पारी में। और कुल मिलाकर पिछला ओवर बेहतर रहा, जिसमें 7 रन बने, पहले ओवर में 8 रन बने, पहले ओवर में 6 रन बने थे, दूसरे ओवर में 8 रन बने, और 2 ओवर के बाद एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स, 14 रन बिना किसी नुकसान के। It's 14 without loss in the over number after the completion of 2 overs. Third over starts करना is now brought into the attack, और सामना इस वक्त करते हुए नरेश, और तीसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। शाम का वक्त लगभग 4 इस वक्त बज चुके हैं, 4:03 इस वक्त बज चुके हैं, और धूप का प्रकोप हालांकि काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद मैदान पर। और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर फील्ड कर ली गई है इस वक्त, और तीसरे रन के लिए बल्लेबाज यहाँ पर दौड़ पड़े। लगभग फुटबॉल के तौर पर गेंद को उन्होंने ढकेला था अंतिम क्षण में, और भाग्यशाली रहे फील्डर की गेंद सीमा रेखा को पार नहीं करी, सीमा रेखा के अंदर दोबारा दूसरे फील्डर द्वारा फील्ड की जाती। बल्लेबाज के पास मौका 3 रन प्राप्त करने का। 17 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर फॉर विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो सुधीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार करना, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, अंतिम क्षण में पूरी तरह सफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करने के बाद, लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो करना फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा। द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 18 now with that single. Slowly and steadily this partnership is now building up for Vijay Lakshmi Cricketers. और फिर से एक बार करना गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार this time he lofted that one. Just we have to wait and see, and this time it cleared the fence. It's a huge one. The ball sticking to the wall of commentator box stand, and absolutely fantastic struck came from the bat of Naresh. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से गेंद को भेज दिया। गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के दीवार पर टकराती हुई 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त नरेश के द्वारा। यह गेंद बॉल्ड आउट। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक फ्रॉम करना। ऑफ कटर गेंद, परिवर्तन के तौर पर गेंद नीची रहती हुई उसी तरह का स्ट्रोक लगाना चाहा, लेकिन इस बार गेंद काफी नीची रहती है और सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ
ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೋರ್ಗೇಟ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮಾಗಿಷ್ಟ ಅಂತಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸರ್. तो इस बीच बैक टू दिस गेम we are just waiting for the number 3 batsman. दाऊद इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜನ್ ಭಾಯ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. तो इस वक्त अदे रीति तो इस वक्त 24 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, फाइन निकल चुकी है डिफ्लेक्ट होते हुए और गेंद जब तक डीप फाइन लेग सीमा रेखा के अंदर फील्ड की जाए 1 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. कपल ऑफ रन्स he's got a bat on that और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 26 रनों पर. 26 for the loss of 1 wicket. 3 overs had been bowled. 8.66 the present run rate is now progressing here for them. 26 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರಾದ ಶೌಕತ್ ರವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. तो ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಂಘಟಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಹಾರ್ಟಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಸರ್. तो 4th ओवर स्टार्ट्स और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मेलविन और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुधीर. ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट मेलविन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 26 रन एक विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. फिर से एक बार मेलविन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, एक बार फिर से चूके. बेहतरीन गेंदबाजी, 2 लगातार बेहतर गेंदें नवीन फेंक चुके हैं ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर और बल्लेबाज को इस वक्त रन बनाने का कोई अवसर उन्होंने प्रदान नहीं किया है. पहले 2 गेंदों में अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मेलविन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुधीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मेलविन ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर मौजूद, चंद टिप्पों बाद जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपने छोड़ को बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ. ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರ್ಗನ್ ತಂಡದ ಕರ್ಣರವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್. तो इस बीच गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में. 1 रन का इजाफा, बाई का इशारा. So a bye added to their total and with that single run the scoreboard moving up to 28 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. तो अब तक एक बेहतर ओवर मेलविन का साबित हो चुका है जिसमें सिर्फ 2 रन पहले 4 गेंदों में वो प्रदान कर चुके. अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, 5वीं गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुधीर के लिए और मेलविन सुधीर के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट इज ऑफ स्टंप. बिल्स आर डिस्टर्ब्ड और सुधीर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. गेंद लगभग जमीन के सहारे आई थी और इस गेंद पर करारा प्रहार करना चाहा था. देखिए किस तरीके से हुआ. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एंड द बॉल स्ट्रक टू इज ऑफ स्टंप.
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. So that is the departure of Sudhir for 10 and second wicket gone. Naresh out for 14 in fact. Meantime Sudhir out for 10. 2 wickets lost. Both openers had been back into the pavilion and now it's 28 for the loss of 2 wickets with just 1 ball to go in this over. New batsman Mohan, very experienced campaigner of their side. For Vijay Lakshmi Cricketer, he is now comes out to the middle as a number 4 batsman और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और मेलविन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त करते हुए मोहन के लिए 2 रन सिर्फ अब तक इस ओवर में मेलविन प्रदान कर चुके हैं और कुल मिलाकर एक बेहतर ओवर उनका अब तक साबित हो चुका है. मेलविन इस वक्त मोहन के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद ड्राइव किया. मोहन ने गेंद को इस वक्त सिली मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर. 29 for the loss of 2 wicket. Fantastic over came student from Melvin. Just 3 runs conceded by 4 overs gone and after 4 overs it's 29 for the loss of 2 wickets for Vijay Lakshmi Cricketers. Exactly 7.25 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. Still in overall calculation it's going to be 2 overs left in their innings. Next match will be one more good match. Right after this match is now coming up live and exclusively right in front of you between Morgan Gate versus Young Friends Urva. And the players of Morgan Gate cricketers already finished their signature procedure and because of that I request some of the players of Young Friends Urva remaining to sign here. And because of that I request the remaining players of Young Friends Urva please to be reported here for the signature. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಜೀತು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಶೌಕತ್ ರವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್. हर्टली वेलकम टू यू सर. तो यहाँ पर घटानुघटी खिलाड़ियों का समागम हो रहा है. गतकाल के घटानुघटी खिलाड़ियों का समागम यहाँ पर होता हुआ इस लेजेंड क्रिकेट कप 2023 के दरमियान और ऐसा कहना पड़ेगा एक फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं त्योहार भरा माहौल इस मैदान पर छा चुका है खासकर इस कमेंटेटर बॉक्स में. इस बार गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े मोहन काफी तेज और 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. फील्डर काफी पीछे तैनात है. चंद टिप्पों बाद गेंद का उन्होंने इंतजार किया लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सूरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मोहन के लिए यह गेंद स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. उछाला था जरूर मोहन ने लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ अपने आगे की ओर ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. आसानी के साथ एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ यहां पर मोहन की पारी पर पर्दा गिर चुका है. 31 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है. इट्स 31 for 3 नाउ. So 10 balls remaining in overall calculation in their innings. 10 गेंदें अभी भी बाकी और नंबर 23 की जर्सी इस वक्त पहने हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ एज ए नंबर 6 बैट्समैन फॉर विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और सूरज की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त तो तैयार होंगे. अबू बकर नंबर 6 बल्लेबाज नंबर 23 की जर्सी पहने हुए इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार सूरज की गेंदों का और सूरज यह गेंद इस बार हवे में लेकिन फील्डर काफी स्क्वायर तैनात. 2 रन यहां पर मिलेंगे और 2 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. तो इस वक्त सूरज कुछ कहते हुए वहां पर कवर पॉइंट के खिलाड़ी को वहां पर उन्होंने कुछ हद तक चुस्ती नहीं बरखी थी तो इस वजह से दूसरा रन बल्लेबाज को लेने का मौका यहां पर मिला और सूरज कुछ हद तक नाखुश दिखाई देते हुए असंतुष्ट दिखाई देते हुए कुछ कहा उन्होंने कवर पॉइंट फील्डर से.
तेजी पर रखने के लिए, और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ सूरज फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्ट्राइक ऑफ द ग्राउंड, गेंद को उछाला है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ पर, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछाला जरूर था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, और यहां पर देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से देखिए गेंद को उछाला था और लॉन्ग ऑफ पर गेंद को लपक लिया गया, कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट इनसाइड द फेंस बाय द फील्डर। One more wicket fallen and the 4th wicket is now backing to pavilion. It's 33 for 4. तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज इस वक्त सूरज तैयार, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन पर, और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 34 रनों पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन मिल चुका है लेग पाई के रूप में। सो 5th ओवर हैज बीन केम्स रन, 35 रन्स ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स लॉस्ट फॉर विजयलक्ष्मी क्रिकेटर्स, एंड नाउ जस्ट लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। और अंतिम 2 ओवर में बेहतर कमबैक कर चुके हैं गोरियंग बॉयज के गेंदबाज, सिर्फ 9 रन उन्होंने प्रदान किए अंतिम 2 ओवर में, और अंतिम ओवर का खेल जो कि बाकी है विजयलक्ष्मी क्रिकेटर्स के बारे में, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में विजयलक्ष्मी क्रिकेटर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें पार करना होगा यहाँ पर, अगर एक चुनौती भरा लक्ष्य प्रदान करना है गोरियंग बॉयज के बल्लेबाजों के सामने जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। तो अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज सतीश इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए मेरे लंबे समय के कमेंट्री पार्टनर, और यहां पर अपने भूतकाल अपने क्रिकेटिंग दिनों में बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाज और बेहतरीन कवर फीडर्स के रूप में वो जाने जाते थे, और यहां पर गेंदबाजी के जरिए अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी के जरिए अपने गतकाल के वैभव का अनावरण करने के लिए वो इस वक्त गेंदबाजी पर उतर चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑन पर 6 रनों के लिए, तो छक्के के साथ इस वक्त उनका स्वागत कर चुके हैं बल्लेबाज दाऊद, इस वक्त जिन्होंने छक्का लगाया, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए उछाल दिया लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th एंड लास्ट ओवर इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज सतीश, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है लॉन्ग ऑफ, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये कैच लपकने में सफल, और यहां पर बिल्कुल सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की थी। फुल टॉस के तौर पर गेंद को टॉस किया था, बल्लेबाज को ललचाया था कि उसी तरह का स्ट्रोक खेल सके, लेकिन गेंद कुछ ऊंची आई, बल्ले पर मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं हुई, और टॉप एज पर टकराने के बाद लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिया गया। तो बेहतरीन तरीका यहां पर इस्तेमाल किया सतीश ने विकेट उखाड़ने के लिए, छक्का प्रदान करने के बाद दाऊद की पारी समाप्त, बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका, और 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। इट्स 41 for 5। And now one more good batsman of the 90s and early 2000 decade, Prashant Brax is now comes out to the middle for Vijay Lakshmi cricketers, और इस बीच इस बार बेहतर गेंद थी, पहली गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके प्रशांत ब्रैक्स, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक वक्त के जाने माने खिलाड़ी जाने जाते थे विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स की ओर से, प्रशांत ब्रैक्स इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट सतीश, इस वक्त ये गेंद प्रशांत के लिए स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई अंतिम क्षण में, और 1 रन लेग बाय के रूप में बल्लेबाज यहां पर दौड़कर पूर्ण कर चुके। स्वीप करने के प्रयास में चुके थे प्रशांत, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर, 42 नाउ।
And just a couple of balls now remaining in their innings. Satish, अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, फील्डर काफी पीछे, लॉन्ग ऑन पर तैनात, 1 रन मिलेगा और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और प्रशांत वहीं पर खड़े रहे, वहां पर दूसरी रन की कोई संभावनीयता ही नहीं थी और आसान सा रन आउट इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ. 43 नाउ, जस्ट लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. अंतिम गेंद बाकी अब उनकी पारी में. तो अंतिम गेंद इस वक्त बाकी और सतीश गेंदबाजी करेंगे इस वक्त प्रशांत ब्रैक्स को, उनकी पारी की अंतिम गेंद. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. सतीश टू प्रशांत ब्रैक्स, फुल टॉस, लेकिन इस फुल टॉस गेंद का फायदा उठाने में असफल और आखिरकार बल्लेबाज को मिले सिर्फ 1 रन बाई के रूप में. आसान सा मौका स्ट्रोक लगाने का इस वक्त गंवाते हुए प्रशांत ब्रैक्स और 1 रन के साथ द इनिंग्स इज अप. दे फिनिश विद 44 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs for Vijay Lakshmi cricketers, and now the target for Gauri Young Boys is 45. Exactly 7.5 runs per over they have to score for victory. 45 in 6 overs, that means in their stipulated 30-60 levels they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can the batsmen of Gauri Young Boys will reach the target or not. 45 in 6 overs they have to score for victory. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद मेरे साथ यानी गोपी के साथ जब यहाँ पर गौरी यंग बॉयज की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So 45 the target in 6 hours, and next for the comments for the first time in this tournament, I'd like to invite my one more dearest friend, Mr. Shaukat. Please come, Shaukat. Thank you. Dhanyavad. Thank you, Mr. Gopi. Target on 45 in 6 over, 36 ball, 45 runs required. आयनाथ बेग बैट्समैन बेग बेग पोले टाइम ಯಾವ ಜಂಗಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೋರಿ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆ so 36 36 ball remaining and 45 run to required and 10 wicket in hand. 10 विकेट गोरी यंग बॉयज के हाथों पर और 36 गेंदे बजे और 45 रन इस मैच को जीतने के लिए काफी रोमांचकारी मैच यहाँ पर चल रहा है विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स और गोरी यंग बॉयज के बीच.
फिलहाल तो बॉलिंग पर धीरज को यहाँ पर बुलाया गया। उसी तरह बल्लेबाज अशोक और लोकेश, जैसे कि अच्छे बल्लेबाज का रूप पर माने जाते हैं लोकेश और अशोक। और स्ट्राइकर पर है अशोक, नॉन स्ट्राइकर पर है और लोकेश, और बॉलिंग पर है धीरज को यहाँ पर बुलाया गया। सभी फील्डर को सजावट करते हुए, हवा भी काफी तेज यहाँ पर नहीं है और बल्लेबाज को कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पर छक्का या चौका मारने में। काफी लक्ष्य काफी दूर और लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं या नहीं, फिलहाल तो देखना पड़ेगा। गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज, फिलहाल तो अंपायर रोलन पिंटो का हाथ उठा और इशारा देते हुए मैच का। बॉलिंग पर धीरज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से पार करते दूर वाली चोट से। धीरज तैयार, राइट आर्म ओवर द, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, बॉल कट होने के बाद में सीधी कीपर के हाथों पर गई। रन नहीं वहां पर, एक रन रुका हुआ बिना कोई विकेट नुकसान पर। पहला ओवर की पहला गेंद काफी अच्छी रही यहाँ पर धीरज की। फिर एक बार बेहतरीन गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, सीधी गेंद फील्डर के हाथों पर, प्रशांत ब्रैक्स के हाथों पर जाते हुए कुछ मिस फील्डिंग जरूर हुई वहां पर। फिलहाल तो एक रन लेने में कामयाब। इन एक रन की मदद से रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे एक बिना कोई विकेट नुकसान पर। लोकेश और अशोक तैयार, फिर एक बार बॉल में फिर एक बार रिवर्स मारना चाले के बर्रे पर पूरी तरह से बल्ले के बारी किनारा कर गई शायद, और एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। इन एक रन के साथ रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे 45 रन का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए 10 विकेट गोरी यंग बॉयज के हाथों पर। फिलहाल तो बॉलिंग पर धीरज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से पार करते हुए दूर वाली चौक से। फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई सीधी धीरज के हाथों पर, वहां पर मिस फील्डिंग जरूर हुई, एक रन लेने में कामयाब। रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे 3 बिना कोई विकेट नुकसान। फिर एक बार बॉलिंग पर धीरज तैयार, पेविलियन एंड से दूर वाली से बॉलिंग मारता धीरज की गेंद कब से साफी भारती और अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त पर 1। कुल मिलाकर रन बढ़ता हुआ यहाँ पर 2 रन मिले बल्लेबाज को। इन 2 रन की मदद से रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे 5 बिना कोई विकेट नुकसान पर। लक्ष्य काफी दूर नहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज अशोक और लोकेश तैयार। धीरज की गेंद, फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई ऊंचाई हवाई पर और वहां पर फील्डर मौजूद जरूर है। बेहतरीन फील्डिंग वहां फील्डर द्वारा, वहां पर 1 रन या छक्का मिलना चाहिए था, लेकिन 2 रन से संकुच यहाँ पर। बेहतरीन स्ट्रोक्स था अशोक द्वारा। अंपायर का इशारा वहां पर देखना पड़ा, कुछ तकरार जरूर वहां पर। अंपायर का इशारा यहाँ पर, फिलहाल तो क्या होने वाला है, अंपायर का इशारा 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक्स अशोक द्वारा, रन बढ़ता हुआ कुल मिलाकर इन 4 रन के मदद से 9 रन बन चुके यहाँ पर, 9 बिना कोई विकेट नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर जारी, पहला ओवर लेकर आ रहे धीरज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट अशोक के लिए। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई सीधी स्ट्राइक लॉन्ग ऑन पर, वहां पर कोई फील्डर मौजूद है या नहीं, फिलहाल तो देखने में 4 रन। फिर एक बार 4 रन, 2 गेंदे 2 चौका, लगातार 2 गेंद पर 2 चौका अशोक के बल्ले पर। बेहतरीन बल्लेबाज करते हुए अशोक। ओवर की समाप्त, पहला ओवर समाप्ति पर रन बढ़ता हुआ 13 बिना कोई विकेट नुकसान पर। हालांकि जो मैच यहां पर आयोजित किया एलसीसी लेजेंड कप 2023, जो दूसरा श्रृंखला, जैसे कि जो मैच यहां पर चल रहा है गोरी यंग बॉयज और विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स, क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर चल रहा है विजय लक्ष्मी और गोरी यंग बॉयज। मैं इसी तरह अंपायर से निवेदन को ये मैच जल्द से जल्द खेला जा रहा है। हालांकि समय का हवा यहाँ पर बीता जा रहा है, जैसे कि काफी अभी भी 2-3 मैच यहाँ पर बाकी है। फिलहाल तो बॉलिंग पर नागेश को यहाँ पर बुला गया, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से पार करते हुए। बल्लेबाज है लोकेश और स्ट्राइकर पर लोकेश, नॉन स्ट्राइकर पर है अशोक और बॉलिंग पर नागेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से दूर वाली चोट से बेहतरीन गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई सीधी फील्डर के हाथों पर 1 रन लेने में कामयाब। रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे 14, 14 लॉस ऑफ विदाउट विकेट। बॉलिंग पर है नागेश तैयार, दूसरी ओवर लेकर आ रहे, दूसरी ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर आ रहे नागेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से बाहर। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, इसको मारना चाह अशोक, लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से नहीं, सीधी बल्ले की बाहरी किनारा लग कर गई गेंद और वहां पर 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। इन 1 रन की मदद से रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे 15 लॉस ऑफ
विदाउट विकेट। 15 रन यहाँ पर बन चुके हैं बिना कोई विकेट नुकसान पर। बॉलिंग पर नागेश तैयार, फिर एक बार रिवर्स महाराजा और एक क्लीन बोल्ड। लोकेश की पारी समाप्त। बेहतरीन गेंदबाज नागेश द्वारा पहला विकेट का पतन। लोकेश आउट होकर पेवेलियन से जा रहे हैं फिलहाल। तो 15 रन पर पहला विकेट यहाँ पर गोरी यंग बॉयज की। पंद्रह रन पर पहला विकेट का पतन यहाँ पर गोरी यंग बॉयज का। फिलहाल तो लक्ष्य काफी दूर नहीं है, लक्ष्य का पीछा करते हुए गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज। उसी तरह बल्लेबाज को रोकना यहाँ पर जरूरी है विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स को, क्योंकि अगर बल्लेबाज के यहाँ पर विकेट यहाँ पर हासिल किए तो शायद मैच का नक्शा बदल सकता है और मैच रोमांचकारी पर यहाँ पर पहुंच सकता है। फिलहाल तो काफी धूप भी छाई हुई है और हवा भी काफ़ी तेज़ नहीं है, हवा भी कम दिखाई दे रहा है। उसी तरह यहाँ पर 500 से 1000 से भी ज़्यादा प्रदर्शक इस मैच का मुजाहरा लेते हुए और यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर मैंगलोर मीडिया यहाँ पर रखा गया। उसी तरह यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर मैच देख सकते हैं यूट्यूब पर। फिर एक बार बेहतरीन गेंद तबाह खाने के बाद सीधी अबू बकर के हाथों पर। बेहतरीन गेंद वहाँ पर नागेश द्वारा। 4 गेंदें लगातार गेंदबाज नागेश बेहतरीन करते हुए। फिर एक बार नागेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर से पार करते हुए शरद। फिर एक बार बेहतरीन गेंद और एक क्लीन बोल्ड। दूसरा विकेट का पतन और दूसरा विकेट यहां पर नागेश को। शरद की बारी समाप्त। लक्ष्य काफी दूर नहीं है, लक्ष्य काफी नजदीक था, फिर लक्ष्य का पीछा करना जरूरी है। और उसी तरह विजय लक्ष्मी के गेंदबाज हर लक्ष्य को यहां पर नाकामयाब करते हुए और दूसरा विकेट यहां पर नागेश ने हासिल किया। फिलहाल तो स्कोर वहीं पर, रन वहीं पर रुका हुआ 15, 2 विकेट नुकसान पर। और यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं रोहन मोंतेरो, उसी तरह तुलस, उसी तरह डोनाल्ड और सुरेश भट्ट यहाँ पर सब लोग यहाँ पर मौजूद है और मैच का मुजाहरा ले रहे। और नंदन कुलशेखर जो गोरी यंग बॉयज के फैन है वो मैच का मुजाहरा लेते हुए। फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन गेंद पर बिल्डर मौजूद और बेहतरीन बिल्डिंग पर प्रशांत द्वारा। ब्रैक्स काफी नाम कमा चुके हैं, ब्रैक्स जैसे कि काफी सालों से खेल रहे प्रशांत बैक्स। फिर एक बार बेहतरीन ओवर समाप्त यहाँ पर। 2 ओवर समाप्ति पर रन बढ़ता हुआ 15, 2 विकेट नुकसान पर। लक्ष्य काफी दूर नहीं है, लक्ष्य का पीछा करते हुए गोरी यंग बॉयज का खिलाड़ी अशोक जब तक क्रीज पर मौजूद है तब तक क्रिकेट बारे में कहा नहीं सकता, क्योंकि अशोक एक अच्छे बल्लेबाज है। फिलहाल तो देखना पड़ेगा इस रन के पीछा यहाँ पर करते या नहीं। फिर एक बार मैं अंपायर से निवेदन को मैच को जल्द से जल्द खेला जाए, हालांकि समय का अभाव यहाँ पर बीता जा रहा है। फिलहाल तो मैं अंपायर रोलन सर से यहाँ पर निवेदन करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द खेला जाए। मैं अंपायर से निवेदन को मैच को जल्द से जल्द खेला जाए, हालांकि समय का अभाव यहाँ पर बीता जाए। फिलहाल तो बॉलिंग पर सादिक को यहाँ पर बुलाया गया और लक्ष्य काफी दूर नहीं है। 45 रन का लक्ष्य, 15 रन बन चुके हैं, अब बचे हैं 35 रन। 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 4 ओवर पर। 24 गेंदे 35 रन और 30 रन चाहिए, क्षमा करता हूँ, 30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदे 30 रन का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। मॉर्गन गेट्स और यंग फ्रेंड्स उरा के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर है टॉस के लिए। मॉर्गन गेट के कप्तान और यंग फ्रेंड्स उरा के कप्तान। फिर एक बार बॉलिंग पर साथ दिखता है, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार ऑफसाइड से काफी बाहर थी और अंपायर का इशारा वाइड। आखिरी पर 16 रन यहाँ पर बन चुके। अब बचे हैं 29 रन चाहिए इस मैच को जीतने। काफी रोमांचकारी मैच। हमारे साथ कमेंटेटर यहाँ पर गोपी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल तो बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई ऊंचाई हवाई, वहां पर फील्डर मौजूद या नहीं। इसी के साथ अशोक की बारी समाप्त।
तीसरा विकेट का पतन, तीसरा विकेट का पतन। अशोक लगातार मारना चाहते थे लेकिन लॉगन पर फील्डर मौजूद थे और कैच को लपका और अशोक की बारी समाप्त। यहाँ पर तीसरा विकेट का पतन गोरी यंग बॉयज की। लक्ष्य काफी दूर नहीं है, 29 रन का लक्ष्य है, 22 गेंदे बचे। फिलहाल तो देखना पड़े इस मैच को कौन जीता है और कौन हारता है। जो जीता वो सिकंदर जो सेमीफाइनल पर प्रवेश पा चुकेगा। तेवीस गेंदे और 29 रन इस मैच को जीतने के लिए 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ ಗುರಿ ಜಯಗಳಿಸಲು टीम गोरी ತಂಡಕ್ಕೆ। सूरज स्ट्राइकर पर एक जाने माने बल्लेबाज, काफी सालों से मैच खेल रहे और जो उनके बारे में कहने के लिए काफी कुछ बचा है। फिलहाल तो देखना पड़े इस मैच को, जो सूरज इस मैच को जीत के लक्ष्य के ओर ले जाता है नहीं। फिलहाल तो देखना अफसर से काफी बाहर थी और वाइड और अतिरिक्त पर एक। यहाँ पर खराब गेंदे नहीं चाहिए था और खराब गेंदे डालकर यहाँ पर गलती जरूर कर रहे गेंदबाज। फिलहाल तो देखना पड़ेगा लक्ष्य नजदीक सा आता हुआ। 23 गेंदे बचे और 27 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गोरी यंग बॉयज क्रिकेटर्स को। फिर एक बार बॉलिंग आप सादिक तैयार, फिर एक बार 3 स्ट्रोक, गेंद गई थी सीधी कवर्स की दिशा पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 रन और ये 4 रन, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर, इसका पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाया और गेंद गई सीमा के बाद 4 रन। इस 4 रन के मदद से रन बढ़ता हुआ धीरे धीरे मैच धीरे धीरे गोरी यंग बॉयज के ऊपर आता हुआ, क्योंकि मैच नजदीक आता हुआ। 22 गेंदे बचे और 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 22 गेंदे 23 रन लक्ष्य। रोमांचकारी मैच यहाँ पर, काफी रोमांचकारी गोरी यंग बॉयज और विजय लक्ष्मी के बीच। फिर एक बार बेहतरीन गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई सीधी कवर्स पर, वहां पर सुधीर फील्डर मौजूद और 1 रन लेने में कामयाब। इक्कीस गेंदे 22 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग वापस दिखता है, फिर एक बार बेहतरीन गेंद और कलाई के साथ स्ट्रोक्स की सूरज ने। और यहाँ पर हर गेंद पर हर रन लेना जरूरी है, क्योंकि इस मैच को जीतना है तो और सेमीफाइनल पर प्रवेश पाना है तो हर गेंद पर रन चाहिए मैच को जीतने के लिए गोरी यंग बॉयज क्रिकेटर्स को। फिलहाल तो बचे 20 बॉल 21, 20 गेंदे 21 रन इस मैच को जीतने के लिए। काफी रोमांचकारी मैच यहाँ पर। फिर एक बार ऑन से काफी बाहर और अंपायर का हाथ उठा वाइड का इशारा देते हुए, यानी कि अतिरिक्त पर 20 गेंदे बची है और 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और मेरा आगे का कमेंटेटर मैं यहाँ पर गोपी सर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद शौकत जी। तो बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया। और जहां तक का सवाल है इस मैच का, तो मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಮಾರ್ಗನ್ गेट ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 for the loss of 3 wicket, 45 the target, 19 runs. Now they have to score for victory in remaining 19 deliveries. Still the match is now equally balanced. और गेंदबाज इस बीच तैयार था, इन्हें तो ओवर द विकेट हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया। अंतिम एक्शन में गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता प्रशांत ब्रैक्स द्वारा। 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 18 गेंदे 18 रन चाहिए। यंग फ्रेंड्स उर्वा are won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. They elected to field first after won the toss for Young Friends Urwa against Morgan Gate 11 in the next match, and that match is now coming up live exclusively right after this match. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है, तो मैच में इस वक्त संघर्ष जारी है। 18 गेंदे 18 रन बनाने हैं और गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए नागेश तो इस वक्त अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूरज जिस वक्त सामने
सामना करने के लिए तैयार सूरज जूनियर। और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। शाम का वक्त और ऐसा कहना पड़ेगा शाम के 4:40 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का असर जरूर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व भी मौजूद मैदान पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थर्ड मैन की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1, 2 runs now added to their total। और इन दोनों के साथ ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज के लिए समीकरण इस वक्त आसान हो चुका है। अब 18 गेंदें बाकी और 16 रन चाहिए विजय के लिए। और नागेश एक बार फिर से तैयार था, इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में और गेंद इस वक्त थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, लगभग बल्ले का टॉप एज टकराने के बाद गेंद गई इस वक्त फाइन शॉट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से निकली और आखिरकार जब तक वहां पर कोई फील्डर नहीं और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुके। अब 17 गेंदें बाकी और रन्स चाहिए सिर्फ 12 और गेंदबाज इस वक्त तैयार। चिप किया ऑफ द टोज इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंस इनटू द फेंस। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर द बैट्समैन। और इस चौके के साथ अब ऐसा कहना पड़ता इक्वेशन सीम्स टू बी अ लॉट इजियर नाउ फॉर गोरी यंग बॉयज। जस्ट 8 runs रिक्वायर्ड इन 16 balls। पहले 2 गेंदों में 10 रन प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज नागेश और इस ओवर की बदौलत तख्ता काफी हद तक गोरी यंग बॉयज का यहां पर भारी लगता हुआ। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स को वापस ला सकती है। तो इस बीच गेंदबाज नागेश काफी चिंताक्रांत इस वक्त दिखाई देते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है गोरी यंग बॉयज को और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा। 39 नाउ, जस्ट 6 टू गेट फॉर विक्ट्री। 6 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए। और इस बीच गेंदबाज नागेश तैयार। सूरज जूनियर इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, शॉट थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े और तेजी के साथ 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए। 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 टू गेट नाउ। 14 balls remaining in overall calculation in their innings. They are looking right on top and lost his stumps. One more wicket fallen. So pitching right on the block hole and stuck to his leg stump. Bells are disturbed and a good innings came to an end from the batsman Sudhir, who scored 15 runs into his credit, including 3 boundaries. And after being playing a fantastic knock for their side, he is back to pavilion and a 4th wicket loss for Gory Young Boys. And now it's 41 for 4. 40 in fact for the loss of 4 wickets. 13 balls remaining, 5 runs required. तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है लोकेश ए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा गेंदबाज नागेश की गेंदों का। नागेश दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। ओवर के समाप्ति कुल मिलाकर 40 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, सिर्फ 5 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 12 गेंदें बाकी और तख्ता काफी हद तक इस वक्त गोरी यंग बॉयज का भारी लगता हुआ। तो मोहन गेंदबाजी पर उतरते हुए। सूरज जूनियर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में विजय लक्ष्मी को वापस ला सकती है, मैजिकल बॉलिंग जिसे कहते हैं। और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में मोहन पहली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर विकेट गिर चुका है सूरज का। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, भुगतान उन्हें करना पड़ा। इससे पहले कि स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज सूरज
नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ शॉट फाइन लेग फील्डर का नॉन स्ट्राइकर एंड गेंदबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज मोहन के हाथ में, और मोहन ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिया। अब 11 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए। तो अब नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 7 बल्लेबाज की हैसियत से सतीश जो कि मैदान पर इस वक्त उतरते हुए, और इस बीच सपना करने के लिए तैयार बल्लेबाज लोकेश, और तो इस बीच मोहन की गेंद, रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद बढ़ती है और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। खूबसूरती के साथ गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को विद ट्विस्टेड बैट इस वक्त खेल दिया गली फील्डर की बाईं ओर से, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक नहीं पहुंच पाए फील्डर, और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर चुकी है। सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए, और मोहन इस वक्त तैयार, लोकेश ए सामना करते हुए। ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में, 9 गेंदे 1 रन चाहिए। 9 balls and 1 run required. Just a formality is now remaining in this match. और मोहन अगली गेंद लेकर तैयार, ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका इस वक्त, और इसी के साथ गोरी यंग बॉयज रजिस्टर्ड comprehensive victory by 5 wickets with 8 balls to spare against Vijay Lakshmi Cricketers, and with that 5 wickets comprehensive victory with 8 balls to spare, they will qualify for the next round of this competition. So a good match ended, and now the next match, so a fine match ended in fact, and now the next match is now coming up. Young Friends Urua will take over Morgangate 11. So in this match, Young Friends Urua, after won the toss, they elected to field first. We're just taking a short break, and we'll be back right after a short break with my friend Satish in English, when the next match will going to commence right after this short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. I request Mr. Tulas, please to be joined Young Friends Urua camp. Tulas of Young Friends Urua, please to be reported here. I request Tulas. Tulas, please report to the commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ ತುಳಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So thank you very much, Gopi. Welcome back. And match now will be played between Young Friends Urva versus Morgan Gate. And Young. So after winning the toss, captain of Young Friends Urva elected to ball first so that Samir will going to start the proceedings from the commentary box end. And opening batters of Morgan Gate 11. And as everything is ready here for the match here. And striker. And of course Prakash and Prashant, the opening batters out there in the middle. The first ball, Samir balls. Starts with the delivery which is wide outside the line of leg stump, so that first run comes off here home Morgan Gate. Prakash at one time is a very good striker of the ball and always loves to play in opening position. Again deflected from the leg, and they quickly crossed off for a single. 1-2 on the board without loss of any wicket. Leg by call by umpire Satish Mudabidri. And that brings Prashant, a technically very sound player, and we'll wait and see how we will going to face Samir. Again try to flick the off his legs. They're going for the single, chance of run out. Wicket keeper misses the stumps. The risky run in dedication there from Prashant. He wanted to flick it off his legs. Of course, missed completely. Then leg by call by umpire. 3 on the board without loss of any wicket. Samir bowls. Nicely driven, beautiful shot. But protection is given for that kind of cricketing stroke. SN no, but at last, direct it. Direct it, Prashant. I mean, Prakash is back into pavilion. I think certainly there's a call of Prashant. It is really running towards danger end, but Prakash always running in the safer end, and it's not a good judgment there from Prakash. He's not really running quickly in between the wicket, and the good presence of mind here from Samir. He collects the throw and hits the stumps at striker's end, and Prakash is back into pavilion. It's 4 for the loss of 1 wicket. The new batter in, jersey number 20. Santosh is the new batter in. Santosh Shetty takes a fresh guard from umpire, and they get ready to face Samir. The first over is in progress. Morgan Gate 11 against Young Friends Urva. And again went for the drive, got an outside edge of the bat. There is probably the single there, so that with the single Skobana moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Samir again, right arm. Oh, lovely delivery, beautiful. Extra deviation the last moment when Prashant went for the push on the offside region, but ball which is defeats his bat. A wicketkeeper did the rest. This time well behind the line of the ball, just leaning into the drive towards a deep cow pond region for a single. With that single, he will going to retain the strike for the next over. First over completed. Morgan Gate 11 6 for the loss of 1 wicket. For the latecomers, you are watching this very prestigious LCC Cup 2023, the Legends Cricket Cup. And the Legends were dominated and on the heart of cricket lovers during 80s, late in the 80s and 90s, and even in the 2000.
6 on the board. 6 6 for the loss of 1 wicket. Oh, what a delivery! What a fantastic delivery there from Prashant. The Prashant, one who really dominated during 90s, even the 2000, where Vijayalakshmi cricketers are looking so good. He is the one performed very well from the ball. Now afterwards he played for Young Friends Urva, and he's such a fantastic bowler, especially when he bowls that line. It's always difficult line for any kind of batters, any technical sound player. Beautifully bowled that one. Off cutter. Batsman couldn't manage to read the turn of the ball. Completely beaten by the flight and turn. And Prashant back into pavilion. So new man in, and please welcome. It's a fantastic all-rounder. One of you can call is a true legend of underarm cricket. Karna of Morgan Gate 11. Karunakar is a great all-rounder. And he's the one leading from the front for Morgan Gate 11. When they are performing very well in South Kenda district, even though there's so many big teams like Jugal Sports Club, Vijayalakshmi Cricketers, UFCA, and Gori Young Boys, but still Morgan Gate 11, they're fighting hard during these days. They're not really giving any matches very cheaply, and he's the one, Karunakar, being the all-rounder for the side, leading from the front, fantastic performer, and now he's came into middle to face Prashant. Prashant from the far end, right arm over the wicket bounce. This time nicely behind the line of the ball. This is what you call the technique of playing. How this is what you call the experience is counted. You know exactly what Prashant is going to do, and he's almost covered his stump, waiting for the turn of the ball, pushes that one down to short cow point region for a single. With that single score moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Outside line of off stump, and again then went for the drive with a little bit movement of the feet here from Santosh, because that line is which is on the outside the line of off stump. He wanted to drive the ball, but his foot was just not coming to the line of the ball. This time reverse stroke, but misfielded by the fielder. What a fantastic reverse sweep! But here is Nasir, who is the one, is standing at short third man region. Tried to stop, but he couldn't manage to judge that turn, isn't it? You need to see that whenever the player playing reverse stroke, the ball certainly will going to spin in front of you, and they need to be very careful while you are fielding at revision, and misjudgment and costing a boundary here, and welcome boundary for Morgan Gate 11. This time wicketkeeper fails to collect the ball neatly, so that they are cost off for a couple of runs. With that couple of runs, a little correction, single little correction. With that single score, moves on to 12 on the board. Uday behind the stump. Prashant again from the far end. This time drives that one. Karunakar, nice looking drive, confident looking drive down to deep long on. Shaukat Ali then there in the deep long on region, fields the ball, returns the ball, and good over from Prashant, but even one boundary which is really make that over maybe what could be a good over because of that boundary. It was even good over for Morgan Gate 11 as well. 2 gone after the completion of 2 overs. Is 13 on the board. Morgan Gate 11. They're going exactly 6.5 runs per over. The mentor and the coach of Young Friends Urva, Rohan, having tense out here in the commentary box. To maybe is just yes, wanted to make a little bit changes in the field. Rohan, because of slight bit of injuries, he couldn't manage to perform, and it's always going to be a hurty factor when you are sitting behind when your team is performing and something is going in your stomach, and why not me there, and I want to perform. This is always going to be a hurting factor, and he's saying that he will be back tomorrow, and being the owner of the team, and he wanted to perform. Now his partner, Rohan's long-time partner, the good friend Pradeep, is in attack. One more
mastermind. And bowler's back dry, and Pradeep tried to stop the ball. And I want to say, Pradeep, you are not at 20 years age, you are above 45. Difficult for you to react quickly. And it's one more single added to total 14 on the board. Right arm over the wicket, bows, nicely driven that one down to cover point region for a single. With that single, Skoban moves on to 15 on the board. 15 for the loss of 1 wicket. Karunakar and Santosh Shetty are the two batters out here. They're anchoring the innings. Desam drives that one straight to the hands of fielder. A fumble from Tulash down at extra cover. And just a single. With that single, Skoban moves on to 16. And always going to be a challenge for the leg spinner, because the hard in the nature, which is a ball which is used for this tournament, again using his feet quite nicely. And Santosh, very nice to watch him, how quickly he's coming to the line of the ball, and always he's playing very close to his body, and bat and bat coming together, and very easily gets a single. The placement is so exquisite from him. 17 on the board for the loss of 1 wicket. Pradeep. This time he wanted to pull that one, and we need to see umpire called it a no ball, rightly so. It's going over the shoulder, and Karunakar wanted to pull that one, and lucky escape here for Pradeep, because if any contact, it might be at least the boundary for that, and he just missed it. But free hit delivery for Karunakar. Oh, that was really very close to the leg stump. Karunakar thinking that it might be wide, but ball just passing, just missing that under his bat, and ball just missing his. This time driven, catch it is a call, and catch has been taken down at deep long off. Karunakar departs. Pradeep gets a very vital breakthrough for young friend Surwa. It's 18 for the loss of 2 wicket. So no change in bowling. Prashant to continue. Rightly so. He is one bowler who can be very effective. And wait and see how he will going to bowl. And new batsman came into middle. Kishore. Prashant bowling from the far end. Right arm over the wicket. Deliveries. That was a quicker one. That's what I'm talking about. Sometimes Prashant bowls at almost ball just skidding, isn't it? It's always, you can see that sometimes the ball which is skidding, and that's the speciality of Prashant when he bowled that line. And again bowling from the far end. Lovely delivery. Oh, quick work from wicketkeeper behind the stump. Now umpire asking for the third umpire, and Uday is very confident. Just seeing the body language of a wicketkeeper, it done a fantastic job. Quick work behind the stump, and wait and see. Well, wait and see what could be the addition of the third umpire. Whether the batsman of back foot, which is in the crease on the line, it's not enough. We need to have some part of his shoes need to be inside the line, and that's what. And that's what I want to say. Maybe the ball or the time of the batsman lifting his leg, maybe the wicketkeeper behind the stump did the job. That's why he's very confident after that his work behind the stump. But we need to see the umpire decision.
So 18 on the board. Still, it's umpire just examining the examining, getting some angle. It's very important for third umpire to get some good angles. But in the limited cameras, and of course, sometimes very difficult to get the angle right. But still, I think the Mangalore media, the all young cameramans, technicians, did a great job. Misar Khandak is the one, is a very young, talented. And out, which is a call now coming from umpire, third umpire. And this is what I'm talking about. Sometime you can imagine immediately by the body language of the wicket keepers, isn't it? So it's so simple. But we need to see the third umpire is always very important. But in the naked eye, where you can understand that the batsman might be is a short of his case. Maybe he's lifting his back foot. Good work done by Uday. And it's 18 for the loss of 3 wicket. So new batter in, jersey number 3. Dinesh. Prashant. Nice looking drive there from Dinesh down to deep. The wideish long off region for an easy single. With that single, Skobar Namuzan to 19. 19 for the loss of 3 wicket. Prashant again. Again, that ball going down the leg. And a wide call by umpire Mohan Ayadi, rightly so. No hesitation from him to call that wide. With that wide, Skobar Namuzan to 20. Again. This time lofted. You can't get the distance when you're hitting the ball to long off region, especially in the evening. And it's always going to be difficult to ask for any batter. And Kishore departs, looking for the acceleration. Not quite getting hold of the. Of course, he got a hold of that properly, but couldn't manage to get the placement right. One more wicket is back into pavilion. It's a 20 on the board. Meanwhile, I request the captain of Uppala Legends as well as the youngster Kalpane, kindly request you to report immediately to sign the official charts. Demadi Uppala Legends ಮತ್ತೆ youngster Kalpane ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Try to flick that off his. Oh my goodness! This time Samir is missing that one, and a second boundary we can see that by misfield, and one more boundary comes up here, and with that lucky boundary Skobar Namuzan to 24 on the board. Out of that 2 boundaries, which is same bowler, young Prashant getting that boundary this time. Unfortunately, this time again the new batter Arun places that one down to deep long on region for a single. So one more over completed. Over number 4 completed, and Morgan Gate 11 are still they are searching for the right track. 25 for the loss of 5 wickets. Last 2 overs remaining. Sharif, the bowler. This time again, that ball just curving around the legs of the batter, and one more single. With that single, Skobar Namuzan to 26 on the board. Slowly and steadily, Morgan Gates 11 try to get some runs, which is, I think, this time coming down the track. I think is not really hitting that one properly. But opportunity for Salim, one of the best fielder I've ever seen in underarm cricket as far as the outfield is concerned. He's a very good outfielder.
And so wicket gone here. Yeah, Sharif saying that, saying thank to that the batter, that instead of hitting a six, he gave the catch to the fielder. It's 26 on the board for the loss of 5 wickets. So new batsman Sandesh. Sandesh with the jersey number 27. Again, nicely place it down to extra cover region for a single. Tulas once again there at extra cover. The fields the ball and returns the ball just for a single. 27 on the board. There's some nice looking drive down to cover point region. Again, there is a single there. Sharif will not going to bother about the single. You know exactly need to restrict the boundaries, the big shots. 28 on the board. Again, looking for the expansive drive, but not quite getting hold of that one properly. There is a fielder at short mid wicket. Pradeep fields the ball quickly and back to his place. Drives right off for Pradeep down to mid wicket region for a easy single. With that single, Skobar moves on to 29 and over number 5 completed. Last over remaining. Last over remaining in the innings of Morgan Gate 11. I request youngster Kalpane, please report here immediately for the signature. Far outside the line of off stamp and going to be a white signal umpire. And with that extra score, moves on to 30. Tulas balls. This time around the legs. Again, one more wide, one more extra. With that extra score, moves on to 31 on the board. 31. Now the batter Arun coming down the track, giving some suggestion to Sandesh to maybe the last over is in progress. If we need to get one big shots. Again, almost reaching to the delivery outside the line of off stamp and couldn't manage to get any kind of runs. Tulas again. Right arm. Far outside line of off stamp and they're going for the extra run. Direct it. Uday has been outstanding behind the stump. Quickly he's managed to hit the stump and the batsman short of his crease. It's 32 for the loss of 7 wicket. Jagadish, one more good all-rounder, very good leg spin bowler, and here is Tulas. Balls far outside the left stump, going to be one more opportunity. Samir misses the stump. Good backup by Pradeep, and no ball called by umpire, and the ball pitched outside the line of the pitch.
So that free hit delivery for the batter. Opportunity for the batter to grab. 34 on the board. Tulas finding a little bit difficult to get this line and length. And bowling away from the far end. One more big wide. Very good collection by the wicket keeper behind the stump. And score now moves on to 35 now. Important runs coming here for Morgan Gate 11. Full toss, lofted, and he got the distance. And Saukat Ali down at deep long on, trying this level best to stop that one, but ball just going and just defeating the fielder at deep long on for a 6. Scoreboard jumps into 41. Sandesh hitting that 6. Very important 6 for Morgan Gate 11. Again, Tulas bows. Oh, played it very fine. And that is going to be a boundary there. Now Morgan Gate 11. They are really cruising towards a good total here. So scoreboard now 45. All in sudden. That runs are coming in that last over of Tulas. Tulas again. Now it's ball the leg spin bowling and opportunity of run out directly and is gone. Uday. Now very interesting to see that umpire asking for the third umpire. Mohan Ayadi maybe is thinking of the need to see that before the ball hits the stumps whether Tulas the bowler dislodged the stumps or not, blades or not. That's what you want to see. 45 on the board. It's really difficult. Sometimes it's judged for the umpires to see whether the ball hits the stump and before ball hitting the stump whether the bails are off. That's what umpire want to see. So not out from a third umpire, and just like I mentioned, Tulas already dislodged the bails from the stumps. After that, the ball hits the stumps. One more good delivery. Excellent. Tulas might be now thinking about the leg spin is very handy to ball. Again, nicely flexion of his legs down to short mid wicket for a single. It's a big over for 147 47 for the loss of 7 wicket and 48 which is the target. 48 is the target for team Young Friends Suruva to qualify for the next round semi-final.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಳ ಲೆಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. धन्यवाद सतीश. So 40 at the target for Young Friends, who was set by Morgan Gate 11 at batted first. They managed to score 47 runs in their stipulated 6 overs. And now the target is 48 for Young Friends, who run now their innings going to start. और उनके पारी के पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद मोहम्मद अली और शौकत. और जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज. और जहां तक मोहम्मद अली और शौकत का सवाल है, पिछले मैच में एक बेहतर शुरुआत उन्होंने यंग फ्रेंड्स शुरुआत को दी थी और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ भी आगे बढ़ाने की कोशिश में वो अरब बकार के हैसियत से इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं. और इस बीच गेंदबाज फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए प्रकाश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद. डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात. और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रकाश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए जबकि सामना करने के लिए तैयार मोहम्मद अली. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार मोहम्मद अली के लिए स्टीयर किया खूबसूरती के साथ. जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड एंड ग्लाइडेड डाउन टू अ थर्ड मैन फॉर अ सिंगल बाय मोहम्मद अली. और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका. एक रन बिलाके से नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है. शौकत अली इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और प्रकाश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ओवर द विकेट माफ कीजिए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज शौकत अली के लिए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद. और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ढीली गेंद. शौकत ने गेंद को उछाला है लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए और ये कैच छूट चुका है.
और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज एक के पीछे एक दौड़ते हुए, हालांकि शौकत पहला रन पूर्ण ही नहीं किया था उन्होंने, कि मोहम्मद अली ने पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दोनों बल्लेबाज साथ में दौड़ रहे थे। हालांकि मोहम्मद अली दूसरा रन पूरा करने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन शौकत अली अपना पहला रन ही उन्होंने पूर्ण नहीं किया था वहां पर। तो यहाँ पर 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। तो शौकत इस वक्त अपने कमर पर कुछ हद तक पीछे की ओर कुछ हद तक चोट इस वक्त महसूस करते हुए, और आसान सा कैच इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर गंवाते हुए अंतिम क्षण में। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन ना मिले इस गेंद पर 2, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। फिर से एक बार प्रकाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को बल्ले पर आने दिया, हल्के से गेंद को पुश कर दिया खूबसूरती के साथ। दूसरा रन लेना चाहते हैं मोहम्मद अली, लेकिन नहीं मिलेगा। गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया पॉइंट पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुके हैं 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक मजबूत शुरुआत की सख्त जरूरत यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा को, जहां तक 48 रनों के चुनौती भरे लक्ष्य तक पहुंचना है। तो और प्रकाश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। शौकत सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर पीछे की ओर जाते हुए इस वक्त, और अपनी अगली गेंद लेकर प्रकाश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज शौकत अली के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, फॉलो थ्रू में इस बार रोकना चाहा था अपने पैर से, ठीक तरह से गेंद को रोक नहीं पाया। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता सी लिमिट डाउन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 6 without loss. First over has been game straight. 48 the target in 6 overs. Steady start for young Fred Surwa. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो एक बेहतर ओवर प्रकाश फेंक चुके हैं, जिसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किया। 42 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर में, 8.40 रन प्रति ओवर के औसत से। 42 they have to score for victory in remaining 30 deliveries. That means in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 8.40 runs per over. तो काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। शाम के 5:30 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है। घने वृक्षों के परछाइयाँ धीरे धीरे पिच की ओर पधारते हुए लगभग पिच को इस वक्त ढक चुके हैं, और उन परछाइयों के बीच से सूरज की रोशनी कुछ हद तक मैदान पर पड़ती हुई इस बात का संकेत देते हुए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मैदान पर रोशनी कम होती जा रही है। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर धीरे धीरे अपना सफर तय कर चुका है, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती हुई। और आज का 8वां मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज जगदीश गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज शौकत इस वक्त सामना करते हुए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद, यह गेंद शौकत के लिए। गेंद को उछालना चाहा, चूंकि मिडान पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 without loss at the start of the second over in fact। और गेंदबाज जगदीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद अली के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्ट हुई गेंद इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंच चुकी है, और आखिरकार गेंद को जब तक वहां पर फील्ड किया गया 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 without loss in the over number second in progress। निस्संदेह इस वक्त
कुछ हद तक बल्लेबाजी में तेजी की जरूरत है। बल्लेबाजों को ड्राइव किया और कैच नंबर 2 छूट चुका है शौकत का। इस बार फ्लैट वर्शन पर एक्स्ट्रा कवर फीडर के हाथों में पहुंचे थे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फीडर इस कैच को लपक नहीं पाए और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज के लिए जीवदान और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 9 विदाउट लॉस। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, विकेट कीपर चूके और शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका है, कुल मिलाकर 2 रन का इजाफा हो चुका है। 2 वाइड्स उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 11 रनों पर पहुंच चुका, 2 अंकों पर। और अगली गेंद, ये गेंद दिस टाइम ही इज हिट दैट वन, आई थिंक इट्स कुड बी क्लियर डिफेंस, यस इट डज, इट्स अ ह्यूज वन, 6 इनटू द अकाउंट ऑफ शौकत। हालांकि वो अपने कमर में इस वक्त काफी दर्द, बैक पेन वो महसूस करते हुए, लेकिन इस बार उन्होंने गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद जगदीश लेग स्टंप से बाहर और इस बार बल्ला को क्रीज पर रखने में सफल और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर इन दिस ओकेजन। देखने वाली बात यह है कि जब विकेट चटकाए गए थे विकेट कीपर द्वारा गेंद को रिसीव करने के बाद, तब बल्लेबाज शौकत अपने घूमकर अपने बल्ले को क्रीज पर रख चुके थे या नहीं। तो तृतीय अंपायर देखते हैं इस वक्त क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद। He's gone. So out is the call and Shaukat is now backing to pavilion. जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्ला बैट जो शौकत का हवे में था और इसी के साथ शौकत की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो एक बेहतर पारी शौकत खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 12 रनों की आउट फॉर 12। हालांकि 2 जीवदान उन्हें जरूर प्राप्त हुए, लेकिन एक छक्का लगाने में वो सफल रहे थे और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 17 रनों के ऊपर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नजीर का आगमन यहाँ पर होता 1 नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से और एक और अनुभवी बल्लेबाज है यंग फ्रेंड रुआ की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और जगदीश इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तो इस वक्त नजीर अंपायर से गार्ड लेते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। गेंद की परीक्षा करने के बाद गेंद को वापस गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त नजीर तैयार। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात और इस बीच जगदीश अपनी ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 18 रन ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। इस बार स्विंग किया नजीर ने, हालांकि अपना संतुलन जरूर खो बैठे स्विंग करते समय, लेकिन गेंद को स्वीप करने में सफल और आखिरकार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 19 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स, chasing the victory target of 48 in 6 overs. Except they lost their 1 wicket, they are
प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग नाइसली नाउ फॉर यंग फ्रेंड्स सुरवा। 13 रन बने इस ओवर में, एक बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है अगर यंग फ्रेंड्स सुरवा के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है। और 29 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी है 24। 24 balls remaining, 29 more runs now they have to score for victory. तो तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। मैच नंबर 8 एलसीसी 2023 लेजेंड क्रिकेट कप 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। और इस ढलते हुए शाम में और गेंदबाज करना, गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए एक वक्त के काफ़ी बेहतरीन जाने माने गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे करना अपने क्रिकेटिंग दिनों में, जब वो मॉर्गन गेट 11 के लिए खेला करते थे। और यहाँ पर एक बार फिर से अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए नज़ीर, माफ कीजिए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई अरुण गेंदबाज है, करना नहीं, माफ कीजिए, अरुण गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज। और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद चिप किया नजीर ने, लेकिन सीधे पहुंची विकेट की इस बार लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को गंवा दिया है। मिस जजमेंट वहां पर, पहले देखा कि पहले सोचा कि गेंद सीधे उनके हाथों में आएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा कि गेंद उनके आगे टिप्पा खाने वाली है, आगे की ओर झुककर कैच लेना चाहा, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटते हुए और आखिरकार बल्लेबाज जीवदान के साथ एक रन प्राप्त करते हैं। तो स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, सिर्फ एक रन मिलेगा। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अरुण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार नसीर के लिए। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेला इस वक्त मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए, जब तक गेंद को वो फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान बल्लेबाज नजीर ने, और 2 रन अपने और टीम के खाते में जोड़ने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अरुण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ द टॉस, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया, पुश किया हल्के से, और गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन मिलेगा। फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 24 रन बन चुके हैं, 24 रन और बनाने हैं। 2.5 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 3.1 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 19 balls left in overall calculation. 24 more runs now they have to score for victory for young friends Urwa. और गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, मोहम्मद अली काफी आगे निकला है, और इस बार थोड़ी सी हिचकिचाहट वहां पर शॉर्ट थर्ड बैन फील्डर द्वारा, और मोहम्मद अली यहाँ पर अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं। तो शायद यहाँ पर मोहम्मद अली कुछ हद तक नाखुश दिखाई देते हुए उन्होंने कुछ कहा नज़ीर से कि भैया यहाँ पर रन बन सकता था, लेकिन आपने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन नज़ीर मेरे ख्याल से स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने नकार दिया। 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन बच चुके, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs. 3 overs gone, 24 on the board, 3 overs left and 24 runs more. Now they have to score for victory. They are going on a right track at this situation. और देखते हैं चौथा ओवर फेंकने के लिए कौन सा गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हैं। संतोष गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से,
नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। शौकत माफ कीजिए नजीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई मैदान से धूप गायब हो चुकी है। इस वक्त लगभग अंधेरा सा छाता हुआ शाम के 5:45 यहाँ पर बज चुके। इट्स ऑलरेडी 5:45 इन द इवनिंग। द लाइट गेटिंग डिमर एंड डिमर एज द टाइम प्रोग्रेसेस। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज नजीर के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाह, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड। और रन इस बीच मिले। ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। काफी वाइड थ्रो, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, लेग बाय का इशारा। और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो ये रन काफी बेशकीमती साबित हो सकते हैं पारी के अंतिम ओवर्स में यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। तो 2 रन यहाँ पर जुड़ चुके हैं और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज ये गेंद इस बार स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट एंड स्वीप्स इट अवे फाइन and finds the gap as well in between deep backward square leg and deep mid wicket. Fantastic struck came from the bat of Nazir. और इस चौके के साथ समीकरण कुछ हद तक आसान इस वक्त होता हुआ। 30 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार मिस जजमेंट। अंतिम क्षण में नजीर ने पूर्वानुमान लगाया कि गेंद बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन गेंद आई अंदर की ओर। और इस गेंद पर को जज करने में चूके सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। और अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बेहतर दूसरे विकेट के साझेदारी यहाँ पर जमती हुई मोहम्मद अली और नजीर के बीच में। और यहाँ पर संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार मोहम्मद अली सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक विकेट कीपर करना जमावट इस वक्त करते हुए। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ा इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा, नो बॉल का इशारा वहां पर। और इस बीच दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 2+1 3 रन नाउ एडेड टू द टोटल। और जहां तक सवाल है खिलाड़ी जो कि इस वक्त ऑफसाइड पर विशेष के दायरे के बाहर तैनात, तो 3 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 2+1 3 रन एडेड टू द टोटल। और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और देखना यह है कि उस फ्री हिट गेंद का वो किस तरह फायदा यहां पर उठा पाते हैं। समीकरण काफी हद तक आसान हो चुका है इस ओवर की बदौलत यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और इस बीच संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार स्विंग किया है मोहम्मद अली ने गैप पर 4 रनों के लिए। उछाल लेती हुई लेग कटर गेंद थी और ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को भागते हुए गेंद को इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान खाली क्षेत्र चुनते हुए 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 39। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त पुल किया था मोहम्मद अली ने। और अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त फ्रंट फुट पर जाने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद पर बल्ला अड़ाते हुए 1 रन मिल चुका है। 40-40 अपने विजय की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त यंग फ्रेंड्स हुआ। ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में मॉर्गन गेट 11 को वापस ला सकती है, मॉर्गन गेट लेजेंड्स को इस मैच में वापस ला सकती है। और यह गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम स्ट्राइट टू फील्डर एट डीप मिड विकेट, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। प्लेसमेंट तो कुछ खास सही नहीं था, स्ट्रोक में रफ्तार था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज नजीर प्राप्त करते हुए 17 runs scored in this over. And because of this over, young friends Urva now strongly back in the game. So 7 runs required in remaining 12 balls. 41 the score, 48 the target. और 12 गेंद यानी 2 ओवर बाकी 7 रन चाहिए। और इस बीच गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज नवीन तो नवीन इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए
और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज नज़ीर के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, और नहीं, नवीन गेंदबाजी से हट चुके हैं, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 0-4 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज प्रकाश, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार नज़ीर सामना करते हुए इस वक्त। फर्स्ट बॉल फ्रॉम प्रकाश काम्स नज़ीर के लिए। लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर शॉट, फाइन लेग फील्डर, निशाना लग चुका है, और मोहम्मद अली खुद इस वक्त बिना अंपायर के इशारे के इंतजार करते हुए पेविलियन वापस लौटते, वो खुद जानते हैं कि वहां पर वो आउट हो चुके हैं। वाइड का इशारा, एक रन जुड़ चुका है, और मोहम्मद अली का विकेट यहां पर रन आउट के रूप में गिर चुका है। 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मोहम्मद अली डिपार्ट्स आफ्टर बीइंग प्लेइंग good knock for their side of 9 runs, including 1 boundary, including 1 4. He scored 9 runs, and unfortunately he is back into pavilion in the face of run out. 12 balls still left, and just 6 more runs required. प्रशांत नए बल्लेबाज के रूप में, और जहां तक प्रशांत का सवाल है, पिछले मैच में एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, और यहाँ पर नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रकाश की गेंदों का। प्रकाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 42 रनों पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार 2 डॉट गेंदें लगातार, और इसी के साथ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। और यहां पर देखने वाली बात, दिलचस्प बात यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे, तब प्रशांत जो बल्लेबाज है, उनका बैकफुट क्रीज से लिफ्ट हो चुका था या नहीं। सो दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स। और देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं यहां पर। Not out is the call, and the batsman Prashant survived. तो यहाँ पर बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद था जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा। तो इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बच चुके हैं और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार।
इस बार गेंद को खेला है, गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। 5 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए और यहाँ पर गेंदें बाकी हैं। नौ गेंदें बाकी है, 5 रन चाहिए विजय के लिए। 5 runs to get from remaining 9 balls। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया जगह बनाते हुए नजीर ने लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 44 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और सिर्फ 4 रन चाहिए। गेंदें बाकी है 8। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद प्रशांत के लिए ड्राइव किया, काफी जोरदार दमदार स्ट्रोक, मिस फील्ड वहां पर लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे प्रयत्न में तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 7 बॉल्स और अगली गेंद, यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार विकेट कीपर चूके और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और बाई के रूप में ये चौका मिल चुका और इस चौके के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा registered 8 wickets victory with 6 balls to spare in their innings against Morgan Gate Legends, and with that 8 wickets victory against Morgan Gate Legends with 6 balls to spare, young friends Urwa are through to the next round of this competition। तो आज के सब मैचेस, सर्व मैचेस जो कि समाप्त हो चुके हैं, कल मैचेस खेले जाएंगे बी पूल के और ए पूल के 2 मैचेस जो बचे हुए वो भी कल खेले जाएंगे। कल सुबह ठीक 8:30 पर यहाँ पर पहला मैच शुरू होगा और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह 8:30 पर हमारी मुलाकात यहाँ पर होगी, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। टिल देन वी आर टेकिंग गुड बाय राइट फ्रॉम हियर फ्रॉम माई सेल्फ Gopi in Hindi, my dearest friend Satish Salian in English, along with Mr. Raghuram, who supported very well in our commentary box, also supported by Mr. Shaukat and Mr. Pradeep Kotari, along with the scorer Swastik. And in the scoreboard, Srikant, with the scoreboard, Srikant, along with us, we'll see you from tomorrow morning at exactly 8:30. Till then, we are saying you goodbye right from our commentator box. Thank you. Dhanyavad.